Hello, hello, check, hello. Hello, hello, check. Hello, hello, check, hello, hello. 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 Mic check. Check. Hello, mic check. Testing. Mic testing 1 2 3. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಕೋಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಟರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮೇಯರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರೋಹನ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ, ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಕಲಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ಯ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಲಿಯಾಕತ್ ಆಲಿ ಸೂರಿಂಜೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಟರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶಮೀಮ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಾರೂಕ್ ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿರುವಂಥ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಇದರ ಸಾಯಿ ಕಿಶೋರ್, ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ದಯಮಾಡಿ ಲಿಯಾಕತ್ ಆಲಿ ಸೂರಿಂಜೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು.
ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸುರಿಂಜೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ಹಕೀಂ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಚಪ್ಪಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮೇಯರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಲಕರು ವಿದ್ಯಾಕಲಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಸದಾ ನಗುಮುಖದ ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾಜೀಮ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಲ್ಸೋ who represented for SNG cricketers and now it's a time for inviting ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ರೋಹನ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಇವರನ್ನು ಸುಜಿತ್ ಇವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ರೋಹನ್ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ರೋಹನ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ KFC ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದೆ. ವಾಸಿಂ ಇವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಸೂರಿಂಜೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಪ್ಪಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮೀಮ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ಪವನ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಆಗಿರುವಂಥ ಫಾರೂಕ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಹಕೀಂ ಸೂರಿಂಜೆ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಈ ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಸಾಯಿ ಕಿಶೋರ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸುಜಿತ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಘಾಟನದ ಮುಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಉದ್ಘಾಟನಾ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಎಂಚಿನ ಮುಳುಬರ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೆ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪುಕರ್ತೆ ಪಡೆಯ ಒಂಜಿ ತಂಡವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪವನ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡವಾದಿನಿ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿಂಡು ಐತ ಲೆಕ್ಕಡ್ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಲ ನೆಕ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುವ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪವನ್ ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯ ದೋಸ್ತಿ ಆದ ಬೈದೆ ಯಾನು ಮೇಯರಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆದ ಬೈದಿನತ್ತು ಏನಾರು ದುಂಬೆ ದೋಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಕಲು ಅಲ್ಲಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ 6ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂಜಿ
ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಈ ಉರ್ವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಜನಕಲು ಬತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ತುಪ್ಪೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ 10 ಟೀಮ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಾನ ಗೊತ್ತಾವು ಇಡೀ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಡೀ ಜಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಯಾಪನ ಎಂಕಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪಿನಾಗಲು ಅಂಚೆ ಉರ್ವದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಏನು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು ದುಮ್ಮುಗಲ ಪವನ ಮೆರೆಯರ್ದು ನನಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ಪಿಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರ ಪನೊಂದು KFC ತಂಡಗಳ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ತಂಡ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೋಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಪವನ್ ಯಾವಡ ಪವನ್ ನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲಿನ ಸೇರದು ಎಡ್ಡೆ ತಂಡವಾದೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮುರಿದು ಬೈದಿಂಡು ಅಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೋಫೀಸ್ ಕಪ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ ಆತೀರು ನಾವು ದುಮ್ಮಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೋಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬರೀ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊರನೇಕ್ ಏನೋ ಒಂದನೇ ಪಾತ್ರ ಮಂತೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಂದ್ರಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್. ಖಂಡಿತವಾದ ಪಂದಿನ ಪಾತ್ರನೇ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೇರದ ಬೈಜಿ ಯಾನ್ ಪವನರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ದೋಸ್ತಿ ಅದು ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ನ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೋಸ್ಕರ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಕಲ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟಗಾರ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ಅದಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಇಂದೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುಪನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಜಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಹಾಪೌರನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಈ ಒಂಜಿ KFC ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರೇನ ಪವನ್ ರೇ ಮನೋಜ್ ಪಾತಿರ್ನ ಪಂಡೇರ್ ಪವನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಹೆಮ್ಮೆಲ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಈ ಬಾಗಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಮಸ್ತ್ ತಂಡಲುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಯಾಲ್ನ ಮನೋಜುಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಂಡ ಈ ತಂಡಲ್ ಒಂಜಾತ್ ಉರ್ವ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಾತ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉರ್ವ ಮೈದಾನ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡು ಗೊತ್ತಾವಡ್ದು ಅಂಡ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಏರ್ಪಂಡ ಪವನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪೆ ಪವನ್ ಆರ್ನ ದುಂಬುದ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋಗ್ ಮೀನಿ ಬತ್ತೇರ್ಂಡ ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ದುಂಬು ಉರ್ವಾಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡು ಕೋಡಿಕಲ್ಲು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡು ಪವನ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು ಪವನ್ ಮಂತೇರಿಗೆ ಪಂಡದೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪವನ್ ಕೂಡ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ ನನಾತ್ ಇರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದ ನನಾತ್ ಇರೆಗ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಒಬ್ಬುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮುಡಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ಎದುರ್ದ ಟೀಮುಡಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ವಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಒವ್ಲಕೇನುಜ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ತೋಜುನು ಬುಡ್ನ ನಂಗೆ ಬೇತದ ಆಲ ತೋಜಿ ಗೆಂದುನ ಸೋಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆದ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಗೆಂದೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸೋಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಐನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಿಡಿದೆತ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತಾಂಬೆನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿನ ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ದಾದ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿನ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕ್ರೀಡೆರ್ದೇ ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರತಿವರಿಯೇ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬದ ಸೇರ್ದಿನ ಹಾಕಲು ಪನ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಡೀ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ತೋಜಿಪವನ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ತೋಜಿಪೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಒವೇ ತೊಂದರೆ ಬರಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಕಲು ಎಂಚ ಮೂಲು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಳ್ಳರ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರ ಪನೊಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಾದ ಒಂಜೇ ದಿನದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಾದ ನಡಪೆರೊಂಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ದೇವಡ ಮಂತೊಂದು ನಾನು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಪವನ್ಗೆ ಅರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋನೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಅಂತ ಒಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್. ಖಂಡಿತವಾದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ದೇಪಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪನ್ಪುನೊಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ತೋಡಾಂಡ ಅವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಮಾತ್ರ ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಮೂಜಿ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಮೂಜಿ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಯ್ತಾ
ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪಂಡ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ದಾಖಲು ಈ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ಟಿಡ್ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ದಾಖಲು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ 10 ಟಾಪ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಮೂಲ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂಲ್ ಪಂದದು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಂತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು 10 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ KFC ಕೊಡಿದಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಮಂತೇರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನ ದಕ್ಕಲು ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಂತೇರು ಪಂಡಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಲಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ಗೆ ಲಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನು ಮನ್ಪನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ದ ಪವನ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು. ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಂಥ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟು ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಜೀರ್ ಈಡನ್ ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಟರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಯಲು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಪಿಚ್ನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಆಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ನಾಂದಿ ಚಿಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂಥ ಗೋಪಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಪಿಚ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ರತೀಶ್ ರಾಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪಿಚ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಇದೀಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ ಇವರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ಡೇ ನೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ನಿರ್ವಿಘ್ನನಾದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ.
ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ನಿಮಗೆ 2 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ, ನೀವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. 2-3 ಸಲ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲು ಈಗಾಗಲೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2 ವಾರ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಂಥ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂಥ ತಂಡ. ಹಾಗೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಕೂಡ ಒಂದು 2 ವಾರದಲ್ಲಿ JD ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ MSC ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಫ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂಥ ತಂಡ. ಸೊ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. 2 ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುಭಾಶಯ ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎಸ್ ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮೊಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುವ. ಎಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಚಿಮಿಗೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೊಂಜೆ ಪೂನಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಪದ್ರಾಡ್ 12th ಮ್ಯಾನ್ಗೆ, ಪ್ರದೀಪ್ 12th ಮ್ಯಾನ್ಗೆ 12th ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ Torpedos Kana as well as the captain of Red Wings Kunjat Bail, Bashit, and the captain Tanzim are in the middle. I request yes, chief guest Roland Pinto sir ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನೋಜ್ ಇವರು ಟಾಸನ್ನು ಆರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಹಾಪೌರರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
successful captains of Red Wings Kunjat Bail as well as Torpedos Kana. Tail is a call. It is a call, but it's a tail. Toss which is on by Bashit. Bashit toss win ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಇದ್ದೀರಿ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೀಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಗೆ? ಟೀಮ್ ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನವಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತನ್ಜೀಮ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಹ ಉಂಟು. ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ರನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸಿದೆ. ಎಷ್ಟು ರನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ನೀವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂದರೆ 8 ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ರನ್ನೊಳಗೆ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿ? 48 ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಹ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ 2 ವೀಕಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರೋಫಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು JD ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತೊಂದು MSC ಟ್ರೋಫಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ ದ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಯು ಆರ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ KFC Trophy 2025. This is what the captain of Torpedos Kana won the toss, elected to ball first. Tanzim, the captain of Red Wings Kunjat Bail, ನೀವು ಟಾಸ್ ಸೋತಿದ್ದೀರಿ. ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ಸೋತಾಯಿತು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 48 ರನ್ನೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ? 50 ಎಬವ್ ಅಂತ, ಅದರೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೀವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, 50ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ರನ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಎನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೆದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಫೈನಲಿಗೆ ಬಂದು ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೀಮನ್ನು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಇದೆ ಬೌಲರ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂಲ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಪೂಲ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗುವ ಇಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ತಂಡ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೀಮನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಕನವನ್ನು FC ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಆಡಿದರೆ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವನ್ನು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು, ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿ, ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿ ಅಗೈನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್. ನಾವು ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟೀಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Yes. So Lakshminarayan Acharya will go into ball, the very experienced campaigner to Kiran. Down the track and a slower one from Lakshminarayan Acharya, so that Kiran have to adjust his stroke, push that one down to cow point region. One of the technically very sound player, Kiran Kumar Kodical, and Lakshminarayan Acharya, also former cricketer, and nowadays is absolutely contributing for Underarm cricket with this form, manufacturing the bat for the Underarm cricket players. Absolutely is a huge contribution for the cricket from Lakshminarayan Acharya. Now Rohan, the leg spinner, the cunning leg spinner, and what a fantastic struck there from Kiran Kumar Kodigal. One bounce, two bounce, but still ball is not reaching to the fence. Again Rohan with this googly leg spin. Full toss this time, definitely he will go in to get the distance. No, the catch has been taken in the deep long on. That was a mighty one. Powerfully struck, still short of that boundary line. Thank you, Kiran Kumar Kodical, for displaying a wonderful batting performance. Manoj Kumar, one more legend. What a fantastic stroke, played it down to mid wicket.
Both are fantastic striker of the ball. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೌಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಮೀಮ್ ಟರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನದ ಗೂಗ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್. ಶಮೀಮ್ ಅವರು ಮಾಡಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. Lovely shot, played it down to deep long on region for a single. ಸಮೀಮ್ ಅದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮೊನ್ನೆ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಬೌಲ್ ಹಾಕಿ. Fantastic, perfect leg cutter. Yes, thank you very much each and everyone. ಫಾರೂಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಅಂದ ಫಾರೂಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತದಾರು. ಫಾರೂಕ್ನ ವಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಂಟು ಬೇಸ್ಟ್. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಟಾಸ್ ಜಯಿಸಿದಂತಹ ಟರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೋಪಿ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. KFC Kodical 2025, KFC Kodical organizing KFC Champions Trophy 2025. Outstanding concept here from Pawan and owner of KFC Kodical, and having this kind of cricket tournament, it will definitely go into benefits Underarm cricket, because top 10 teams will taking part in this cricket tournament, and they are celebrating their 35 years. First of all, I would like to congratulate KFC Kodical, because this has been outstanding journey. 35 years, not easy, isn't it? The beginning is easy, but continuously taking that organization till 35 years, lot of efforts, lot of dedication and determination which is required here. And under the leadership of Pawan, I think KFC Kodical nowadays is doing a great job in Underarm cricket. एग्जैक्टली सतीश, जैसे कि आपने फरमाया, इस वक्त एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला KFC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ पवन दे आर सेलिब्रेटिंग 35 years of cricket. Because of that they organizing this such a fantastic tournament in the name of KFC Champions Trophy 2025. 10 prestigious teams are participating in this tournament, and we are expecting some fantastic battle today till night. और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आज एक बेहतरीन क्रिकेट इन 10 प्रतिष्ठित टीमों में हमें खेलने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा. Exactly, Gopi, because almost we are end of the season 24-25, and this might be the last opportunity for the all 10 teams to showcase their talent, because every team just wanted to finish their season with the victory, so that we are expecting some good competition with that 10 teams. And wait and see, Gopi, which team will going to become the champion here. And now it's a time for us to join the commentary box. Thank you, thanks a lot.
Welcome back for the prestigious KFC Trophy, KFC Champions Trophy 2025, which is proudly presented by KFC Kodical under the great leadership of Pawan and their teammates. As they're celebrating their 35 years of journey in cricket, they just wanted to make that 35 years journey memorable one, so that they are organizing prestigious KFC Champions Trophy 2025. So Cordial Friends Circle registered presenting this cricket tournament. The first match after that inaugural ceremony, and we are into the inaugural match. So, news from the center after that inaugural ceremony. We just the captain of Torpedos Kana, they elected to ball first, and opening batters are in the middle for team Red Wings. Kunjat Bail, left and right combination, and Nawaz and as well as Sabit, the batters are out there in the middle. And Chetan, as always, the opening bowler for the side of Torpedos Kana. The first ball of the tournament, delicately played. Chance of run out, but throw which is little bit wide there from Shinan to the hands of Basit, the wicket keeper. And the batter just managed to complete that single. Quick one and risky one taken by both the batters. In the beginning itself, they just wanted to take a quick single here. And fortunately, for Sabit, that ball is slight a bit of wide. Otherwise, he's in danger. So anyhow, the first run came here for Red Wings. Kunjat Bail, they are off the mark, and even the dangerous batter Nawaz is also off the mark. It was matching towards going to be a power play. And here is Chetan again from the BMR end. Right arm over the kitty balls. Oh my goodness, that ball is absolutely very close to the stumps. It's a little bit lazy footwork there from Sabit. He just wanted to go for the sweep shot, but he's not really bending his front foot. And that's what is really the problem. The ball is just past his under bat and misses that off stump. Otherwise, it's going to be a close one. Excellent ball there from Chetan. Oh, this time he got the wicket. Sabit again, it was a look like he's a little bit lazy today. I'm just watching the first ball is just tried to sweep the ball. The second one we can see that not the quick movement of the bat as well as the footwork from Sabit. Looks like it's lazy there. And because of that, the ball is hitting the middle stump and is back in the pavilion. First wicket is back in the pavilion. So, fantastic beginning here from Chetan from the BMR end. And Chetan strikes a huge wicket because Sabit is a batter. Is in a terrific form in the last 3-4 tournament which is played here in USG Cricket Ground, and one tournament which is played in SVS Bantwal JD Trophy, and even in MS Trophy also. The Sabit is absolutely performed very well for their respective team. But in this particular match, the Sabit absolutely not judging the line and length of the ball. Just like I mentioned, a slight bit of laziness is costing his wicket. Now new batter in is a dangerous one. One more dangerous batter as far as underarm cricket is concerned. Altaf Walpadi. The name you can hear every time, isn't it? And in underarm cricket, one of the most destructive batter, classical batter, and fantastic striker of the ball. Now Walpadi checking the ball and saying that ball is not happy, that ball is not that much of hard. It was a little bit medium hard, so that not a good news for the big hitters. And here is Chetan. Tata Medisawa, lovely shot, played it nicely into the extra cover, but unfortunately ball will not going to travel. And the fielder from extra cover just going back and
going back and fields the ball and ample time for the batter to complete the single. So with that single, scoreboard moves on to 2 for the loss of 1 wicket. This time batter wanted to go for the sweep shot and played it down to square leg region for a single. With that single, scoreboard moves on to 3 for the loss of 1 wicket in the over number. The first is in progress. Chetan. Good start from Chetan again in this first match. Torpedos Kana, the team has got success in the last 2-3 tournaments. Bond leg side going to be a wide. With that extra scoreboard moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. First is in progress. And fantastic weather condition, hot condition, but perfect condition for the cricket. And here is Chetan, right arm over the wicket balls. This time wanted to go for the expansive drive. Didn't got that much of timing enough to get the ball into that between the extra cover. And with that dot ball, first over which is comes to an end after completion of first over. Red Wings Kunjat Bail searching for the right track. They are 4 for the loss of 1 wicket. Sharan brought into attack to bowl the second over of the power play from the ascent end, and one more end here in UCG cricket ground. Two donors of this cricket tournament, BMR end as well as ascent end. And round the wicket, Sharan is the man in form in bowling. He is in operation, and the wait and see how he will going to continue his form in this KFC Champions Trophy. 5 for the loss of 1 wicket. It will correction. This time reverse sweep played it down to backward point region for a single. So 5 on the board. After first over, it's 4 runs, and beginning of the second over, first ball, 1 run taken by the left-hand batter Nawaz, and now Valpadi, Altaf Valpadi will go to take the strike. As umpire Nazir Eden Krishnapura. Ball him, clean him up. That's what I'm talking about. This is a man is in a fantastic form in the bowling. Again, he continues here as so, with a fantastic leg cutter as Altaf, Altaf Valpadi. He just wanted to go for the expansive drive, misses the line completely, hitting the leg stump. And wicket number 2 of Red Wings Kunjat Bail are back in the pavilion now looking in trouble now. Two very good quality batters, two
destructive batters of Red Wings Kunjat Bail are back in the pavilion. Now they have to get some partnership. This is a 8 overs game. Of course, the power play, but a power play in the sense it's not compulsory to you to go for the big shot and throw your wicket. But sometime you needed some sensible batting. As for the condition, you have to bat. Now captain have to deliver. Tanzim, the captain of this side, a very successful captain for the side of Red Wings Kunjat Bail, has got a fantastic memories in the last 2 week back when real estate Chilimbi, they organized the United Trophy 2025. The Red Wings Kunjat Bail shown their fantastic performance in that tournament. And he is a man, Tanzim, leading from the front, takes his team into success. Now again, needed him to bat well. And wait and see. Now Sharan, successful bowler, bowling away from us, right now over the wicket. Again with his offer, they're going for the quick single. Excellent running between the wicket there from both the batters, especially the Nawaz. He's running towards a dangerous end. And excellent judgment of the run. Even the ball is went quickly to the hands of the fielder at gully region. But good enough for the batter to complete the single. Quick single taken there with that single score. Namuzan 6 for the loss of 2 wickets. Bedra Media having a live telecast of this cricket tournament, having some innovative thinking and bringing some kind of excitement in the live telecast as well with their unique thinking and giving 100% in that live telecast. One more delivery, which is Nawaz wanted to go for the river sweep, but missed it completely. No damage done. One more good over which is in progress here from Torpedos Kana through Sharan, the man in good form. This time lovely shot, just up and over, but ball is not in hard in the nature. Ball will not going to travel quickly. Enough time for the fielder to run back and field the ball, and at the same time overthrow which is comes into play. No backup. The 3 runs, very important 3 runs completed. So after that completion of the 5th delivery of the over, it's 9 for the loss of 2 wickets. Each and every run going to be a very crucial. I'm just watching the condition of the ball. I'm not talking about the condition of the pitch, because in underarm cricket, the more than the condition of the pitch, the weather condition as well as the condition of the ball which is used for the tournament, that will go into comes into play. I think any score of 45 to 50 is going to be a good score in this condition, seeing the nature of the ball. This time down the leg side, but going to miss the leg stamp surely, so that the first over, second over which is comes to end after completion of over number 2. Red Wings Kunjat Bail searching for the right track, still a little bit struggling. They are 9 for 2. They're going exactly 4.5 runs per over. You're watching KFC Champions Trophy 2025. This is what you're watching in a screen, that cinematic camera which is implemented in the present the Bedra Media, and newly purchased very costly as the cinematic camera, and then we are seeing that an international standard, zooming the particular players. And of course that's why in the nowadays Bedra Media, they have more subscribers because of their quality coverages. They're on the heart of all underarm cricket lovers. This is Tanveer, the local boy in the screen. Change in bowling from the BMR end. Shakir brought into attack. The first ball, Nawaz just wanted to go for the reverse. If Nawaz, talking about him, one more batter is in a terrific form. And what a form he has got. Every tournament he is stuck with this bat. And they won the Man of the Series award in the JD Trophy, and won the Best Batter award as well in the MSC Trophy. Altogether, he has got a fantastic tournament from the bat. And even the condition is not that much of suitable for the batter like Nawaz. But if you see that, he's adjusting that. And he's adjusting his technique, he's adjusting
his strokes, exactly. It's not so easy to hit the big shot straight away. You have to get time a little bit in the middle and make the ball a little bit hard when the time progresses. Down the leg side, try to work set on the onside region, but deflected from his leg. No bat involved. Leg by call by umpire Roland Pinto. With the addition of that leg by score, but moves on to double figure 10-11 on the board for the loss of 2 wicket in the over. Number 3 is in progress. Shakir. And Shakir Jaki, the great all-rounder for the side of Torpedos Kana, bowling from the BMR end. This time, lovely shot, played it down to long off, but protection is there in the wideish long off. Akram quickly moving to his left to field the ball. Ample time for the batter Nawaz to complete the single. So this is what the problem. If the ball is not hard in the nature, ball will not go and travel quickly. They're giving some chance here for the fielder to field the ball. This time, switch it comes into play. Played it nicely in the gap. Still wide, I'm talking about outfield is not quick. And a good piece of fielding there by the fielder in the negation. Nizam Aris there in the deep. And ample time for the batter to complete a couple of runs here. I think it's just a little bit problem here. Just to try to field the ball. And it looks like having some back pain. They're struggling with this back pain because you're giving a little bit extra effort for that fielding. And 15 for the loss of 2 wicket. Runs are coming in this over. 5 runs already. Just out of the reach of Imtiaz at extra cover. And ample time for the batter to complete that couple of runs. Just out of the reach of Imtiaz. Good over from the point of view of Red Wings Kunjat Bail. The 7 runs came from that over. After completion of over number 3, the total score of Red Wings Kunjat Bail are 16 for the loss of 2 wicket. You are watching KFC Champions Trophy 2025 and match number 1. 17 for the loss of 2 wicket. No change in bowling. Sharan to continue. And the first over, he picked up a wicket for 5 runs. Now he's bowling his second over from Ascent End to Tanzim. Tanzim tries that one, lack of placement, straight to the hands of Ashwin at mid-off. And of course, Nawaz, lefty, is definitely just aware of that fielder. He doesn't know where the fielder is, but quickly send him back by Tanzim. Otherwise, a chance of run out which is created in the non-strikers end, and no run scored. This time, straight to the hands of Imtiaz. Again, he drops the catch. Straightforward chance gone in vain. Slight a bit of a lazy reaction came from Imtiaz, isn't it? It was not in that much of height. It was an easy height for the Imtiaz to take. Have a look at that one. Inside-out cricketing stroke. Played it straight to the hands of Imtiaz. He won in the second attempt also. And can reach to that one, but he missed it completely. The life for Tanzim. 1 run added. 18 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Sharan now changing his angle. Quite understandable. Left-hand batter is in strike, so he's wanted to come round the wicket with a short run up. Again, they wanted to go for the expansive switch it off stop by Chetan at backward point region. Ample time for the batter to complete the single. 19 for the loss of 2 wicket. Watching Sharan, when he was started his career, he's got a long run up. He's coming from almost at the edge of the circle with the pace. And but in the present days, he's shortening his run up, but effectively bowls. And again, played it nicely down to wide off, short mid off. Again, busy customer. Ashwin there at short mid off, fields the ball. Ample time for the batter to complete the single. 20 for the loss of 2 wicket in the over number
4 is in progress. Nawaz to take the strike. Improvisation, swept the ball nicely into the deep square leg region. Clever cricket here from both the batters. So they are dealing with a single, playing as per the condition required is 20 for the loss of 2 wicket in the over. Number 4 is in progress. Fifth time in this over, Sharan bowls. Last time in this over, correction, last delivery remaining. Appeal for leg before wicket. Umpire not interested, rightly so. It's from the bat, and one more wicket, one more over, which is comes in and good over from the point of view of Torpedos Kana. Sharan completes his 2 overs quota, conceded 10 runs and picked up 1 wicket in the economy of 5 runs for over and 4 completed. It's a 22 for the loss of 2 wicket. Team Red Wings Kunjat Bail after that early breakthrough. And both the batters are slowly and steadily they are building up the partnership, and now it's a time for the little bit acceleration of run rate here for Red Wings Kunjat Bail, which is badly required for them. And wait and see how well they will going to get acceleration, and wait and see how Torpedos Kana will going to continue their bowling performance in the remaining 4 overs. It's a time to change in commentary box. First time today in the morning in this KFC Champions Trophy. I would like to invite my long time commentary partner Mr. Gopi to take over the microphone. Good morning, Gopi, and welcome to the prestigious KFC Champions Trophy 2025. गुड मॉर्निंग सतीश और सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट KFC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इस वक्त शुरू हो चुका है एक भव्य उद्घाटन समारोह के बाद, और इस टूर्नामेंट का पहला मैच इस वक्त प्रगति पर है। तो जहाँ तक सवाल है, इस वक्त टॉर्पेडोस काना का मुकाबला इस वक्त होता हुआ रेड विंग्स कुंजत बैल के साथ है, और टॉर्पेडोस काना ने पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उनके 2 विकेट इस वक्त गिर चुके हैं। स्कोर है इस वक्त, इस बार गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, गेंद जब तक फील्ड हुई शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो शाकिर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं, और क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज नवाज और तंजीम सामना करते हुए इस वक्त नवाज, और गेंदबाज इस वक्त शाकिर। यह गेंद इस बार गेंद को स्विंग करना चाहता चूके, और गेंद सीधा पहुंची विकेट कीपर के हाथ में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। निस्संदेह एक साझा है कि इस वक्त सख्त ज़रूरत है रेड विंग्स कुंजत बैल के बल्लेबाजों को, और इस बीच ये गेंद नवाज के लिए, गेंद को खेला पॉइंट पर, रन के लिए दौड़ पड़े, इस वक्त थ्रो पहुंचा जरूर, लेकिन गेंदबाज शाकिर काफ़ी आगे आ गए थे, विकेट से आगे उन्होंने थ्रो को इस वक्त रिसीव किया, लेकिन तब तक बल्लेबाज 1 रन दौड़कर अपना छोड़ बदल चुके थे। 24 रन बन चुके, 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज शाकिर इस वक्त तंजीम के लिए, यह गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। तंजीम की पारी समाप्त। इस वक्त उछाला जरूर था, लेकिन प्लेसमेंट गलत, और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने इस कैच को लपक लिया, तो इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है। एक और तीसरा विकेट गिरा। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था और किस तरीके से इस कैच को लिया गया था लॉन्ग ऑफ पर फील्डर द्वारा, और 24 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है। रियली स्ट्रगलिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ रेड विंग्स कुंजत बैल एट द सिचुएशन। और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, कम से कम 50 के आंकड़े तक उन्हें पहुंचना होगा 8 ओवर में, जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है। और गेंद जो इस श्रृंखला में इस्तेमाल की जा रही है काफ़ी सख्त नहीं है, पंच गेंद है, तो निश्चित रूप से गेंदबाज इसका ज़्यादा फायदा यहाँ पर उठाते हुए। और जहाँ तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन होता हुआ अल्ताफ बसवनगुडी नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार शाकिर की गेंदों का, और शाकिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया गेंदबाज की दाईं ओर से, गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑन पर, 1 रन का इजाफा, जस्ट अ सिंगल रन एडेड। तो इस वक्त 1 रन का इजाफा हो चुका है, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 24 रनों पर। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी,
बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ शाकिर स्वयं हैरान रह गए कि गेंद स्टंप्स पर क्यों नहीं टकराए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। केएफसी कोडिकल और एचएफसी हरेकड़ा के बीच में अगला मैच खेला जाएगा, तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें। केएफसी कोडिकल ಹಾಗೂ ಎಚ್ಎಫ್ಸಿ ಹರೇಕಳ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ऑफिशियल हाಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, एरिस इस वक्त गेंदबाजी संभालते हुए और अल्ताफ बसवनगुड़ी जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जो 3 विकेट इस वक्त गिर चुके हैं। साबित अल्ताफ और तंजीम के रूप में, और इस बीच एरिस एसेंट एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अल्ताफ बसवनगुड़ी के लिए यह गेंद रिवर्स शॉट टॉप है, लेकिन फील्डर गेंद तक पहुंचने में सफल हो चुके हैं। और जहां तक सवाल है, फील्डर जो थे शायद इम्तियाज जिन्होंने गेंद को इस वक्त लपक लिया बेहतर तरीके से। हालांकि कुछ हद तक दूर पर जरूर थी गेंद, लेकिन अंतिम क्षण में अपने दौड़ पर वृद्धि करते हुए गेंद को इस वक्त उन्होंने लपक लिया। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से टॉप एज पर टकराए। इम्तियाज को थोड़ा सा दौड़ जरूर लगाना पड़ा, लेकिन बेहतर तरीके से इस कैच को लपकने में सफल। और चौथा विकेट गिर चुका है इस वक्त 25 रनों के ऊपर, 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। रेड विंग्स कुंजत बैल बैडली रिक्वायर्ड अ पार्टनरशिप एट दिस स्टेज टू गेट बैक इनटू दिस मैच। और इस वक्त नंबर 6 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। एरिस की गेंदों का जलाल, वन मोर गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। और जहाँ तक सवाल है, नवाज आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे थे, उनके सामने 4 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन एक छोड़ पर वो इस वक्त डटे हुए हैं। और इस वक्त उनका साथ निभाने के लिए जलाल इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। और एरिस इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त उछालना चाहता। जहाँ तक सवाल है, इस वक्त रन का तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। स्कोर रुक चुका है 25 रनों पर 4 विकेट के रक्षार पर, 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। एक बार फिर से गेंदबाज की यह गेंद जलाल के लिए स्वीप कर दिया गेंद को। इस वक्त गेंद पहुंचे डीप स्क्वायर लेग पर, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए, लेकिन एक रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 26 रनों पर। रन से ज्यादातर सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त आरिस तैयार। नवाज लेफ्टी जो कि सामना करते हुए यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त। गेंद को खूबसूरती के साथ वाइड लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर। इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। और एरिस फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इन फैक्ट, and a point fielder after it, and the batsman got a single, 28 for the loss of 4 wicket. Quite cricket is now going on here in the innings of Red Wings Kunjat Bale. Still a ball lefty this over, और गेंदबाज एरिस इस वक्त नवाज लेफ्टी के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति। गेंदबाज एरिस की 6 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर, 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 overs scored by Red Wings Kunjat Bale after being losing the toss and deputed to bat by Torpedos Kana in the inaugural match of this prestigious cricket tournament, KFC Champions Trophy 2025, which is proudly presented by Kodical Friend Circle registered Mangalore. तो इस वक्त 7वां ओवर शुरू होता हुआ, 7वां ओवर लेकर चेतन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज जलाल के लिए। अंपायर सर श्रीमान रोलान पिंटो और श्रीमान नज़ीर ईडन को आप इस वक्त देख रहे हैं मॉनिटर पर। दोनों काफ़ी अनुभवी अंपायर्स इस वक्त अपना अंपायरिंग का कार्यभार यहाँ पर बेहतर तरीके से निभाते हुए। और
इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए चेतन दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त गली पर और फील्डर वहां पर मौजूद है जरूर लेकिन गेंद के आगे टिप्पा खाते हुए और इस बीच एक रन का इजाफा हो चुका है। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 29 नाउ विद दैट सिंगल। 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 7th ओवर। और फिर से एक बार गेंदबाज चेतन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा और इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। रिवर्स शॉट इस वक्त खूबसूरती के साथ खेला था और यहाँ पर देखिए ये स्ट्रोक जिस तरीके का था पहले ही ठान लिया था कि गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेलेंगे और रिवर्स शॉट खेलने में भी सफल और गैप ढूंढने में भी सफल। बेहतर स्ट्रोक यहाँ पर लगता हुआ नवाज लेफ्टी के बल्ले से 18 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर नवाज लेफ्टी बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों कब तक उन्होंने सामना किया। ये गेंद उछालना चाहा एक बार फिर से रिवर्स शॉट के तौर पर लेकिन काफ़ी चतुरता के साथ गेंद फेंकी थी इस वक्त चेतन ने लेग स्टंप से बाहर की ओर और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। चेतन फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। चेतन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा इस वक्त गेंद सीधे लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और जहां तक रनों का सवाल है तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। 34 रनों पर 4 विकेट गिर चुके हैं 7वां ओवर प्रगति पर और चेतन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ तो तीसरे अंपायर की इस वक्त मांग की गई है ये वाइड गेंद है या नहीं परखने के लिए। तो जहां तक अगले मैच का सवाल है एचएफसी हरेकला का मुकाबला होगा केएफसी कोडिकल के साथ अगले मैच में। तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला केएफसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई आज सुबह भव्य उद्घाटन समारोह हुआ इस श्रृंखला का और उसके बाद पहला मैच है जो कि प्रगति पर इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो सही गेंद घोषित, रिवर्स शॉट ऑफर किया था अंतिम क्षण में और जहां तक सवाल है सही गेंद इस वक्त तृतीय अंपायर द्वारा घोषित किया गया है। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 34 रनों पर 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। नवाज लेफ्टी एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए 18 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों को अब तक उन्होंने सामना किया और चेतन ने फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए इस वक्त तैयार नवाज के लिए। ये गेंद रिवर्स शॉट खेला इम्प्रोवाइजेशन करते हुए लेकिन सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम को प्राप्त होता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 35 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्टी दिस ओवर और इस बीच चेतन ने इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करेंगे जलाल के लिए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। जलाल जो कि इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और शॉट फाइन लेग फील्डर शाकिर के हाथों से गेंद इस वक्त चूकी और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन तेजी के साथ चुरा लिया। 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 37 रनों पर 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार चेतन दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद है इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन मिलेगा। दूसरा रन 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए थे लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को इस वक्त खींच लिए बल्लेबाज ने और 1 रन के साथ संतुष्ट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 38 रनों पर 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट after the completion of 7 overs and now just a last over remaining in their innings. KFC Kodical ಹಾಗೂ HFC ಹರೇಕಳ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು
ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. HFC ಹರಿಕಳ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. हैरिस अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार. अंतिम ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त और नवाज लेफ्टी जो कि 20 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद उछालना चाह नोट कर दैट वन प्रॉपरली. बल्लेबाज दौड़ पर इस वक्त रन आउट का खतरा और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है. जलाल की पारी समाप्त. इस वक्त गेंद को खेला था नवाज ने, लेकिन गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर और इसे बिना देखे जलाल ने रन लेने की हड़बड़ाहट दिखाए. फलस्वरूप यहां पर रन आउट होता हुआ. तो यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था. गेंद को खेला था इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, सीधे गेंद के फील्डर के हाथों में पहुंची और जलाल काफ़ी आगे निकल आए थे और कोई मौका नहीं उन्हें वापस लौटने का. और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका. 38 for 5 and now just 5 balls left in overall calculation in their innings. 5 गेंदें इस वक्त बाकी और नए बल्लेबाज न्यू बैट्समैन इज नॉट कम्स आउट टू द मिडल. वैशाख नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त क्रीज पर पहुंच चुके हैं और हैरिस गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद उछाला इस वक्त लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली और गेंद इस वक्त लंगोन सीमा रेखा के अंदर लपक लिया गया है. तो इस वक्त गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं. और यहां पर देखिए किस तरीके से बिल्कुल जमीन पर बल्ला मारा था और उसके बाद गेंद को उछाला इस वक्त जरूर, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं था कि गेंद लंगोन सीमा रेखा को पार कर सके. तो इसी के साथ यहाँ पर एक बेहतरीन पारी की समाप्ति हो चुकी है. नवाज लेफ्टी के 20 रन उन्होंने बाए, 23 गेंदों का उन्होंने सामना किया और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त उनका विकेट इस वक्त गिर चुका है. तो नए बल्लेबाज न्यू बैट्समैन इज नॉट कम्स आउट टू द मिडल. तो अंपायर ने इशारा किया कि दे आर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट, सो वन फील्डर दे हैव टू ब्रॉट इनसाइड द 20-yard सर्कल एज फार द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस टूर्नामेंट इज कंसर्न्ड. और इस वक्त नए बल्लेबाज मितेश का आगमन यहाँ पर होता हुआ और मितेश इस वक्त सामना करेंगे हैरिस की गेंदों का. 4 गेंदें बाकी अब उनके पारी में और हैरिस गेंदबाजी करने के लिए तैयार. मितेश के लिए आज मंसूर की अनुपस्थिति में इस वक्त टोरपेडोस काना यहाँ पर खेलता हुआ और इस बीच रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया. गेंद पहुंचे इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन पर 1 रन के लिए. 39 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 6 विकेट्स in the over number 8 and the last in progress in their innings. Still 3 balls left in overall calculation in their innings. 3 गेंदें बाकी और गेंदबाज इस वक्त हैरिस अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार वैशाख के लिए. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया वैशाख ने. गेंद पहुंची इस वक्त लंगोन पर, फील्डर दौड़ कर आया लंगोन से, गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाया. अंतिम ओवर होने के बावजूद इस वक्त रन से सिंगल्स के रूप में बनते हुए यहाँ पर और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर. 40 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 8 एंड द लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स. और इस बीच हैरिस अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, गेंद हवा में लेके स्क्वायर लेग पर फील्डर थे थोड़े से स्क्वायर इम्तियाज और जब तक वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 41 41 for 6. नाउ जस्ट लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स. अंतिम गेंद उनके पारी का लेकर हैरिस इस वक्त तैयार. बल्लेबाज वैशाख के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद वैशाख के लिए ड्राइव कर दिया. गेंद को इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर अश्विन के हाथों में गेंद, एकमात्र रन मिलेगा और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप. In fact, they come back for the second run. This time he won't survive and a wicket lost. 7th wicket down. And that is the conclusion of the first innings of this match. And the Red Wings Kunjat Bail managed to score 42 for the loss of 7 wickets in the stipulated 8 overs. And now the target for Torpedos Kana is 43. They have to score for victory in 8 overs. That means they have to score 43 out of their stipulated 48 deliveries. That means in their stipulated 8 overs with a required run rate of just over 5.5 runs per over.
with the required run rate of 5.38. In fact, the required run rate of 5.38, the run rate required for them for Torpedos Kana for victory. 43 they have to score in 8 overs, 48 deliveries. With the help of 10 wickets, they have to make the present equation shows for them. And let's see, can they reach the target or not. और इससे पहले कि टॉर्पेडोस काना की पारी की शुरुआत हो, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब टॉर्पेडोस काना की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. Thank you very much, Gopi. Welcome to the innings of Torpedos Kana. And after their restricting their opposition for just 42 runs by picking up 7 wickets, and they are now their opening batters came into middle for Torpedos Kana. And and in that 42, the batter Nawaz, who scored 20 runs, one of the big contributor from the bat in just 23 deliveries. Otherwise, disappointment performance from the other players, and only one player who got 8 runs, which is second highest. Otherwise, disappointment performance from the batters of Red Wings, Kunjat Bail. First ball of the match, and defended nicely, and they're going for the quick single, and they completed as well. And before the fielder from short mid wicket, Nawaz run across his left field the ball, and batter Bashit, the man in form and successful captain of the side of Torpedos Kana, is off the mark, one without loss of any wicket. Tanveer has been promoted for Torpedos. Oh, lovely delivery, beautifully bowled, off balance.
And the batter absolutely off balance at one stage, and now umpire goes upstairs to see the batter is safe or not. It's going to be a third umpire now. Will going to give the decision. Now wait and see what could be the decision from third umpire. Of course, in the first attempt, is maybe out of the crease. Yes, if you can see that in the first attempt, the Shabit fumbles, but second attempt, and it just wanted to drag his back foot. He drags the back foot, and at that time I have to see whether the batter's foot, which is almost inside the line or on the line. Just umpire have to see. So not out is a call, just a little bit, a slight bit of a part of his boot is inside the line, and if it is on the line, definitely is going to be out. But when the bails are off, that time slight bit of the back foot boot of Tanveer, which is inside the crease, so that is safe. But it's a very touch and go, and a close one, and just survived Tanveer in that decision. And Yajnesh, good start from him. Left arm around the wicket. This time, lofted handsomely down to deep long off region. Fielder won't get that one. Into the whitish long off for a 6. Unbelievable struck there from Tanveer. It's not an easy condition, I mind you, in the morning here. Even the ball, which is not pretty hard in the nature, but the way that he's got the timing is absolutely perfect.
Just a sheer time, nothing else. Have a look at that one. Have a beautiful shot, isn't it? I'm really surprised where you get that much of timing to get the distance. This is what Tanvir can surprise sometime in his batting. And that's why he's promoted up in the order. One more single has been added total. With that single, Skoba moves on to 8 on the board without loss of any wickets. A good start here for team Torpedos Kana. And that brings Bashit into strike now. There's that lovely shot. This is a Basit for you. The man in good form. But protection is there in the deep. And be fair, the Mitesh will go and return the ball. Ample time for the batter to complete that couple of runs. With that couple of runs, Kobana moves on to 10 on the board. It's not a good start for the team Red Wings, Kunjat Bail, but excellent start here for Torpedos Kana. They got already 10 in the 5. Sensible. This time, chance of run out. Wide throw from the fielder, and wicket keeper fails to gather the throw as well. Absolutely, it's a suicider. Tanvir almost given up when the batter pushes the ball straight to the hands of fielder. I think he thought it might be all over. It's 11 without loss of any wicket. I'm just talking about Tanvir. He's been first time I'm watching in that batting department. He's been promoted up in the order, and in the present season I'm not watching him as he is coming as an opener for the side of Torpedos Kana because of plenty of batting department what team Torpedos is concerned. As far as the opener is concerned, I think today Ashraf is missing and Mansur is also missing, so that is opportunity for Tanvir again, because I'm really surprised sometimes he's coming as a number 9 batsman, 10, 11. It's having such a quality batters in your side is coming in the down in the order, and now I think he's just wanted to grab this opportunity to showcase his actual talent what he has got. Nicely driven towards the mid-wicket region. That will going to be a boundary here. Fantastic stroke there from Bashit. What a man he has been. Absolutely in this particular season he is unstoppable. Each and every tournament his bat is talking. His bat is talking with some unbelievable strokes. From the far end, Mitesh from the BMR group end, outside the line of frame, going to be a wide, going to be a ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಜಾಯಲ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ, ತಮಗೆ ಸಂಘಟಕ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. 16 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. This time lovely sweep shot, powerfully swept that one down to square leg region before the fielder Vaishak will going to get the ball down at deep square leg region. Ample time for Basit to complete that couple of runs. 18 without loss of any wicket. These two batter, of course, Basit and Tanvir, very quality players, has got the technique of scoring the runs in underarm cricket. It's absolutely phenomenal. Again, sensible, absolutely sensible. Just a roll of the wrist which is comes into play. Played it down to square leg region for an easy single with that single score. But Namuzan to 18 on the board in the over. Number 2 is in progress. And Mitesh will going to continue here. They needed some wicket badly for the team if they wanted to back in the game. Runs are coming very freely so far. 18 for the loss of 3 wickets. So last time in this over, 20 already on the board. This time across the line, Bashit wanted to place a favorite shot towards the mid wicket, but misses the line completely. One ball remaining, I think so. One ball remaining. Sorry for that. And the 20 without loss of any wicket. Mitesh will go into continue from the far end, from the BMR group end.
with a short run up, right arm over the wicket. Wanted to go for the switch, it missed it completely. He wants a run, chance of run out, and Shabit, the wicket keeper, couldn't manage to get the perfect throw into the stump. Missed it completely. One more expensive overages comes in, and after completion of over number 2, it's 20 on the board without loss of any wicket. Team Torpedos Kana chasing 43 to win this match. Now another 23 more runs required for the victory in 6 overs. It looks to be a Torpedos Kana in a driver's seat of winning this match. Yes, I'm just talking about the player batter Bashit. In underarm cricket, getting the runs consistently, it's not so easy. And if you see that, there's only few players in, if you see the history of underarm cricket, the few batters, they perform consistently. Each and every match is scoring the runs is not so easy, because underarm cricket is such a difficult game, because sometimes ball can keep low, some unbelievable turns, uneven bounces, everything the batter have to tackle. And even in the present cricket, everybody knows that it's a small format of games, like 4 overs, 5, 6, 7, 8, like that only. So in this format, the batter getting consistent runs is not so easy, not a joke. By considering all these difficulties, what I am talking about, scoring the runs in every matches, that shows what the quality the batsman has got. I'm just talking about Bashit, the way that is performed in this particular season. This is a particular season he will going to remember for a long time, 24-25. Again, played it down to short mid-wicket region. Yes, we are talking about some players like Sajid, also for young friends Urwa. He's also one more consistent run getter in this season. Lofted, but this time he finds a fielder. No, yes he is. This time the placement is not good enough here from Bashit. Of course, he struck the ball very well, but the fielder in the deep long on Altaf, no, is jersey number 27. Standing at deep long on Jalal. Quickly moving to the direction of the ball and completed the catch. And Bashit once again scoring a double figure. If you see that, I'm just talking about the 10 runs. I think it's a huge one as far as underarm cricket, as far as the format of cricket is concerned. Once again, he got 10 runs in that 9 deliveries he faced. So he is absolutely in a good form, win form batter for the side. He's back in the pavilion, and replacing him is Shakir. So one more good all-rounder for the side of Team Torpedos Kana. Now Red Wings Kunjat Bail, they can bounce back in this match if they manage to get another 2-3 good overs here, the wicket taking overs. This time the leg spinner there from Altaf, Basavanagudi. And now they're the batters call here for the review, whether it's going to be wide or not. Wait and see. The leg spinner. The umpire have to decide, the third umpire, whether the ball is inside the line or not. So it's a fair delivery. The ball is just passing inside the line, and because the leg spinner, if you see, if it is an up spinner, then ball certainly can move towards outside the line of that leg stump. But because of the leg spin delivery, and that ball came inside the ring. Next match, HFC Arekala and KFC Kodical. I request the players of both the team kindly request you to complete the signatures as soon as possible. 3 gone, it's 22 for the loss of 1 wicket. .33 runs per over the run rate progressing for the team Torpedos Kana. Prajveet brought it attack for Red Wings Kunjat Bail. Red Wings Kunjat Bail in the last 2-3 tournaments, their performance been outstanding. After winning United Trophy, then they went into JD Trophy again. No, they are not participated in the JD Trophy, but they are in the MSC Trophy. They played at Moda Bidre,
They came into the semi-final, till the semi-final. It's not an easy journey, outstanding journey from Red Wings Kunjat Bhai. Oh, lovely delivery indeed there from Prajvit. Absolutely perfect start from left-arm bowler. And in the MSC Trophy, they lost the match against FCT Puttige. Nicely swept that one down to square leg region by Shakir, one of his favorite sweep shot. Played it down to deep square leg for a single. With that single, score moves on to 23 for the loss of 1 wicket in the over. Number 4 is in progress. Prajvit again. Misses a line. Wrong one is tried it. Away going delivery, but the ball absolutely missing the line. Too far away from the off stump. Flicks it away. Tanvir down to square leg region for a easy single. With that single, the score but moves on to 25 for the loss of 1 wicket in the over. Number 4 is in progress. You are watching KFC Champions Trophy 2025. Single-handed sweep shot. One of Shakir's favorite, typical Shakir sweep shot. He got a single for that. With that single, score but moves on to 26 for the loss of 1 wicket. Prajvit, left arm, round the wicket. Tanvir, sensible batting so far from Tanvir. As you know exactly, no need to panic at all. Just wanted to deal with the singles. And with the single, score but moves on to 27 for the loss of 1 wicket. Prajit bowls. After that single hand sweep shot, and Shakir played that single-handed steer shot down to point region, and Altaf Walpadi searching for the stump for the run out, but he missed it completely. Both the batters complete quick single. 28 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 7 runs per over, and remaining 4 overs they have to get another 15 runs to win this match. At 24 balls, 15 runs required for the victory. And before the next over will going to start here, it's a time for Sujit Kodical to take over the microphone in state language, sweet language, Kannada. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸಲ್ಯನ್ರವರೇ. KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಊರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಪೈಲ್. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡವು ನಾನ್ನಿಚ್ಚು ಮೀನ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಕೀರ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಆದಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೆಸರಿದಂತ ಥ್ರೋ ತನ್ಸೀಮ್ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶಾಕೀರ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 29, ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2. 5 ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ. ಶಾಕೀರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರೂವಾರಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪವನ್ ಕೊಡಿಕಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮನ್ ನವದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಕಾರ್ಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29, 2 ಉದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟವಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಾಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ಹಬಳಿ ಓಟದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮನ್ ತನ್ನ ಓಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಆದರೆ ತನ್ವೀರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮನ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 31. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಎಸೆದಂತಹ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ. ಅಮನ್
ಹೊಡೆಯುವಂಥ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಎಸೆತವನ್ನು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿಕ ಎಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂಥ ಎಸೆತ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಅಮನ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರನಾಗಮಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಎಸೆದಂತಹ 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಸಡ್ರಿಂದ ತೀರಾ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚಿಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 32 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತಹ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಂತಹ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 32 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 11 ಓಟಗಳು. ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಾಯ್ಲ್. ಆದರೆ 18 ಎಸೆತ 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಎಂಬ ನಾಮ. ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಎಸೆದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ BMR ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಐಟಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 17ರ ಮುಂದೆ 10 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕರು 3 ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಾರರು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 16ರ ಮುಂದೆ 10 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಬಾಲ್ 10 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಕೋಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರೋಲಲ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಜೀರ್. ಇವರು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣ ಸಿಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಥ್ರೋ ಸಾಬೀತ್ ಎಸೆದಂತಹ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಎಸೆದಂತಹ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 1 ಓಟವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ದಂಡು ಮೂಲಕ 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 34. ಈ ಬಾರಿ ತನ್ವೀರ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 35 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 14ರ ಮುಂದೆ 8 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುದ್ದರಿ ಬಡಿಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಾಯ್ಲ್. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ 36 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ನೋ ಬಾಲ್ ತಪ್ಪು ಚೆಂಡಿನ ಘೋಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ತನ್ವೀರ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದೇ, ಕಾರಣ ಇದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಸೆತ. 13ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 6. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡವು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ವೀರ್ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಉಂಟಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ತಂಡವು ಪರಾಜಯಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಮನೆಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ HFC ಹರೇಕಳ. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸಬೇಕು.
ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ? ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಟಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. HFC ಅರೆಕಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಆಮಂತ್ರಿಸನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಇಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಪೈಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಪೈಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಕ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು
ನಮ್ಮ KFC ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಜಿತ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಸುಜಿತ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸುಜಿತ್ರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
धन्यवाद सुजीत। तो जहां तक सवाल है, मैच नंबर 2 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट KFC Champions Trophy 2025 is now going to start between KFC Kodical, the host team, versus HFC हरेकला। और KFC कोडिकल ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है, और HFC के दोनों आरंभिक बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद सादिक और नौशाद, जबकि निज़ाम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और पारी की पहली गेंद लेकर इस वक्त निज़ाम तैयार। पहला पावर प्ले ओवर उनके पारी का इस वक्त प्रगति पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो निज़ाम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद पावर प्ले के अंतर्गत। और जहां तक सवाल है, केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। वाइडिश लंग ऑफ पर एक फील्डर मौजूद। और पहली गेंद निज़ाम की, यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया मिड ऑन की दिशा में, गेंद पहुंची रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो इस वक्त 0 पर स्कोर है। इट्स नॉट फॉर नॉट इन द फर्स्ट ओवर। और नौशाद फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार। निज़ाम की गेंदों का दाहिने हाथों पर द विकेट, यह गेंद इस बार गेंद को उछाला मिड ऑफ पर सीधे फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। नौशाद का स्ट्रोक जरूर उछाला था, लेकिन इस वक्त जहां तक सवाल है, मिड ऑफ पर जो फील्डर थे उनको बीट नहीं कर पाए। और यहां पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, गेंद ऑफ से काफी बाहर थी, गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को उछाला। और सादिक आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। तो सादिक का विकेट गिर जाने के बाद नए बल्लेबाज नवाज का आगमन यहां पर होता हुआ, और पारी की दूसरी ही गेंद पर पहला विकेट खो चुका है HFC हरेकला। और नए बल्लेबाज नवाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, सामना करते हुए निज़ाम की गेंदों का। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर इस वक्त हालात। और पहली गेंद अगली गेंद लेकर निज़ाम इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। और इस बीच गेंदबाज यह गेंद इस बार हल्के से अंदर की ओर आती हुई गेंद को रक्षात्मक तरीके से ढकेलना चाहता, लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए। लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। तो निज़ाम फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार स्वीप करना चाहता, लेग कटर गेंद थी, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 4 बेहतर गेंदें इस वक्त गेंदबाज निज़ाम यहाँ पर फेंक चुके हैं। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट अगली गेंद, यह गेंद स्वीप किया इस वक्त, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, जस्ट अ सिंगल ही गॉट, एंड विद दैट सिंगल HFC Arekala are now off the mark. It's 1 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइक का, तो नवाज इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुका है। नौशाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और निज़ाम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए स्क्वायर लेग, शॉर्ट फायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद। और एक फील्डर बैकवर्ड थर्ड मैन की ओर पीछे की ओर जाते हुए, और ऊपर की अगले गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस उछाला, लेकिन सीधे कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में, और गेंद की गति को इस वक्त समझ नहीं पाए। गेंद को उछाला जरूर, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं। ऐसा कहना पड़ेगा जूसी लॉलीपॉप कैच टेकन बाय द फील्डर एट कवर पॉइंट, और ये विकेट यहाँ पर गिर चुका। तो देखिए किस तरीके से हुआ था, गेंद को उछाला था इस वक्त, लेकिन नॉट कलेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, एंड कवर पॉइंट फील्डर मेड नो मिस्टेक। सेकंड विकेट गॉन, दे आर लुकिंग इन ट्रबल। HFC Arekala 1 for the loss of 2 wickets.
तो बल्लेबाज इमरान का आगमन इस वक्त हो चुका है और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार और समद गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त नवाज करने के लिए तैयार और समद गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए दूसरा ओवर शुरू होता हुआ HFC हरकला की पारी में दूसरा पावर प्ले ओवर कहना पड़ेगा इस वक्त शुरू होता हुआ 7 खिलाड़ी अभी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज समद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिना तो ऊपर था विकेट, ये गेंद अंदर क्यों आती हुई गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड विकेट पर गेंद पहुंची तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और फलस्वरूप बल्लेबाज के वो कोई दिक्कत ही नहीं हुई यहाँ पर 1 रन प्राप्त करने में। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका। समद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। फैंटास्टिकली हिट बाय द बैट्समैन इमरान, ऐसा कहना पड़ेगा। He just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style over deep mid wicket fence for a boundary. 6 on the board, 2 wickets lost, second over in progress और गेंदबाज इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इमरान जो कि सामना करने के लिए तैयार। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और समद कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 7 on the board for losing 2 wicket in the over number 2 in progress. HFC हरकला एक बेहतर शुरुआत की तलाश में इस वक्त और समद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार उछाला इन द एयर जस्ट वाइड ऑफ द कवर पॉइंट फील्डर और गेंद को इस वक्त चंद टिप्पों बाद फील्डर जब तक फील्ड करे कवर पॉइंट पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। हालांकि गेंद कुछ देर तक हवा में जरूर थे लेकिन फील्डर कवर पॉइंट पर थे थोड़े से स्क्वायर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 8 on the board, 2 wickets lost in the over number 2 in progress और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल and with that single run the scoreboard moving up to 8 on the board for losing 2 wicket, 9 in fact 9 for the loss of 2 wickets in the over number 2 in progress. Still a ball left in this over और नवाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सबद 8 रन अब तक इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं और इस ओवर में अंतिम बार यह गेंद ड्राइव किया लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेला था। ओवर के समाप्ति 2 गॉन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs. Still HFC Harikala searching for the right track. It is 9 for the loss of 2 wickets. SRFC ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಹಾಗೂ SRFC ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सो बैक टू द गेम, थर्ड ओवर स्टार्ट, तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और गेंदबाज तीसरा ओवर लेकर तैयार हकीम जो कि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए तो 2 पावर प्ले ओवर्स इस वक्त पूर्ण हो चुके हैं और फील्डिंग के प्रतिबंध जो कि हट चुके हैं और इस बीच हकीम ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इमरान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तीसरा ओवर HFC की पारी में यहाँ पर शुरू होता हुआ पहली गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को मोड़ दिया इस वक्त, गेंद पहुंचो डीप स्कोर लेग पर 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। BMR एंड की ओर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हकीम दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव, नॉट सक्सीडेड, द बॉल मिसिंग जस्ट साथ ऑफ स्टंप और सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला।
और फिर से एक बार हकीम गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद धीमी गति की गेंद, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाया, लेकिन एक रन उन्हें ज़रूर मिला इससे पहले कि शॉट थर्ड मैन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 11 रन, 11 ऑन द बोर्ड, 2 विकेट्स डाउन इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और इस बीच हकीम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार कट किया बैकफुट पर जाने के बाद, लेकिन नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल and with that single run the scoreboard moving up to 12 for the loss of 2 wicket runs। इस वक्त ज़्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज नवाज और इमरान पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए। और इस बीच ये गेंद को खेलना चाहा, गेंद तक पहुंचना चाहता, चूँकि गेंद तक पहुंच नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में और हकीम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए वाइड का इशारा। One more run added to the total, 13 on the board for losing 2 wicket in the over number 3 in progress। और इस ओवर में अंतिम बार हकीम ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, just waiting to the ball to come onto his bat and played that one sensibly down to a cover point and gone through for a quick single and get it comfortably at last। 3 gone and after 3 overs it's 14 for the loss of 2 wicket। HFC Harikala still searching for the right track। So what a fantastic cricket tournament is now progressing here in the name of Kodical KFC Champions Trophy 2025, which is proudly presented by Kodical Friends Circle registered. The winners of this tournament will reward 60,000 rupees cash plus KFC trophy, and runners will get 40,000 rupees cash plus KFC trophy. And 10 prestigious cricket teams are participating in this cricket tournament. KFC Champions Trophy 2025 day-night cricket tournament is now progressing here in this beautiful lots of Underarm cricket UCG Urwa cricket ground। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज नया ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में। निहाल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और नवाज जो कि 5 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और निहाल ओवर की पहली गेंद, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप से बाहर, स्टार्ट्स ऑफ विद वाइड, 2 फॉर सादी ऑफ स्टंप और वाइड का इशारा पर नजीर ईडन और पुष्पराज जो कि फील्ड अंपायर के तौर पर, जबकि तृतीय अंपायर के रूप में श्रीमान रोलैंड पिंटो इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स पर इस वक्त बैठे हुए। और ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर। 2 लगातार 2 लगातार वाइड गेंदें इस वक्त गेंदबाज फेंक चुके हैं और निहाल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा, वाइड नंबर 3 इन दिस ओवर। Now he's just searching for his right length and line at this situation। 3 consecutive wides, in fact 3 consecutive wides bowled by the bowler निहाल। और इस वक्त अपने सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए और इसे उन्हें इस वक्त समझाते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी, और वो इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। निहाल अपनी पहली सही गेंद की तलाश में, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए नवाज के लिए। इस बार गेंद को ड्राइव किया, इस बार बेहतर गेंद थी, परफेक्ट ऑफ कटर, और गेंद को ड्राइव करते इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, स्वीप किया इस वक्त, करना चाहा था लेकिन अंतिम कार स्वीप नहीं कर पाया ठीक तरह से, और शॉर्ट मिड विकेट पर विकेट कीपर हकीम ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 4था ओवर प्रगति पर और निहाल अपने ओवर के अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को उछाल दिया है मिड विकेट पर गेंद जाते हुए, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ
स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 19 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। निहाल अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, पेस को वृद्धि करने का प्रयास किया था, अपनी तेज़ी को बढ़ाने की कोशिश की थी, गेंद की तेज़ी को बढ़ाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर उन्होंने फेंक दी वाइड के रूप में और 2 रन वाइड के रूप में उनके खाते में जुड़ चुके हैं। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और एक बार फिर से निहाल गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। निश्चित रूप से अपने सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए गेंदबाज निहाल और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और ये गेंद निहाल की गेंद को ड्राइव करना चाहा लेकिन बल्ला जमीन पर मार गए इस वक्त, ठीक तरह से गेंद को बल्ले पर लेने में असफल और बैक टू द बॉल। गेंद को गेंदबाज ने अपने आगे की ओर आकर फील्ड कर लिया, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करने के बाद अपने अपने स्थान पर लौटते हुए और इस बीच निहाल फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ कि जस्ट हिट दैट वन प्रीटी हार्ड बट कांट फिनिश द गैप एज वेल। और लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें कुछ दौड़ जरूर लगानी पड़ी अपने आगे की ओर। देखिए किस तरीके से इस कैच को उन्होंने लपकाता लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर अपने आगे की ओर दौड़ कर आते हुए। और इसी के साथ तीसरा विकेट गिर चुका, 3rd विकेट डाउन, दे आर लुकिंग इन ट्रबल नाउ, इट्स 22 फॉर 3। जवाद नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त नंबर 5 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार निहाल की गेंदों का। और निहाल इस वक्त इस ओवर में अंतिम बार, काफ़ी लंबा ओवर उनका प्रगति पर निहाल का, और इस ओवर में अंतिम बार तैयार बल्लेबाज जवाद के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद अंदर की ओर आते हुए ड्राइव कर दिया, जगह बनाते हुए लंगोन पर 1 रन मिला इस बीच। और 1 रन के साथ थ्रो जिस तरीके से पहुंचा था, पुष्पराज ने अपने नीचे की ओर झुकते हुए गेंद की लाइन से अपने आप को, अपने शरीर को अलग किया और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। 4 ओवर के समाप्त 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 4 ओवर्स कंप्लीटेड, स्टिल द बैट्समैन ऑफ एचएफसी आरेगड़ा जस्ट स्विचिंग फॉर द राइट ट्रैक। का 5वां 4 ओवर का खेल बाकी और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, अब आगे का देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो आगे का कोडिकल सुनाने के लिए मेरे एक और काबिल दोस्त श्रीमान सुजीत को मैं इस वक्त आमंत्रित करना चाहूँगा राज्य भाषा कन्नड़ में। आइए सुजीत, धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಎಸೆಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಖಿಮ್ ಸೂರಿಂಜರವರ ಗಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆದಂತಹ 2 ಎಸೆತಗಳು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 23 ಉದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅಖಿಮ್ ಸೂರಿಂಜ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 24. ಕೋಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡಿಗೂಡ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಪಾಯ್ಲ್. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಉಂಟಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಸಿಕ್ತು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಜೀರ್. ನೋಟೌಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ, ಅದು ಕೂಡ ರಿಸ್ಕಿ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ನವಾಜ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25, 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಹಾವಳಿ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ, 5 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 27, 27 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು HFC ಹರೇಕಳ ತಂಡ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾದಂತಹ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಂಚಿದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದರೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಸೆಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಸಮದ್. ಎಸೆಟ್ ಎನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನವಾಜ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾವೇದ್. ಜವಾದ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಎಸಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಡೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 28. ಆನ್ಸೈಡ್ ಕಡೆಗಡೆದಂಥ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 29, 29 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 6 ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ 8 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ HFC ಅರೇಕಳ ತಂಡ. ನವಾಜ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ HFC ಅರೇಕಳ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 29, 4 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 2, ಕಬಳಿಸಿದ್ದು 1. ನವ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನವಾಜ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 63 ತನ್ವೀರ್ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತ HFC ಅರೆಕಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ತಂಡವನ್ನು ಈ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ವೇತಾ ತನ್ವೀರ
ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮತ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 30 ಆನ್ ದಿ ಬೌಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಾದ್. ಈ ಬಾರಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬಂತ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 31 ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. HFC ಅರೆಕಾ ತಂಡ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮತ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ವೀರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಕೀಮ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 32, 4 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು? ಒಂದು ಕಡೆ ತನ್ವೀರ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜವಾದ್. ಎಸೆಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತ BMR ಗ್ರೂಪ್ ಎನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ವೀರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 2 ಓಟ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 33 ಆನ್ ದಿ ಬೌಟ್. ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭ ತುತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. HFC ಅರೆಕಳ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 33, ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ನವ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ 37 ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ದಿಷ್ಟಿ ಎಸನ್ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ. HFC ಅರೆಕಳ ತಂಡ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರನೇ ಹೌದು. ಈ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ತಂಡದಲ್ಲಿ 33 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ 10 ಎಸೆತಗಳು. ಈ 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. LBWಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ 2 ಮನವಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಆರ್ LB ಕ್ಯಾಚ್. The appeal for catch out. ದಂಡನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಮೊದಲು ದಂಡಿನ ಸ್ಪರ್ಶನೆ, ತದನಂತರ ಕೈಯ ಸ್ಪರ್ಶನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಅಸನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಪವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದೇ? ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ನಿಜಾಮ್ ಎಂಬ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ. ಬದ್ರು 9 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ HFC ಅರೆಕಳ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಸೆತ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾಣಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆದಂಥ ಎಸೆತ ಪಿಚ್ಚಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳ್ಬೇಕೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ರೋಲೆಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನೋ ಬಾಲ್. ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 35 ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಸೆತ. ಈ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಬಹುದು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಣಾ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಕೀಬ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಗೂಟರಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗಿದೆ. ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂತ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 35. ಎಸ್ಕಾರ್ಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. LBWಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ತಗಿಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟ. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 36. 36 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ದಾಂಡಿಗನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 7 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 36. ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 7. ಸ್ಕೋರ್ moves on to 36 on the board. Loss of 6 wicket. Now remaining in the 1 over means the 6th ball. ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಸೇಲು ಎಸ್ಗಾರ್ಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಎಸ್ಗಾರ್ಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಎಸ್ಗಾರ್ಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತನ್ವೀರ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬದ್ರು. ಎಸ್ಗಾರ್ಕ ವಿಭಾಗ ಅಸೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೀಪ್ ಫೈಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಟವಕ ಅದು ಸ್ಲೋವರ್ ಆಫ್ ಕಟರ್ ಮಾದಿರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿದು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು? HFC ಅರೆಗಳ ತಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತನ್ವೀರ್. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರ ನಾಸೀಮ್ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 37.
ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಎಸೆತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರರು. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಸಜ್ಜಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 37 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನು 4 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಾಜುದ್ದೀನಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎಸೆತ ನೋಡಿ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ತವಕ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ದಾಂಡಿಗ ಬದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 37, 37 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಲ್ಟಾ ದಿಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬೈ ಮುಖೇನ ಇತರ ಖಾತೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 38, 38 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭ. ಅವಲಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ತನ್ವೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಕೀಂ ಸೂರಜ್ ಎಸೆದಂತಹ ಥ್ರೋ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ವೀರ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 40. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ HFC ಅರೆಕಳ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 41 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 42ರ ಸವಾಲು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 42 ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವೇ ಸರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 42 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಶಾಲಿಯರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. SRFC ತಲಪಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚುಂಬಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
So thank you very much, Sujit, for your excellent commentary in our state language, sweet language Kannada. We are into the innings of KFC Kodical. There almost a similarity in the target. We are watched in the first match, the target which is set by the team Red Wings Kunjat Bail for the team Torpedos Kana, which is 43. Now HFC Rekala, they are set a target of 42 for team KFC Kodical, the host team. And they are playing their first match, and wait and see how well the host team KFC Kodical will going to get this total of 43. Not a huge total to chase down, and but cricket, everybody knows, is an unpredictable game. And HFC Rekala, definitely they will going to try for some comeback in this innings of KFC Kodical. They have to start well. They have to pick the wickets in regular intervals if they wanted to win this match, and because they are depending a small total, they have to put their 100% in the game if they wanted to win the match, because they are playing one of the top performer of the South Canara district, KFC Kodical, the host team. Opening batters came into bat, Izaz and Arif, the opening batters in the middle. Izaz, one of his favorite cricket ground, UCG cricket ground, when he started his career in this particular cricket ground, and definitely is the one absolutely become the star after that. He never looks back, and wait and see how we're going to start here for this team. One of the delightful batter to watch. When he bats in his natural rhythm, he can be a very effective, and especially in the power play overs. Izaz will going to face the first delivery from Dishti Asan from the BMR end, BMR group end. First ball down the leg side, quicker and faster one. Misjudgment by Izaz, just let the ball goes into the hands of wicketkeeper. Just beaten by the pace, I want to tell you, because of Izaz is not expecting that much of a pace in the ball. Sharp incoming delivery, and just wanted to get away from the line of the ball. Well within the reach of his bat, wicketkeeper behind the stump did the rest. This is what Izaz for you. How good in that particular shot, isn't it? He won the line of the delivery, which is outside the line of off stump, and how well he managed to time the ball. Even of course, if he sees sometime if you drags the ball from outside the line of off stump, it's not so easy to get that timing. But the way that he is connecting the ball is outstanding. Of course, he played such kind of cricketing stroke plenty of times in a career, and one of his favorite as well. When he played that stroke, he's played it very confidently. When he drags the ball from outside the line of off stump, you know exactly where the fielder is, and he sent it in the gap, and he got a couple of runs for that. 2 without loss of any wicket. Izaz sub the ball nicely, defeats the infield down to fine leg region. This time his outfield is very quick. Will it going to be a ball winning the race against the fielder? No, just inside the boundary line. Looks like the fielder managed to stop the boundary, and ample time for the batter to complete 3 valuable runs. It looks like it's a very fine. The fielder is just chased down inside the boundary line. 3 valuable runs which is scored. Then Skobana moves on to 5 on the board without loss of any wicket. Five on the board. Good start there from Izaz. Got a 5 runs in just 3 balls. And now Arif will going to take the strike. Right above the wicket. Top edge catches a call. Catch has been taken. Lovely catch. Excellent judgment there by the short fine leg fielder. Once it looks like the ball will going to go past that fielder at short fine leg. Had to jump a little bit to get that one, but good judgment in the end by that fielder in that fine leg. Arif departs. The wicket number first is back in the pavilion. This Yasan, have a look at that one. The Arif just wanted to sub the ball, but fails to keep it down. Excellent work done by the fielder at short fine leg. Just a little bit going back outside the 20-yard circle and completed the catch. So this Yasan strikes here for the team HFC Rekala. One more, the team which is coming from Ullala region, the most reputed team, HFC Rekala.
They got a long history, huge history. Some excellent players came from this HFC Arakala team. They produced some good players for the underarm cricket. This team. Right arm over the wicket balls. This time, straight to the answer fielder or not. Oh, just falling short of the fielder. Just falling short of the fielder. One side looks like the ball is definitely carried to the fielder, but a fantastic effort came from the fielder from the deep. Have a look at the replay. The man in good form, Nizam, hoisting it over, taken an aerial route. Oh my goodness, slight a bit of ball just falling short of the fielder. Tanveer, one of the great fielder in the deep, long off. The manager of Bedra Media. Tanveer down at long off. 6 for 1. Oh, my goodness. This is a huge no ball. This is absolutely huge no ball. Maybe this Hassan has got a little bit problem in his left leg. After he delivers the ball, looks like he's not comfortable 100% in that. After that delivery, maybe he's got some problem in his left leg. That's why the ball is went too far outside the line of the pitch. No ball called by umpire. 8 for 1. Not an easy condition, I want to tell you, because of plenty of cricket in a present cricket. There is no rest for the players everywhere. We are seeing some Premier Leagues, big tournaments, day and night cricket tournaments. And it's definitely going to be a challenge for the players to keep their fitness 100%, and especially when you're playing in this condition, very hot condition in the month of April. Almost it's going to be horrible, and testing time for the players to maintain their fitness level. Now these three to continue from the far end. Half-hearted shot for leg before wicket. Nizam just wanted to play across the line. Tried to swap that powerful sweep shot, but missed it completely. First over, which is completion of first over, chasing 42 to win this match. KFC Kodical are 8 for the loss of 1 wicket. 34 required from 42 balls. Yes, sir. Yes, Talapadi Agu Azad. Yes, sir. FC ಹಾಗೂ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಸರ್, FC ಹಾಗೂ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಫ್ JD Trophy 2025. ಟೀಮ್ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ, they are the runner-up in that JD Trophy. Torpedos Kana are a champion. One of the most prestigious tournament in the name of JD Trophy 2025, which is organized in the last week. Second over. Nizam to Nizam. The good competition between two Nizams. Lovely delivery, fantastically bowled. Of course, too early into that stroke from Nizam. Nizam, absolutely what innings he played in that Sri Ram Trophy 2025. The way that is batted in that tournament has been outstanding, by chasing a huge total against KCCR Kadri, represent for Gori Young Boys. This time, swept it very hard. Down to deep square leg region, fielder behind the ball, just inside the ball. Oh, absolutely acrobatic from that fielder in the mid-wicket region. Now that looks like the fielder is done a great job. Now umpire absolutely have to see that in the replay.
whether the fielder is managed to save the boundary or not, whether he's got a contact with the ball when he's outside the boundary line. That's what umpire have to see. Now it's a fine. He's went outside the boundary line. Now, oh, that might be a very, very close. That was absolutely the ball. It is the 1 foot which is outside the boundary line. Then he has got a contact with the ball or not. Umpire, it's a boundary. It's a boundary. He has a contact with the ball when he is 1 foot which is outside the boundary line. At the simultaneously has a contact with the ball. So, as for the rules and regulation is concerned, you need to have airborne in the sense they need to be in the air when you want it to touch the ball. You need not touch the ground. You need to be in the air. 13 for 1. But you need to appreciate that the fielder's effort there. Outside and off stump and misjudgment there from Nizam. Umpire Pushparaj and umpire Nazir Eden, to the very good umpires along with umpire Roland Pinto in our commentary box as the third umpire. This time lofted catch, it is a call, and catch is completed in the deep long off. So Nizam of course just he wanted to continue his form in this match as well. Just wanted to go for the big shot, but he couldn't manage to get the distance. He got the elevation, but not so easy to get the distance because the ball which is not hard in the nature. And he just faced the penalty for that. 13 for 2. KFC Kodical chasing 42 to win this match. 29 required from 37 balls. Ajit is a new batter in. Tomorrow will be the one more big day for cricket. Greenland Bedra in association with the Bedra Media. Underarm day and night cricket tournament in the name of Bedra Premier League 2025 Bedra Cup, which will going to commence for 2 days, tomorrow and day after tomorrow, at Swaraj Maidan Cricket Ground. One of the most historical cricket ground of huge cricket tournament of rupees cash prize rupees 1 lakh, and with the attractive Bedra Cup and 50,000 for the runner-up with the attractive trophy. This time loose stroke and pays the penalty for that. Ajit checking the stroke in the last moment and played it straight to the hands of fielder. Now HFC Harekala, they are back in the game by picking up wickets. I already mentioned if HFC Harekala wanted to back in the game, they have to pick the wickets. Now they picked up 3 valuable wickets of KFC Kodical. Great over there from Nizam. He picked up 2 wickets for 5. This is what HFC Harekala wanted to do here. Now it's a 13 for loss of 3 wickets after completion of over number 2. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ SRFC ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ತಮಗಿದು 2ನೇ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಾಲ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಕೆಲವು ಸಹಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So everyone excited for tomorrow's match. We're talking about Bedra Cup 2025 because they're first time in the history. And Bedra Media, in association with the Greenland, they are organizing the big tournament. They're so much excited how it's going to be a live telecast of Bedra Media, their own tournament, and how they will going to put their 100% in the game, and with a very good cause, isn't it?
Everybody knows they are providing the freezer and what you call mortuary freezer for government hospital Mudabidri. That was a fantastic, isn't it? The concept which is implemented by the Bedra Media to give something for the society. And here is change in bowling. And Munna brought into attack in that third over after the power play. And straight away, the batter Izaz played it a nice looking off drive towards deep extra cover for a single. With the addition of singles cover numbers on to 13 for 3. 14. Akeem, the captain of the side. This time outside the line of off stamp for too far, so that wide call by umpire Nazir with that extra score, but numbers on to 15 for the loss of 3 wicket in the over. Number third is in progress. Munna, experienced campaigner from the BMR group, and bows just a touch. How Akeem will going to build the innings in that fashion. And soft end which comes into play to pick the single. With the addition of that single score, but numbers on to 16 for 3. Now both the batters quickly realizing that, of course, after losing 3 quick wickets, have to get some partnership. But for the team Arekala, they have to get wickets. Again, played it nicely down to gully region by Izaz. Didn't quite able to get the timing proper in that off drive, but good enough for him to complete the single. And with that single score, but numbers on to 17 for 3. In the over, number 3 is in progress. The good day for the cricket lovers, Underarm cricket lovers. The top 10 teams is participating in this cricket tournament. Edging it out quite deliberately by Akeem down to third man region. He will going to pick the single with the addition of that single score, but numbers on to 18 for the loss of 3 wicket. So in this particular over, both the batters are not taking any risk in their occasion for the big shot. And they are just rotating the side. And good enough for team KFC Kodical to win this match. Again, nice looking drive there from Izaz. Everything is perfect in that stroke. You can see that nice high hand coordination here from Izaz. And played it right from the middle of the bat with the full face of the bat. 19 for 3. Top edge. Oh, chance of run out. Chance of run out. Akeem, the blind run is attempted and he's just faced the penalty for that. Not required. It's unnecessary. Just he wanted to work the ball on the onside region. And top edge went into the hands of the fielder at one bounce. Akeem thought it might be a chance of run there, but there's no chance at all for any run. Pays the penalty. And it's FC Arekala once again. They are managed to pick the wickets of KFC Kodical. Now the match looks like it's evenly poised. 19 for 4, 23 to get from 30 balls. Nothing much worried about the run rate record, but the partnership what we are talking about, KFC Kodical, are fails to get so far. And unfortunately, having Izaz in the other end, all that senior players fails to give stand from other end, support from other end. So 19 for 4 and over number 3 completed. Fourth over going to start from the Ascent End. Ascent End, one of the sponsor of this cricket tournament as well. The both end, BMR Group and Ascent End. And now the bowler brought into attack. Tanveer, the man who got a man of the series in the MSC trophy when the team becomes a champion. FCT Puttige, he is the one. Is contributed from the bowling and even from the bat. But down the leg side, well within the reach of the batter, Izaz misjudgment.
and rightly so, umpire says it's a right delivery. So 19 for 4 now. Tanveer bowling away from us with the short run off. Right arm over the wicket balls. This time definitely going to be a wide. And wide +1. The bonus run here for the team KFC Kodical. 2 runs in the form of wides added to total with that wide scoreboard numbers on to 21 for the loss of 4 wicket. Another 21 required. Half of the job completed. They have to complete another half of the job. Reverse sweep, nicely played it down to deep third man region by Akash. And with that single scoreboard moves on to 22 on the board. 20 more runs required for the victory. And they got 28 deliveries to spare. This Rams down the leg side, try to get that one in the fine leg region. Izaz couldn't manage to make a contact with the bat, beaten by the pace. And now umpire having some conversation. Pushparaj and umpire Nazir Eden. So 23 for the loss of 4 wicket, and now the bowler will go on to continue. Tanveer away from us. Right arm over the wicket, balls. Lovely shot. This is a users for you. Quality lofted extra cover drive. One of his favorite, and I'm really loves to see that show such a kind of cricketing stroke. So 24 for the loss of 4 wicket, and over number 4 is in progress. Slow progressing. Try to get that slower one. Just not directed, and I think he's in trouble. I think he's in trouble. Even the umpire goes upstairs, but after seeing the body language of the wicket keeper and the closing fielders, they're very confident they got the wicket, because direct is always going to be dangerous. Direct it is always going to be dangerous. If HFC will going to get this wicket, I will tell you, they got a golden opportunity to back in the game. Because the wicket of Visa is definitely going to be the turning point of this match. Now umpire Roland Pinto, and along with the technicians of Bedra Media, they are closely looking towards that run out opportunities. The direct hit, umpire have to see, of course, even the direct hit is hit the stumps. They have to see whether the bales which is dislodged in a time or not. That's what very important. Hitting the stump is not important, but after hitting the stump, when and how the bales will going to dislodge from the groove of the stump. So this is very important. Sometimes that will going to save the batter as well. Izaz absolutely very excited watching here in a commentary box. It might be the save or not. Definitely it's going to be very close one. Wait for that. Very close indeed. What happened, if you see that technique of dislodging the base means sometimes the ball which is very soft, then it takes a time for bales to dislodge. That might sometime benefits the batter. It's gone. See, it's gone. It's a very close, I will tell you. It is absolutely very testing time for the umpire as well, the technicians of Bedra Media. Sometimes you have to see that it's very close indeed. Absolutely, it's very close, I will tell you. And even I'm also watching here in that screen. It might be the one of the best decisions I want to tell you. You have to make some time. Need to look at very closely sometime. All up to that, cameraman's how the angle they're going to provide for the man in the mixing department. The umpire have to see in the different angles, 2 angles, and even in the front angles as well.
So this is again going to be a great comeback here by the team HFC. They're picking up 5 huge wickets of KFC Kodical. This is a low scoring encounter. The experienced batter Tazuddin. So number 7 batter came into bat, Tazuddin, the experienced batter, and certainly have to contribute his experience here for the team KFC Kodical to get the remaining runs, 18 runs, what they wanted. Sensible, absolutely sensible there from Tazuddin. Good bowling there from Tanveer. One more over which comes to an end after completion of over number 4. The equal battle is on between these two. The KFC Kodical still they're searching for the right tracker. 24 for 5, 25 for 5, critical correction, and another 4 overs remaining. They have to get another 17 runs in 24 balls, and before the next over is going to start here. Time for change in commentary box, and welcome Gopi. Just a 25 required, 17 required from 24 balls. Not a big ask, but the problem here for the KFC Kodical is that they lost 5 wickets. And this is what HFC Harekala, they need to see that if they manage to pick another quick wicket, another 2 quick wickets, definitely this match is going to be a low scoring encounter. It's going to be anybody's game. But anyhow, Gopi, you need to appreciate the effort of HFC Harekala. Even though they're defending a small total, they're giving their 100% in this game. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, हालांकि 41 रन ज़रूर उनके बल्लेबाज ने बनाए, लेकिन उनके गेंदबाज इस वक्त उस स्कोर का समर्थन करते हुए इस वक्त गेंदबाजी करते हुए एक बेहतर लेग और लाइन के साथ, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और KFC कोडिकल को चाहिए 17 रन बचे हुए 4 ओवर, जबकि HFC हरेकला को चाहिए 5 विकेट। और इस बीच गेंदबाज पहली गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया। इस वक्त स्टम्प्स शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद जब तक पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर, 26 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और BMR एंड की ओर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 26 रनों पर। निश्चित रूप से यहाँ पर डॉट गेंदे और विकेटों की सख्त दरकार है HFC हरेकला के गेंदबाजों को कमबैक करने के लिए, और गेंदबाज ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाया और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया। तो गेंदबाज इस वक्त निज़ाम गेंदबाजी करते हुए, और बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार आकाश, और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त नहीं, बेहतर फैंटास्टिक फील्डिंग ऑन इस बॉल थ्रू मेड बाय द बॉलर। The scoreboard stays at 26 for the loss of 5 wicket, 20 balls remaining, 60 runs to get। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज निज़ाम इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि सामना करते हुए इस वक्त आकाश। ये गेंद अच्छी गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, एंड दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ फैंटास्टिक ओवर इन HFC's पॉइंट ऑफ व्यू। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त निज़ाम, और जहाँ तक का सवाल है निज़ाम की गेंदबाजी का, तो अब तक सिर्फ 6 रन वो प्रदान कर चुके, 2 विकेट प्राप्त करने में सफल अपने 1.5 ओवर में। और इस बीच अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार दोनों बल्लेबाज ताजुद्दीन और आकाश कुछ हद तक बातचीत इस वक्त करते हुए, और वापिस अपने स्थान पर लौटते हुए। कुल मिलाकर 19 गेंदें अभी बाकी, 16 रन चाहिए, 16 रन टू गेट फ्रॉम 19 डिलीवरीज। और गेंदबाज निज़ाम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर डिफ्लेक्ट कर दिया इस वक्त, लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर, 18 balls remaining, 15 runs to get। The required run rate is now gone up to 5 runs per over। और प्रेजेंट रन रेट जो है 5.4 रन प्रति ओवर। और जहाँ तक सवाल है 18 गेंदों में माफ़ कीजिए 18 गेंदों में 15 रन की ज़रूरत। ಅಲ್ಲೇ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಹಾಗೂ
SRFC ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆಜಾದ್ ಕಾಡಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಜಾದ್ ಕಾಡಿಪಳ್ಳ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ SRFC ತಲಪಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ to make a sign in the for the toss procedure in fact. तो काफ़ी लंबी बातचीत इस वक्त करने के बाद इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया है. गेंदबाज जो कि कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से यानी एसेंट एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नवाज और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार आकाश इस वक्त सामना करते हुए. रनों की ज़रूरत इस वक्त KFC कोडिकल को, जबकि डॉट गेंदे और विकेटों की सख्त दरकार यहाँ पर HFC हरे कला के गेंदबाजों को. और नवाज अपने कोटे की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद 15 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज. और इस बीच नवाज अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, बैक टू द बॉलर की दिशा में रन. दिस इज एन इस बार सोच गलत थी लेकिन नतीजा सही निकला यहाँ पर. और जहाँ तक सवाल है नॉन स्ट्राइकर पर मौका, आसान सा मौका था गेंदबाज के लिए, लेकिन उन्होंने थ्रो किया स्ट्राइकर पर, लेकिन स्ट्राइकर पर भी यहाँ पर बल्लेबाज बच नहीं पाए. तो ताजुद्दीन की पारी समाप्त हो चुकी है. और कुल मिलाकर अब 17 गेंदों में 15 रन हो चाहिए विजय के लिए. और मैच लगभग बराबरी पर रुक चुका है. 27 for 6 now 15 runs to get from 17 deliveries. Still it could be anybody's game at this situation. निश्चित रूप से एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त जारी रखता है HFC हरे कला के गेंदबाज. और अब जहाँ तक नए बल्लेबाज का सवाल है, नाजीम नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. और इस वक्त तो सामना करेंगे गेंदबाज निज़ाम की गेंदों, माफ़ कीजिए नवाज की गेंदों का. और नवाज नाजीम के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट. तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल. और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर. 28 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज अपनी ओर के इस बार गेंद को खेल दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट. आकाश ने कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद जाती हुई डीप कवर पॉइंट पर. और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है डीप कवर पॉइंट पर, बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का. फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, ऑफ साइड पर गेंद को इस वक्त खेल दिया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ. और 3 रन बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त करने में सफल. 3 बहुमूल्य रन इस वक्त KFC कोडिकल के खाते में जुड़ता हुआ. और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 31 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर. 31 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स. और फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद हल्के से गेंद को ड्राइव कर दिया, बैक टू द बॉलर की दिशा में. रन्स नहीं मिलेंगे और स्कोर रुक चुका है 31 रनों पर. 11 रन और चाहिए विजय के लिए. 14 गेंदें बाकी. 11 टू गेट फ्रॉम 14 डिलीवरी. स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर. और नवाज नजीम के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद स्टीयर किया बैकफुट पर जाने के बाद, लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली. इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. He's got a bat on that, and with that single run the scoreboard moving up to 32 for the loss of 6 wicket. 10 to get now from remaining 13 deliveries. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज नवाज इस वक्त तैयार. यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, जोरदार अपील, लेकिन गेंद कुछ हद तक लक्ष्य से बाहर की ओर निकलती हुई. रन का इजाफा, लेग बाय का इशारा. सो विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 33 ऑन द बोर्ड for losing 6 wickets. 6 overs completed, 9 runs to get from 12 deliveries. That means in 2 overs.
तो नौशाद इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए और आकाश सपना करने के लिए तैयार और 7वां ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ पहली गेंद लेकर नौशाद ये गेंद इस बार आकाश ने गेंद को ड्राइव कर दिया। मिड विकेट फील्डर की बाईं ओर से गेंद निकली डीप मिड विकेट पर, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ 2 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 35 रनों पर, 35 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, 7 टू गेट नाउ फ्रॉम रिमेनिंग 11 बॉल्स। और आकाश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नौशाद गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए इस वक्त HFC हरे कला के कप्तान और इस बीच गेंदबाज नौशाद ये गेंद ड्राइव कर दिया। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट एक्स्ट्रा कवर पर आकाश ने फिर से दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन इस बार नहीं मिलेगा। थ्रो पहुंच चुका है विकेट कीपर के हाथों में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 36 रनों पर, 36 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस, 10 बॉल्स लेफ्ट एंड 6 रन रिक्वायर्ड। इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर, तेजी के साथ 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 37 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 5 runs to get from 9 deliveries. आकाश का स्ट्रोक मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े मिसफील्ड और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। और अंतिम क्षण में गेंद शॉर्ट मिड विकेट फील्डर के हाथों से छूट चुकी थी और इस छूट का फायदा उठाकर बल्लेबाज 1 रन प्राप्त करने में सफल। 38 नाउ और ऑफ स्टंप से बाहर बल्ला अड़ाया। इस वक्त छोड़ते तो शायद वाइड हो सकता था लेकिन अंतिम क्षण में गेंद पर बल्ला अड़ाया और यहाँ पर रन्स इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। सात गेंद बाकी, 4 रन चाहिए, 4 runs to get from remaining 7 deliveries। लगभग सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई गई है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। Full toss, खेल दिया, square of the wicket into the gap as well. He's got a single. In fact, they're looking for the second. Come back for the second, and they completed a second run very safely. अंतिम क्षण में थ्रो को गैदर करने में सफल विकेट कीपर, हालांकि काफ़ी ऊंचा थ्रो था लेकिन थ्रो को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाया। 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 40 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। नाउ लास्ट ओवर रिमेनिंग, जस्ट 2 runs to get for victory। दो रन चाहिए अंतिम ओवर में, 6 balls left, 2 runs required। और सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई गई है और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दृष्टि हसन और आकाश सामना करते हुए। Lofted and this time I think he finished the match in a style with the boundary। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त आकाश का और इसी के साथ KFC Kodical are won the match by 4 wickets with just 5 balls to spare and with that 4 wickets victory। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था इनफील्ड क्लियर करते हुए आकाश ने और इस 4 विकेट के विजय के साथ KFC Kodical इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। So the match number 2 of this prestigious cricket tournament, KFC Champions Trophy 2025, which is proudly presented by Kodical Friends Circle registered, has been came to an end, and KFC, the host team, registered a 4 wickets victory in the last over with just 5 balls to spare against HFC Harekala, and with that victory, KFC Kodical are through to the next round of this competition. Next match, SRFC Talapadi will take over Azad Kadipala, and Azad Kadipala are won the toss and what the decision they will take, just we have to wait and see. And the match number 3 of this prestigious cricket tournament is now going to start with Rija Shotpal। और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर मैच नंबर 3 शुरू होगा इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत KFC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಟೆಕ್ವಿಂಗ್ಸ್ KSA ಸರ್ಫರಾಜ್ ಟೆಕ್ವಿಂಗ್ಸ್ KSA ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಟೆಕ್ವಿಂಗ್ಸ್ KSA ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅನಿಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಟೆಕ್ವಿಂಗ್ಸ್ KSA ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾವುಗಳು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಪವನ್ ಇವರು ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅನಿಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಟೆಕ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾದಂಥ ಅಕೀಮ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಟರ್ಪೆಡೋಸ್ ಕಾನಾ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂಥ ನಿಜಾಮ್ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಲೂಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ HFC ಅರೆಕಲಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅನಿಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಇವರಿಗೆ ಪವನ್ ಇವರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಕೀಮ್ ಇವರು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಟೆಕ್ವಿಂಗ್ಸ್ KSA ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅನಿಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಇವರ ಪವನ್ ಇವರ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು
ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಯೋಜಕರಾದಂಥ ಪವನ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. HFC ಅರೆಕಲಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು HFC ಅರೆಕಲಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಇವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅನಿಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. 1 ಲೀಟರ್ 2 ಲೀಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದಂಥ 10FC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವರಿಂದ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಪನನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ನಿಜಾಮ್ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ನಿಜಾಮ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ನಿಜಾಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. He is receiving the man of the match award of 2 liters of soft drinks and discount coupon of 50% from 10F3 Sports. So now is the time for the match number 3 between SRFC Talapadi versus team Azad Kadipala, and two very good teams from their localities. One which is coming from Krishnapura localities, Azad Kadipala. They are the runner-up in that prestigious JD Trophy 2025, and at the same time SRFC, they are one more reputed team from Ullala district. This time up and over, nicely played it down to Cow Point region. 2 fielders behind the ball. Ball will not going to travel to the fence, and before one of the fielder will going to get that one just inside the boundary line. Ample time for the batter to complete valuable 3 runs. So good start there from Asif. The first ball itself is intention is very clear from Asif that he wanted to take the advantage of the fielding restriction, and he just played it right over the top of the infield to get that one, get that 3 valuable runs from towards the deep Cow Point region. Salman, one more very talented young bowler for the side of team Azad Kadipala, is a good starter in the beginning, especially in the power play specialist bowler, bowling second time in this over. Right arm over the wicket, balls to Tavik. Tavik drives that one, nice looking stroke down to Cow Point region, but there is a fielder in the deep, slight bit of fumble, taking the advantage of that fumble, and they completed the valuable couple of runs. With that valuable couple of runs, scored Namuzan to 5 on the board. The wicket keeper straight away forcing the umpire to call that one shot, but umpire Pushparaj rightly said, I am here, I am watching everything, so if I am got a doubt, I will going to call for the third umpire. It's my duty, so nothing much worried about that. 5 without loss of any wicket. Over number 3 is in progress. Salman bowling away from us. Divik is a good striker of the ball with just number 333. Absolutely universal boss. Down the leg side going to be a delivery which is umpire called it takes his own time, and saying it maybe the bowler just came right in front of umpire Roland Pinto, and umpire Roland Pinto asking the non-striker batter
is that wide or not? And umpire, then the batter Asif said, yes, sir, it is a wide. So this is a wide, absolutely, no doubt at all. And scoreboard numbers on to 6 on the board without loss of any wicket, Salman. Davik wanted to drive the ball, doesn't get hold of that stroke properly, but good enough for him to get that single down to wideish mid-off with the addition of that single. Scoreboard moves on to 7 on the board. This is going to be a good contest between two very good teams. And both the teams absolutely got some fantastic performer in that team. And fantastic view of the players. You can see that very young Asif is facing his delivery from Salman. Oh, nice looking drive. Sweet sound coming from the blade of the batter, but not more than a single. And Salman is keeping that fielder after that first ball. After seeing the potential of the batter is strong on the offside region, he's kept the fielder in the deep in the cover point region. So that 2-3 stroke faces came in that same region. And the good field set by the fielder. 8 without loss of any wicket. 5th time in this over. Oh, catch, it is over, a catch. What a catch. Magnificently taken there by the fielder. Liaquat is beauty. Liaquat, absolutely your beauty. And have a look at the Roland Pinto, sir. He is also acknowledging that catch of the fielder. What a catch that one. Absolutely, it's a stunner. Of course, umpire Roland Pinto not regularly going to the fielder. If you think that it is, of course, this is one of the best catch, then he will go into a walk here. But my career, 2-3 times I remember, he came to me when I'm fielding at cover region and taking some catches is also appreciated. It's always going to be a big honor for any fielder, isn't it? The appreciation which is not coming regularly from the umpires. And this is only when you are taking some blinder. Absolutely it's a blinder. A 8 for 1. What a man. Liaquat. Fantastic performer from the bat. And he won the better fielder. Just I want to see that in a replay. Have a look at that one. Oh, he's off balance. And the left hand, of course, he taken the catch in a single-handed screamer. And all body that which is absolutely what his couldn't manage to. Have a look at that one in a replay again. Just getting his left hand. And then when he looks like the ball will go into landed, if not grounded, then he just make this body balance perfectly. Again, swept shot, played it down to square leg region for a single. With that single, scored moves on to 9 for 1. Without loss of, 9 for the loss of 1 wicket. Eventful over. Both the teams has got a start. Azad Kadipala, they got 1 wicket. And at the same time, team SRFC Talapadi, they got 9 runs in that first over. What we are talking about, the present day, absolutely is a competitive day, isn't it? The competition not only in the form of the cricket teams, but at the same time you can see that the live telecast is also some competition, healthy competition is going on. That will going to be a really healthy competition. Why I am telling that? If you are having a proper competition in every field, you will going to get some the good qualities in your whatever professional you are doing. I'm just talking about the live telecast. I'm just talking about that this kind of competition will going to give such kind of excitement for the viewers, those who are watching live telecast of the cricket tournament. The way that Bedra Media using that cinematic camera, and this is what the view of the close view of the players. This makes some excitement, and those who are the parents, those who are watching live telecast, definitely watching their children performing in the field. In a close view, definitely they love to watch. So 9 on the board for the loss of 1 wicket. In the over number, second is going to start from the far end, from the BMR group end. Zabir brought into attack, pass umpire Pushparaj. This time I tried to guide the ball down to third man region. Of course, he succeeded. And with that single scope, moves on to 10 on the board for the loss of 1 wicket. Zabir, one more good bowler for the side of team Azad Kadipala. These all boys did a great job in the JD Trophy 2025 when they become the runner-up. What an outstanding performance from these all the players of Azad Kadipala. They came in such a positive frame of mind in that tournament.
This time wicketkeeper fails to gather the ball neatly behind the stump and grabbing the opportunity. Both the batters completed single. He's got a bat onto that last moment inside edge of the bat. And one more run is added to total. 11 for 1 in the over number second is in progress. A bright and sunny afternoon. And even I think the temperature is almost recorded to 37 to 38 degrees Celsius. This time wanted to go for the reverse sweep and they will manage to complete the single as well. With the addition of their single, scope moves on to 12 for the loss of 1 wicket. Of course, because of the rain in the night, yesterday night, make the condition today is a lot hotter. Because not a heavy rain, continuously if the rain will going to take place, then it will make the condition so cool. But if a little bit rain means next day, it's going to be a horrible condition for the players outside the run-up. From lovely delivery there from Zabir, again keeping that line which is just around outside the line of off stump. Try to bring the ball from outside the line of off stump. The fantastic line for the right-hand batter when you're bowling off cutters. There's a wrong one, different one in that occasion. No turn in that delivery. The straighter one and faster one there from Zabir. The batter thought it might be at the incoming delivery, played with the wrong line. The wicketkeeper behind the stump in a fraction is uprooted the stumps, but no damage done. So far it's a great piece of bowling there from Zabir in the power play, the last over of the power play, and only 3 runs conceded in 5 balls. So what we're talking about, the good day for the cricket lovers, because it's almost the end of the season 24-25, and UCG cricket ground means always is going to be a great moment for the cricket lovers to come and watch. Swept the ball nicely down to short fine leg region for a quick single. With that single, one more over completed after completion of over number 2. Team SRFC Talapadi are 13 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 6.5 runs per hour. Gori Young Boys ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ Urwa ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ Urwa ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಾಪ್ ಸೀಡೆಡ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ Urwa ವರ್ಸಸ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. Yes, we are talking about some big tournament will go into commence, even though the tournament will go into progress till the middle of month of May. But after that, it's very difficult, and difficult in the sense have to take a risk. The organizer have to take the risk. Don't know where and when the rain will go into take place can interrupt the tournaments. But so far, I think it's an outstanding season 24-25, and everywhere we are witnessing some busy schedules, and now the bowler will going to start the proceedings here. Zunaid, the bowler, brought into attack. Over number 3rd on behalf of team Azad Kadipala. 6.5 run rate for the team. Away from us. Zunaid bowls to Asif. Oh, it's ball. Oh my goodness, what really happened there? Ball is just passed between the stump. I think just I want to see in a replay what really happened. Yes, it is exactly what I told. The ball is just passing between the stumps, or whether the ball is hit the stump but bails which is not dislodged. So I want to see it in a close look there. The ball is just passed between the stumps. This is what happening sometime. I already mentioned, if the ball is a little bit soft in the nature, and because of the fluctuation what the ball has got, it can pass between the stumps. My goodness, what luck he has got, young man, Asif. 13 for 1 in the over number 3 is in progress. Sometime if you have enough luck, then no one can stop you. Again down the leg side, but he's got a bat onto that the last moment. One more addition to total, and umpire Roland Pinto asking Asif to not run in the
the middle of the pitch. Given the warning here for Asif. Need to be very careful. 14 for 1 in the over number 3 is in progress. Looks like Asif is a very young man. He's wearing jersey number 18. Talking about a young man yesterday in IPL. Vaibhav Suryavamsi. What a sensational innings he played yesterday. One of the fastest by Indians in the IPL, the century in 35 balls. After Chris Gale is one of the fastest century getter, but he is a foreigner. This time just wanted to get that one into the third man region, and leg by call by umpire. One more addition. Very addition of that single score was a 15 for the loss of 1 wicket. 14-year-old Vaibhav Suryavamsi. No one thought that this young man will go into dominate at the senior bowlers of Gujarat Titans. He is sold for 1 crore, I think so, in the IPL. Played it nicely this time. Asif down to cover point region. They wanted to come back for the second, but no chance of second there. It is all up to that when you're having a coach like Rahul Dravid. He is the man, the kingmaker. Why the Indians having that much of young talents? That's a delicately played, guiding it down the third man region for easy single. So warm welcome for Ravi Shanai of young friend Urwa. Of course, he has got an invitation because in coming days, what we're talking about the tournaments, one more big tournament will go into commence in the name of Young Friends Trophy 2025. Top edge, chance here for Liaquat again. This time, he's not good enough. Of course, his stride is level by second. He's taking his left hand to get that catch, but this time ball is just missing his hands. Just missing his hands, and over number. Have a look at it in replay. Have a look at it in replay. Just the ball has got at fingertips and just falling short, for going away from the fielder. One more complete, 3 gone. It's 18 for the loss of 1 wicket. So after this tournament, we are going to witness one more big tournament in most beautiful SVS cricket ground in Bantwal in the name of SVS Trophy 2025, and which is proudly presented by SVS Friends Bantwal under the great leadership of one more great cricketer Manohar Bantwal. And 8 teams, top seeded teams, will going to have a contest in that SVS Trophy 8 hours game that will go into commence on the coming 3rd of this month, and that is on the Saturday at School Ground Bantwal, SVS School Ground Bantwal. Don't miss this date, 3rd, that is a Saturday. One more big tournament will go into commence, and the cash prize is 50,000 and a runner of 25,000 with some attractive trophies with the individual trophies as well. This time appeal for leg before wicket, umpire unmoved, rightly so. It's born from the bat. Pushparaj, one more the quality umpire as well as the cricket coach, and was runs cricket academy of Jigul Sports Cricket Academy, training the boys, youngsters. Fantastic contribution from him as well for the cricket. He's been felicitated the last Sunday at Konchadi Ramashrama Cricket Ground in that Sri Ram Trophy, which is proudly organized by Umesh Dandakeri. Outside the front, just taps the ball down to that point region, picked up a single, and with that single scope moves on to 20 for the loss of 1 wicket. So yes, in that tournament, Sri Ram Trophy, and along with Pushparaj, Mohan Ayadi, one more the very experienced umpire, he is also felicitated in that same stage for their contribution for the cricket as a former cricketer, and even the contribution for the underarm cricket as umpires. So this is going to be a great
gesture from the organizers. So this is very important, isn't it? Recognition is very important. That will going to give some kind of um, encouragement for the umpires to do something good for the team, good for the cricket. Outside the line of off stump, one more single added total. The white taps the ball. Both the batters are dealing with the single. They're seeing that the bowlers of Azad Kadipala, they're not giving any chance for the batters to go for any kind of big shot. And why not deal with the singles? 22 for the loss of 1 wicket. And even I think we cannot underestimate singles as well in cricket. If you see the nature of the ball, it's not so easy to hit the big boundaries and six. You have to deal with the singles. Again, nicely taps the ball down to short extra cover region for a single. 23 for the loss of 1 wicket. Azad Kadipala, what we are talking about, their success in that JD Trophy. The bowlers, I think, they are responsible. There has got a fantastic bowling department in that tournament. They are absolutely giving contribution for the victory. One more switch which is comes into play played by Sunil. So Sunil and Asif slowly and steadily they're building the partnership here. 1 more over completed, 4 gone after completion of 4 overs. And the team SRFC Talapadi are 24 for 1. They're going exactly 6 runs per over. Meanwhile, change in voice as well as change in language. It's a time for one more very, very popular guy, and everybody knows is the little master, Mr. Sujit, will going to take over the microphone in our state language, Kannada. It's over to Sujit. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಚಾಲಿಯನ್ ರವರೇ. ದಿನದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. SRFC ತಲಪಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ. ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡವು 4ನೇ ಚೆಂಪಿಯನ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. SRFC ತಲಪಾಡಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಓವರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದರೆ 4 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಜುನೈದ ಈ ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟಾದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿಗ, ಎಡಗೈ ದಂಡಿಗ ಸನಿಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಸನಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ SRFC ತಲಪಾಡಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 26. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 4ನೇ ಚೆಂಪಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಟೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. Both the team captains and the player please signature of the official chart as soon as possible at the running shot of time. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ನನ್ನು ಕಾಣ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಆಸೀಫ್ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಓಟಗಳು ಒಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೋಲಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರಿಂದ.
ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಸೆತ. ಈ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದೇ? ಸನಿ ಇಲ್ಲ. ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ SRFC ಕಡೆಯಿಂದ ತಲವಾಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟೆಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಆದರೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಂಪ್ ಔಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಎಸೆತಗಾರ ಎಸೆದಂತಹ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತ. ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಜುನೈದ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸೆದಂಥ ಎಸೆತ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂದರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 27 ಓಟಗಳು, 1 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ತಂಡವು 8 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಳೆಯಕಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನವಿದೆ. ಈ 8 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 48 ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವೇ ಸರಿ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. HFC ಹರೇಕಳ 43 ಸವಾಲಿತ್ತು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಬೌಂಡರಿ 2 ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡವು ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣತ್ವವನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಓಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓಟವೇ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ರಿಸ್ಕಿ ರನ್. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 29, 1 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆತಗಾರ ಜುನೈದ್. ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಹೊಲ ಹಂಚಿಕೆ ತಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು. 1 ಓಟ ಸುಲಭ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತೆ 5 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 36ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಧಾರಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಧಾರಣೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ 48ರ ಗಡಿದಾಟುವುದಂತೂ ನಿಶ್ಚಿತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಓವರ್ ಅಂದರೆ 18 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 30. ಇನ್ನೂ ರನ್ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲೇಬೇಕು. SRFC ತಂಡ ತಲಪಾಡಿ 50ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ 50ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ SRFC ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಜಾಬೀರ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಪರಿಸರದ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರ BMRN ತುದಿಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ದಂಡಿನ ಸ್ಪರ್ಶದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಳ ಹಂಚಿಕೆ ತಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಂಡಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿತ್ತು. 1 ಓಟ ಸುಲಭ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 31, 31 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟು 31 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚಾ ಇದ್ದಾನೆ. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರರು ತಮ್ಮ ಎಸೆತಗಾರರಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂಥ ಸಲ್ಮಾನ್
9 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅದ ನಂತರ ಜಾಬೀರು ಎಸೆದಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಓಟ. ಈ ಬಾರಿ ಅವಳಿ ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸನಿಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಓಟ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 34. 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. KFC ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂಥ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಉಲ್ಟದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗ. 1 ಓಟ ಸುಲಭ. ಅವಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೊಂದು ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಓಟದ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ 3ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 36. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ದಾನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಬೀರ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಎಸೆದಂಥ ಆ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6 ಓಟ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಜಾಬೀರ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 37. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಜಾಬೀರ್. ತಾನು ಎಸೆದಂತಹ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಓಟ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಓಟ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಓಟವನ್ನು 2 ಓವರ್ಗಳೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿತಾ ಇದೆ 2 ಓವರ್, ಅಂದರೆ 12 ಎಸೆತಗಳು. ದಂಡಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸನಿಲ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಆಸೀಫ್. ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಆಜಾದ್ ಖಡಿಪಾಲ ಕಂಡಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರ, ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮನ. ಆಶೂರವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು ಆಶು. 6ರ ಮುಂದೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶು ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ, ಆಸೆಟ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಚನೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ತೋಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಒಳ ತಿರುವು ಕಂಡಂಥ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 38 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 38. 10 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 10 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 15 ಓಟ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 50ರ ಗಡಿಯಾಡುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ SRFC ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ. ಆದರೆ
ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಂಚಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಶು ಕಾಗೆದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭ ಅವಳಿ ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಸಿಕ್ತು. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಜೀರ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್, ಮೂರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ನಜೀರ್ ಇಡನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಲೆನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಮೂರು ತೀರ್ಪುಗಾರಕ ವಿಭಾಗದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ರತೀಶ್ ರಾಜ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ನೋಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಟ್ ಔಟ್. ಅವಳಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಶನಿಲ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಸಿಫ್ನ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಅವಳಿ ಓಟ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು 40ರ ಗಡಿ ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ 40 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 40. ಇನ್ನು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಜ್ಜೆಗುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 41 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗರ ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್. ಶನಿಲ್ ಈ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರ ಬದಲಾವಣೆ. ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನಿಲ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗನ ಕೂಡ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. SRFC ಕಡೆಯಿಂದ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ನವದಾಂಡಿಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 41. 2 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್, ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆಸಿಫ್. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆಸಿಫ್ ತಂಡವನ್ನು 50ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 41ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡ. 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 7 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಫ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯೋರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ಎಸೆದಂತಹ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನ ಹೊರಗಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಗಡಿ ದಾಟಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 47. 47 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 7. 7 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 47 ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 45 ಎಸೆತಗಾರ BMRN ಕಡೆಯಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. 9 ಓಟವನ್ನು, ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ. ಆ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಅಂದರೆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು, ಆದರೆ ಇವಾಗ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ರೈಟ್ ಹಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ BMRN ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ.
ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನವದಾಂಡಿಗ ಕಾರ್ತಿಕ್. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಹೆಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚಳ 48. ಇಂಥ ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೂಢರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯ. ಬಲವಾದ ಮನವು ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತದೆಯೋ ನೋಡಬೇಕು. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಫಾರ್ ದ ರನ್ ಔಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಲನ್ ಬಿಡ್ಡು ಸರ್ ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಯದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೂಲಕ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಅವರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ನ ಮೊರೆ ಓದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಜೀರ್ ಅವರು ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ನೇರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ. ತೃತೀಯ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. SRFC ತಲಪಾಡಿ ತನ್ನ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ SRFC ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತರನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಮಹೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ SRFC ತಂಡವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಸೆದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕ 1 ಓಟವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಶಕಾನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಥ್ರೋ ಎಸೆತಗಾರನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಫಾರ್ ದ ಮಹೇಶ್, ಗಿವನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ತಿಕ್. ದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 49. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಮಾನ್ 1 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 50-50. 50ರ ಗಡಿ ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 50 ಇನ್ನು ಉಳಿತಾ ಇದೆ 3 ಎಸೆತಗಳು. 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟ ಬರಬಹುದು? ಮಹೇಶ್ ಉಲ್ಟದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ, ದಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಮುಖೇನ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಟೈಮ್ ಔಟ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆ ನೋಡಿ. ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು 30 ಒಳಗಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು. 4 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಗರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೆಣ್ಣು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 1+1 ಅದು 2 ಓಟಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 53, 53 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಎಸೆತಗಾರ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಆ ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ದೊಡ್ಡೊಡದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಕಿ ತೆಗೆದಂಥ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮಹೇಶ್ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಳಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 55, 56ರ ಸವಾಲು. ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟು 55, 56 ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ 56ರ ಸವಾಲನ್ನು
ಯಾವ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಬಲ್ಲ ತಂಡವು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚುಂಬಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ತಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಾಳ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. धन्यवाद सुजीत. तो इस तरह से 56 रनों का लक्ष्य. द टारगेट इज 56 in 8 overs. They have to score for victory for Azad Kadipala set by SRFC Talapadi and their innings now going to start. और आरंभिक बल्लेबाज के रूप में लियाकत और रफा इस वक्त क्रीज पर मौजूद, जबकि गेंदबाज दैविक का इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और पहली गेंद लेकर तैयार उनकी पारी का.
ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ as well as young friends Urwa, please to report to the stage immediately to make a sign in the official chart. So 56 the target in 48 stipulated deliveries and the innings now going to start. The first ball of their innings is now coming up. पहले गेंद लेकर गेंदबाज दैविक के इस वक्त तैयार. अराफत जो कि सामना करते हुए और पहली गेंद इस वक्त दैविक के दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा. बैक टू द बॉलर की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े. खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम क्षण में अंपायर ने इशारा किया तीसरे अंपायर की ओर. नाउ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर. और देखना यह है कि जब तक विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंचे और विकेट कीपर विकेट उखाड़े, बल्लेबाज क्रीज पर वापस लौट चुके थे या नहीं. गेंद सीधे गई थी बैक टू द बॉलर की दिशा में. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त विकेट उखाड़े जा रहे हैं और देखना यह है कि तब तक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं. तो तीसरे अंपायर इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. So this is going to be so tight. And now तीसरे अंपायर बहुत ही कुलंकुश होकर इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए और काफी नजदीकी मामला कहा जा सकता है यहाँ पर. No, no, it's the call and the batsman survived. और पहली गेंद पर इस वक्त बच चुके अराफा गेंद को बिना देखे इस वक्त रन लेने के दौड़ पड़े थे और आखिरकार बाल इस गेंद पर बचते हुए रन आउट के मामले में. और इस बीच गेंदबाज दैविक अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार और अराफा इस वक्त एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार. पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और दैविक अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ के बल्लेबाज अराफा सामना करते हुए इस वक्त दैविक की गेंदों का. ये गेंद स्वीप करना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, लेकिन एक रन उन्हें ज़रूर मिला और एक रन के साथ स्कोर रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. एक रन 90 लाख से नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है. और लियाकत अपनी ओवर की अपनी पहली गेंद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और दैविक का गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दैविक का दाहिने हाथ के बल्लेबाज अराफा के लिए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया. गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर. एक रन का इजाफा और एक रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर. तो 2 गेंदें दैविक इस वक्त फेंक चुके हैं, 2 रन प्रदान कर चुके हैं और अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ माइटी वन, दिस टाइम नॉट सक्सीडेड और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 2 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनके पारी का इस वक्त प्रगति पर.
और दाहिने हाथों पर द विकेट दैविक। अगले गेंद ड्राइव किया इस वक्त तक, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए लेकिन एक रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाया और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान का, 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। एंड इस बीच दैविक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट स्कोर लेग पर जब तक फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ लेग बाई का इशारा, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर। सफल ओवर की समाप्ति दैविक की। तो पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद 56 रनों के स्पर्धात्मक लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 रन जोड़ चुका है इस वक्त बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त आजाद काटीपल्ला तो 52 रन चाहिए विजय के लिए 42 गेंदों पर। 52 रन मोर, नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री आउट ऑफ देयर रिमेनिंग 42 डिलीवरीज। और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, तो देखिए यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जो सूत्रधार यहाँ पर हमारे केएफसी कोडिकल के पवन, उनके साथ नौशद इस वक्त मौजूद और उनके टीम के हकीम और नज़ीर ईडन जो कि अंपायर और कुछ खिलाड़ी इस वक्त नजर आते हुए इस वक्त मैच का मुआयना यहाँ पर करते हुए। सेकंड नंबर का फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यहाँ पर हमारा कमेंटेटर बॉक्स में छाया हुआ है। इस वक्त गोरी यंग बॉयज़ के अंसार का भी आगमन यहाँ पर हो चुका है और एक ऐसा कहना पड़ेगा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, दोस्ती भरा माहौल यहाँ पर कमेंटेटर बॉक्स पर छा चुका है। और देखिए यहाँ पर खुद मुझको दिखाया जा रहा है, मेरे साथ सुजीत है इस वक्त स्कोरिंग पर और ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। जनाब इरफान इनके साथ में अब द मैन बिहाइंड द स्क्रीन एंड द बिगेस्ट फॉलोअर ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट नंदन कुलशेखर इस वक्त स्कोरबोर्ड पर स्कोरबोर्ड ऑपरेटिंग करते हुए निश्चित रूप से उनके हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर दिखाई देती है इस वक्त और ऐसा कहना पड़ेगा निश्चित रूप से एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर इस कमेंटेटर बॉक्स पर इस वक्त छा चुका है। और इस बीच गेंदबाज महेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, फर्स्ट बॉल ऑफ इस फ्रेश ओवर इज नॉट कमिंग अप, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लियाकत के लिए यह गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट चांस एंड टेकन एक्स्ट्रा कवर बाय द फील्डर। तो इस वक्त उछालना चाहता है ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, लिटिल बिट ऑफ द विड्थ फॉर द बॉलर for the batsman in fact and he just played that one but can't find the gap and comfortably held just outside the 20-yard circle extra cover। देखिए रिप्ले में किस तरीके से गेंद को उछाला था, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लब का एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर ने पहला विकेट गिर चुका है। आजाद काटीपल्ला are now looking in trouble, it's 4 for the loss of 1 wicket at the start of the second over in fact। तो इंतजार है इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज का, we are just waiting for the number 3 batsman। मैच नंबर 3 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ केएफसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है कोडिकल फ्रेंड सर्कल रजिस्टर्ड ने अपने 35वें वर्षगांठ पर द सेलिब्रेशन ऑफ देयर 35th year they are organizing this fantastic tournament in the name of KFC Champions Trophy 2025 and this tournament is now progressing along nicely। और इस बीच नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर पहुंच चुके हैं नासिर, the number 3 batsman is now comes out to the middle और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त महेश इस वक्त तैयार, अपनी पहली गेंद पर महेश विकेट यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर करते हुए 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद पावर प्ले के अंतर्गत और गेंदबाज महेश अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, बेहतर गेंद इस वक्त रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके गेंद सीधे इस वक्त पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार स्विंग्स एंड स्ट्रेट टू फील्डर एट मिड विकेट, can't find the gap as well, swings it hard but straight into the hands of mid wicket fielder, one more wicket fallen।
द प्रॉब्लम्स आर नंबर बिल्डिंग अप फॉर आजाद काटीपल्ला। और यहाँ पर देखिए गेंद को उछाला था, स्ट्रोक बेहतर था लेकिन प्लेसमेंट गलत था और गेंद सीधे मिड विकेट पर फील्डर द्वारा लपक ली गई। इन फ्लैटर वर्जन गेंद उनकी ओर आई थी लेकिन बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल फील्डर। सेकंड विकेट लॉस्ट। नाउ दे आर लुकिंग इन ट्रबल। इट्स 4 for 2 इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ವಾಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆ ಎರಡು ತಂಡದವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. सो नंबर 4 बैट्समैन इस कम्स आउट टू द मिडल और नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए अजीम और इस बीच गेंदबाजी करते हुए महेश दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद लेग कटर गेंद थी। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद तक पहुंचना चाहा लेकिन पहुंच नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका 4 रनों पर। 2 विकेट के नुकसान पर महेश फिर से एक बार तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट टॉप एज। दिस कुड बी द थर्ड विकेट एंड इट टेकन कंफर्टेबली। One more wicket fallen. The batsman just wanted to play that one with a reverse shot, not succeeded. Got his stoppage and comfortably held just outside the 20-yard circle. Have a look at this in the replay. और गेंद सीधे इस वक्त पहुंच चुकी है 20 गज के बाहर फील्डर के हाथों में और तीसरा विकेट गिर चुका है. They are really looking deep in trouble now. Azad Kadipala. It's 4 for 3. तो 5 गेंदों में 3 विकेट इस वक्त महेश प्राप्त कर चुके हैं. पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किए थे, दूसरी गेंद डॉट रही थी, तीसरी गेंद पर फिर से विकेट मिला, चौथा गेंद वापस डॉट रहा, 5वीं गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुका. देखते हैं 6ठी गेंद पर किस तरह की गेंदबाजी वो यहाँ पर करते हैं. नए बल्लेबाज जुनैद का आगमन इस वक्त हो चुका है और वो इस वक्त महेश की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार. यह गेंद बेहतर गेंद थी, विकेट कीपर चूके गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर और ओवर की समाप्ति हो चुकी है. इट्स ऑफ द बैट, सो सिंगल रन एडेड टू द टोटल and a fantastic over came soon and from Mahesh. Just a single run he conceded and captured 3 wickets after completion of 2 overs. Still the batsmen of Azad Kadipala just searching for the right track. It's 5 for 3 after 2 overs. And let's straight away coming back to the equation. In fact, 5 the score, that means 56 the target, 51 runs more now they have to score for victory. And remaining 36 deliveries. And the required run rate is exactly 8.5 runs per over. 8.50 the required run rate for them at this situation. 51 to get from 36 deliveries. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो हमसे दूर वाले छोर से यानी बीएमआर एंड से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दैविक का, जिन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 4 रन प्रदान किए थे और अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार. क्या 1 रनों की दरकार बचे हुए 36 गेंदों पर. निश्चित रूप से यहाँ पर एक साझेदार यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत आजाद काटीपल्ला के बल्लेबाजों को यहाँ पर कम बैक करने के लिए. और इस बीच गेंदबाज दैविक फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. पहली गेंद, ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस गेंद को खेलते मिड ऑन पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन दौड़कर पूर्ण करने में सफल. जब तक बॉडी मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर. 6 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर. और दैविक फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. सामना करते हुए इस वक्त अराफा और दैविक. अगली गेंद, यह गेंद अराफा के लिए ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने में सफल. बैकअप होता हुआ थ्रो इस वक्त टकराता हुआ निशाने पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. 2 रन ओवर थ्रो के रूप में यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं. दूसरा रन ओवर थ्रो के रूप में पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 8 रनों पर.
Runs are hard to come by at the situations for the batsmen of Azad Kadipala now. They badly required a partnership to get back into this match. और दैविक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे और स्कोर रुक चुका है 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, हर डॉट गेंद के साथ दबाव बढ़ता हुआ इस वक्त आजाद काटीपल्ला के बल्लेबाजों के ऊपर। और इस बीच अपने ओर की अगली गेंद लेकर दैविक का गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को पुल किया है मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट। टॉप एज पर गेंद टकराई और गेंद को डीप मिड विकेट पर जो फील्डर गेंद की ताक में थे उन्होंने इस कैच को लपका। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं और आखिरकार मिड विकेट पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की। चौथा विकेट गिर चुका, 8 for the loss of 4 wicket. Really a struggling time continuing here for the batsmen of Azad Kadipala. Now 8 runs, just 8 runs on the board, 4 wickets lost. और अब इंतजार है नंबर 6 बल्लेबाज का। We are just waiting for the number 6 batsman. और मंजिल से अभी भी काफी दूर यहाँ पर आजाद काटीपल्ला और इस बीच नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए ईशाम नंबर 6 बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर पहुंचते हुए। और इस वक्त तो सामना करेंगे दैविक की गेंदों का। दैविक का अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए यहाँ पर शाम। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दैविक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद क्विकर गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ वाइड स्लॉन्ग ऑफ पर। एक रन का इजाफा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। थ्रो पहुंच चुका है विकेट कीपर के हाथों में, वाइड स्लॉन्ग ऑफ फील्डर का और दोनों बल्लेबाज एक रन के साथ संतुष्ट। और 9 on the board for losing 4 wicket in the over number 3 in progress। और जहां तक का सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, अंतिम गेंद लेकर इस वक्त दैविक तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद हवा में जरूर लेकिन गली फील्डर थोड़े से वाइड तैनात था और एक रन इस बीच बल्लेबाज को मिला। सिंगल टू इन द ओवर, one more good over in SRFC Talapadi's point of view came to an end and after 3 overs still the struggling time is now continuing here for the batsmen of Azad Kadipala. Now they are 10 for 4 after 3 overs. So 46 to get in remaining 5 overs and the required run rate is now straight away gone up to exactly 9.20 runs per over. 30 गेंदें 46 रन मॉनिटर पर इस वक्त दिखाई देता हुआ। 9.20 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट। और गेंदबाज नितेश इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए। जुनैद सामना करने के लिए तैयार और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त नितेश गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर चूके जब तक दोबारा गेंद को फील्ड करे अपने दाईं ओर जाकर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और जहां तक सवाल है इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग इस वक्त की गई है। तो शायद यहां पर तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त रिव्यू लिया गया है कि गेंद साइडलाइन पर साइडलाइन के बाहर थी या नहीं, ये परखने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर उनके कदम बाग के धरते तब गेंदबाजी की गई थी, गेंद डिलीवर की गई थी। तो देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर इसका क्या निर्धार यहाँ पर देखते हैं।
सो इट्स नो बॉल, क्योंकि साइड लाइन वहाँ पर टच कर चुके थे अपने बैकफुट के जरिए गेंदबाजी करते समय। तो इस बीच नो बॉल के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। अब 2 रन उनके खाते में जोड़ जाएंगे। 12 रन, 12 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और इस बीच फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए, और देखते हैं इस फ्री हिट गेंद का बल्लेबाज किस तरह फायदा उठा पाता है। इशाम सपना करते हुए नितेश की गेंदों का दाहिने हाथों पर था विकेट। नितेश की गेंद, ये गेंद इस बार उछाला गेंद को इनटू द गैप एज वेल, और गेंद इस वक्त मिड विकेट सी मारेगा जब हर 4 रनों के लिए। Fantastically struck into the bat of Isham. He just hit that one pretty hard and just clearing the infield and finds the gap as well. Have a look at this in the replay. This is an outstanding struck. Wide is long on और deep mid wicket के बीच से गेंद को निकाला खूबसूरती के साथ खाली क्षेत्र चुनते हुए इशाम ने, और 4 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक लगता हुआ इस वक्त आजाद काटीपल्ला की पारी में इशाम के बल्ले से। अगली गेंद, ये गेंद एक बार फिर this time fantastic comeback. This is an outstanding comeback made by the bowler. After being conceding a body, he come back fantastically in the next 11. Just got rid of the batsman. और बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ इस वक्त गेंद फेंकी थी। देखिए किस तरीके से he just played that one with the wrong line. और गेंद चूंकि गेंद सीधे जा टकरा इस वक्त ऑफ स्टंप पर गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ पांचवा विकेट गिर चुका है। 16 for the loss of 5 wicket. And the over number 4 in progress for Azad Kadipala. They are looking deep in trouble. हकीम इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, और हकीम का आगमन इस वक्त होता हुआ, और गेंदबाज नितेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज हकीम, और इस बीच नितेश दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन फील्डर मौजूद, बेहतर फील्डिंग वहां पर, जस्ट अ सिंगल ही गॉट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन पूर्ण करने में सफल, और 2 रन यहां पर मिलेंगे जरूर, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 3 गेंदें इस ओवर में अभी भी बाकी। दोनों बल्लेबाज कुछ बातचीत करने के बाद वापस अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी आजाद काटीपल्ला के बल्लेबाज को। 38 रन और चाहिए, 27 गेंदें बाकी। 38 रन मोर रन दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 27 बॉल्स। नितेश, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए, थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो चूका, ओवर थ्रो, लेकिन ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन यहां पर नहीं मिलेगा। जस्ट अ सिंगल ही गॉट इन द फेस ऑफ बाय, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। स्लोअर प्रोग्रेसिंग नाउ फॉर आजाद काटीपल्ला। चौके और छक्कों की इस वक्त सख्त दरकार इस मैच में कमबैक करने के लिए आजाद काटीपल्ला के बल्लेबाजों को। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो नितेश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और जुनेद जो कि इस वक्त सपना करने के लिए तैयार। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर। 21 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 20 रन, माफ कीजिए, 20 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और इस बीच गेंदबाज मितेश एक लंबा ओवर उनका प्रगति पर, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद टॉप एज, लेकिन कोई फील्डर वहां पर फील्डर मौजूद है, और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। स्वीप करना चाहता, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा द बॉल गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मिनट, गॉट इज टॉप ऑफ द बैट, टॉप एज पर गेंद टकराई, हवा में उछली, और डीप स्कोर लेग पर जो फील्डर खड़े हुए थे, हालांकि उन्हें दौड़ जरूर लगानी पड़ी अपने आगे की ओर 3-4 कदम। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, काफी ऊंची उछली थी गेंद, और फील्डर के पास वक्त था कि गेंद तक पहुंच सके, और एक बेहतर जजमेंट के साथ अपने आगे की ओर आते हुए इस कैच को उन्होंने लपका। 20 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, और विकेटों के ऊपर विकेट यहाँ पर गिरते हुए, और हर विकेट के पतन के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ आजाद काटीपल्ला के बल्लेबाजों के ऊपर। नए बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 8 बैट्समैन। तो वहाँ पर रुलाल पिंटू इस वक्त कुछ कहते हुए पेविलियन की ओर इशारा करके
और जहाँ तक सवाल है बल्लेबाज का, तो नंबर 10 जर्सी पहने हुए नए बल्लेबाज साहिल इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और अंतिम गेंद इस ओवर की फेंकने के लिए तैयार गेंदबाज नितेश। स्टिल अ बॉल रिमाइनिंग इन दिस ओवर और इस बीच नितेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए साहिल, जो कि सामना करने के लिए इस वक्त तैयार नितेश की गेंदों का। अंतिम बार इस ओवर में नितेश, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, फील्डर मौजूद, जस्ट सिंगल ही गॉट and single to end the over. 4 overs completed and it's 21 for the loss of 6 wickets. Still the batsmen of Azad Kadipala just searching for the right track at this situation. Now 35 to get in the remaining 24 deal overs and the required run rate is now straight away gone up to exactly 8.75 runs per over. 24 गेंदों में 35 रनों की दरकार और देखते हैं बचे हुए 24 गेंदों में आज़ाद काटीपल्ला के बल्लेबाज 35 रन बना पाते हैं या नहीं। तो इससे पहले कि 5वां ओवर पर वो आगे का कोडिकल सुनाने के लिए एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अगले 4 ओवर के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. And team Azad Kadipala, there looks like they are a little bit under pressure now because of the required run rate, which is now goes up to 8.75 runs per hour. And more than that, I think they lost to 6 top order batters of their side. And now Sahil and Hakim, the batters, have to do the job for the team. But outstanding performance from SRFC. The bowlers did a great job after that. The batters did a good job for getting some good total. Now 35 to get from 22 balls. Sunil. Balls, a nice looking drive towards extra coverage, and they wanted to come back for the second, but no chance because Asif, the fielder in that deep extra coverage, and fields the ball, returns the ball, ample time for the batter to complete the single. And Asif, the batter who scored at valuable 23 runs in 19 balls, one of the highest run getter in that SRFC. Again, the single. These singles will not going to help the team Azad Kadipala to get into that target. Along with the single, they have to look for some the boundaries as well. 23 for the loss of 6 wickets. Daivik, the very good fielder in the outfield, and here again played it down to mid wicket region, but straight to the hands of fielder. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. He just got that one right from the middle of the bat. Just have a look at it in the replay. Sunil just tossed up delivery. And a little bit short as well. But I think the placement is not good enough. You have to play a little bit squarer. The huge gap there. And this is what sometime you have to be a little bit the presence in that field set. Have to see the field set. And they have to get that placement right if they wanted to go for the big shot. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಮತ್ತು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ 3 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025. Meanwhile, the new batter came into middle with just number 32, Zabir. He's off the mark straight away. One more good over which is comes in, and Sunil bowled an excellent over. And after he's contributed some runs from the bat, now he's contributing from the bat as a ball as well. Now 32 runs required for the victory in remaining 3 overs. 18 ball, 32 required for Azad Kadipala. They are looking in trouble. Time is exactly 2:30. Little bit lazy afternoon and sleepy afternoon because of after having a lunch break. Oh, the very good lunch break from Hotel Matsya and from organizers.
Thanks for that. The very good hospitality. And it's 24 for the loss of 7 wicket. This time wanted to go for the big shot. And mid-wicket fielder fumbles and only a single. Of course, our scorer Ratish is also very happy after that lunch break. Had got some delicious coastal fishes which is available in that hotel. So what he had, Ratish? This time he lofted and it looks like it's going to a distance. What a shot! What we're talking about, that condition is so difficult for the batter to get the distance. And this man absolutely so easy, absolutely muscles that one. What a fantastic stroke came from the bat of Akim. And one more Akim of KFC Kodical is, of course, watching this match in our commentary box and is very happy to see that stroke from, because the name Akim itself, it's good enough. They are a good striker of the balls. 31 for the 7. Again, that kind of cricketing stroke is regularly required for the team. Azad Kadipala, by call by umpire, wicketkeeper missed it. It's 32 for the loss of 7 wicket. 24 required from 15 balls. Now, equation slight a bit tough. Manageable for Azad Kadipala. This is what the beauty of cricket sometime. Losing 7 wickets and fighting hard. They need to appreciate. Down the leg side. Now the bowler is under pressure straight away. Nitesh, after that punishment which came from Akim, now he's just looking for the survival. And this is all about the cricket sometime. And all in sudden you are in a defensive frame of mind in the bowling. He wanted to survive again. The one more wide. Now the match is turning around. It's going to be now anybody's game because of the big over. Nitesh fails to get his line and length here. 22 required from 15 balls. 34 for loss of 7 wicket. This time I came across the line of the little chance of run out. Looking for the direct hit by the bowler Nitesh, by call by umpire. One more addition. Warning has been given for the batter for running in the pitch. That's for Zabir. Hakim, one who got a massive 6, is back on strike. Nitesh balls. Ball him, clean him up. The same wicket. The same wicket taken by the bowler Nitesh, who has been punished into that long off for a maximum. That's the outstanding delivery. Just have a look at it in the replay. The fantastic delivery indeed, right on the middle stump. Quicker and faster one there from Nitesh. Hakim departs. Again the team SRFC are back in the game. Young friends Urwa ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ ಮಸಾಕ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. $35 for the loss of 8 wicket. Now new batter in is Ashu. Ashu will go into face Nitesh away from us. This time top edge opportunity for the fielder. Short mid-wicket fielder taken the catch. 9th wicket back in the pavilion of team Azad Kadipala. Now just a 1 wicket required for SRFC to win this match. Of course, winner of this match, straight away they are getting the place into the semi-final of this KFC Champions Trophy. So definitely it's going to be a great achievement, I want to tell you, in the prestigious tournament like KFC Champions Trophy. You're getting into the semi-final means it's going to be a good achievement. 35 for 9.
2 overs remaining, 21 required for the victory. So 12 ball, 21 required. The bowler brought in attack from the far end. Salim. Sanil, the bowler, who bowled the first over with the excellent line. And oh, this time the match is not at over. This is bad. Oh my goodness, can you believe this? Even the batter can't believe that how the ball is went into the hands. The clean it, as clean as a whistle. But unfortunate, have a look at the ball is dropping. Everyone thought that it might be a huge six. Maybe that the wind which is opposite side, that's why that ball which is not travel, unfortunately. But a victory for the SRFC. A victory for SRFC Talapadi. They are absolutely played a good game of cricket here to get into the semi-final of this prestigious cricket tournament. Congratulations, win of 20 runs of the victory here for the team. So man of the match of this match award goes to the man who batted brilliantly, scored 23 runs into his credit, Asif. Asif of SRFC Talapadi adjudged the man of the match because of his fantastic batting performance of 23 runs he scored in this match. And now one more big match is now coming up. In fact, Gori Young Boys will take over Young Friends Urwa, and that match starts within just a short while. And we'll be taking a short break and we'll be back right after the short break.
So now it's the time to the presentation of Man of the Match award of the previous match, which is goes to the young man who's batted brilliantly for SRFC Talapadi. It's Asif of SRFC Talapadi. I kindly request him to please go to the dais, and I request Nazim Surinje. Now he is presenting the Man of the Match award. Nazir Surinje is presenting this Man of the Match award to Asif. Gori Young Boys ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದರ್ಶ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಮೆಗಾಗಿ.
धन्यवाद सतीश। तो जहां तक सवाल है इस वक्त मैच का, एक बेहतर मैच, वन मोर बिग मैच इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट। यंग फ्रेंड्स उर्वा विल टेक्स ओवर गुड यंग बॉयज। और यंग फ्रेंड्स उर्वा ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है, तो उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई। तो अंपायर पुष्पराज इस वक्त इशारा करते हैं कि मैच की शुरुआत हो और पहली गेंद लेकर गेंदबाज रिफान इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हैं, जबकि सैफुल्ला और प्रज्वल आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। और पहली गेंद लेकर रिफान इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के गोरी यंग बॉयज पहले ओवर में। और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर रिफान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट बट इट वेंट जस्ट ओवर द मिड ऑफ फील्डर साइड। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट एंड जस्ट क्लियरिंग द इनफील्ड एंड ही हैज गॉट अ कपल ऑफ रन्स फॉर दैट स्ट्रोक। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर, 3 ऑन द बोर्ड। येट टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और रिफान फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इन फैक्ट इस गॉट अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर, 3 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 4 ऑन द बोर्ड, इन फैक्ट 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त प्रज्वल और रिफान इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रज्वल जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइक जस्ट मिसिंग आउट ऑफ स्टंप। और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज रिफान दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए प्रज्वल के लिए अगली गेंद। यह गेंद स्विंग्स एंड दिस टाइम आई थिंक इज फेल जस्ट शॉर्ट for fence and deep in wicket. What a fantastic strike. This time he just picked that one right from the spot and lofted that one in a style over deep mid wicket fence for a 4 runs. Fantastically struck. और गेंद लगभग सीमा रेखा के अंदर इस वक्त टिप्पा खाते हुए, और देखिए किस तरीके से गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर, 8 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। रिफान अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद एक बार फिर से स्वीप किया, इस वक्त कोई फील्डर वहां पर नहीं, और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए प्रज्वल पहले गेंद को उछाला था डीप मिड विकेट पर, इस बार गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग पर, जबकि वहां पर कोई फील्डर नहीं, खाली क्षेत्र चुनते हुए और 2 लगातार चौके इस वक्त उनके टीम की कुल रन संख्या को इस वक्त ले जा चुके हैं 12 रनों पर, 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। 2 लगातार चौके इस वक्त जड़ चुके हैं बल्लेबाज प्रज्वल और अपने इरादों को यहाँ पर बुलंद करते हुए। और इस बीच रिफान दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, फुल टॉस, लेकिन एक बार फिर से गेंद को उछालने में चूके रन गेंद इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, जब तक फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर। तो एक बेहतर शुरुआत गोरी यंग बॉयज यहाँ पर कर चुका है। गोरी यंग बॉयज मेड अ वेरी गुड स्टार्ट, इन फैक्ट 13 रन्स ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, आफ्टर बीइंग लूजिंग द टॉस एंड पुट इट टू बैट बाय Young Friends Urwa in the match number 4 of this prestigious cricket tournament, KFC Champions Trophy 2025. So, right after this match, one more big match is now coming up. Manglore will take over Torpedos Kana in the next match. And because of that, I request all the players of these 2 teams to please report to the stage to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ಕಾನಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು हस्ताक्षरಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो जहाँ तक सवाल है अगला ओवर का, तो गेंदबाज इस वक्त अगला ओवर प्रारंभ करते हुए अश्वित, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। पहले गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट अश्वित गेंदबाजी करते हुए प्रज्वल के लिए।
प्रज्वल इस वक्त 9 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हैं। सिर्फ 4 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज अश्वित। प्रज्वल जिन्होंने पहले ओवर में 2 चौका झड़ने के बाद अपने रिदम लय पर लौट चुके हैं इस वक्त और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अश्वित की गेंदों का। पहली गेंद लेकर अश्वित इस वक्त तैयार था, इन हाथों पर द विकेट। यह गेंद ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में अपने पैर के जरिए गेंद को रोकना चाहा लेकिन रोक नहीं पाए और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता मिड ऑन पर 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 14 एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। और इस बीच गेंदबाज अश्वित अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज सैफुल्ला जो कि सामना करते हुए और अश्वित इस वक्त तैयार। यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी और जब तक गेंद को शॉर्ट पॉइंट पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 15 रनों पर। और जहां तक सवाल है प्रज्वल बैक ऑन स्ट्राइक का सामना करते हुए अश्वित की गेंदों का दाहिने हाथों पर द विकेट। गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अश्वित इस वक्त प्रज्वल के लिए यह गेंद धीमी गेंद थी। जस्ट चेंज ऑफ पेस एंड टेकन एट द मिड ऑफ बाय अरशद। जस्ट चेंज ऑफ पेस बाउल्ड इंटेलिजेंटली बाय द बॉलर और अंतिम गेंद में ऐसा कहना पड़ेगा पिछले जो गेंद थी परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद इस वक्त फेंकी थी और यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस धीमी गेंद के धीमे पर को समझ नहीं पाए और गेंद को खेल तो जरूर दिया लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर जो थे अरशद बजाल एक बेहतर जजमेंट के साथ इसके आज को अपनी बाईं ओर जाकर लपकते हुए। ಅಲ್ಲೇ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಿ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। So first wicket gone for Gori Young Boys. Prajwal the man dismissed 10 of 60 deliveries he scored and now they are 15 for the loss of 1 wicket. New batsman Nofal is now comes out to the middle. और नोफल नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त अश्वित की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार और अश्वित गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार नोफल के लिए अगली गेंद। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त नौफल ने। गेंद कुछ देर हवा में जरूर लेकिन फील्डर थोड़ी से पीछे तैनात शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 16 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार लेग स्टंप से बाहर और इस वक्त सही गेंद घोषित। ಅಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ವಸೀಂ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। तो इस बीच अगली गेंदबाज इस वक्त तैयार। यह गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को उछालने के प्रयास में चूंकि दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है। 2 overs completed 16 on the board. Good over came to from Ashwit who conceded just 3 runs and he got the wicket of Prajwal and after 2 overs the equal battle is now continuing here. 16 for 1 Gori Young Boys right after 2 overs with 6 to go in their innings. So 2 overs completed, 16 on the board, 1 wicket lost. Third over starts from their innings and the bowler starts a fresh proceedings from the commentator box and is Santosh Senior is now going to start the fresh proceedings
और अत्यंत अनुभवी गेंदबाज यंग फ्रेंड्स उर्वा की ओर से संतोष जप्पू इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करते हुए इस वक्त नौफल। और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्ड के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और इस बीच पहली गेंद संतोष के ऑफ स्टंप पर आते हुए हल्के से गेंद को ढकेल दिया, बैकफुट पर जाने के बाद नौफल ने एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन का इजाफा। 17 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। संतोष फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सैफुल्ला जो कि सामना करने के लिए तैयार, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त जारी है। जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो चौथा मैच इस श्रृंखला का यहाँ पर खेला जाता हुआ। 2 प्रतिष्ठित टीमें यहाँ पर भिड़ती हुई, यंग फ्रेंड्स उर्वा और गोरी यंग बॉयज। इस मैच के बाद एक और बेहतर मैच, एक और हाई वोल्टेज मैच खेला जाएगा एनएम मैंगलोर और टोरपेडोस काना के बीच। और इस बीच संतोष दाहिने हाथ ऊपर विकेट, फुल टॉस, टॉप एज, मौका हो सकता है, फील्डर कोई वहां पर नहीं, लेकिन बल्लेबाज को इस गेंद पर मिले 1 रन। और यहाँ पर टॉप एज पर जरूर टकराई थी, लेकिन स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। मिड विकेट से फील्डर दौड़े जरूर, लेकिन गेंद तक पहुंचने में सफल, और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 18 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। संतोष अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट नौफल के लिए। यह गेंद धीमी लेग कटर गेंद थी, हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, और इस बार बैक हैंड थ्रो, ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। तो मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने बैक हैंड थ्रो किया इस वक्त, लेकिन काफी वाइड थ्रो, और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। अगली गेंद लेकर संतोष तैयार, नौफल के लिए गेंद को उछाला है नौफल ने, मिड विकेट के लिए मौका, और आखिरकार बेहतर फैंटास्टिक जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल। फील्डर अजमल जो थे, पीछे की ओर दौड़ते हुए कैच पकड़ना उतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अजमल ने पीछे की ओर दौड़ते हुए इस कैच को गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए लपका है, काबिल तारीफ, एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली टेकन बाय अजमल। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, काफी ऊंचा उछाला था इस वक्त, गेंद काफी देर तक हवा में ट्रैवल करी और अजमल पीछे की ओर दौड़ते हुए एक बेहतरीन जजमेंट के साथ इस कैच को उन्होंने लपका, और इस बेहतरीन कैच के बदौलत विकेट इस वक्त गिर चुका है दूसरा। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 20-2 नाउ। जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 4 बैट्समैन एट द सिचुएशन। नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ, सम्राज नए बल्लेबाज, जो कि इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 2 विकेट गिर जाने के बाद इस वक्त गोरी यंग बॉयज को एक साझेदारी की सख्त जरूरत है, और इस वक्त देखना यह है कि नए बल्लेबाज जो है सम्राज दूसरे छोड़ के बल्लेबाज सैफुल्ला के साथ मिलकर उस साझेदारी की कमी को पूरा कर पाते हैं या नहीं। और संतोष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। ये गेंद लेग कटर गेंद ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त उछाल दिया, डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंचे, 1 रन मिलेगा, वहां पर फील्डर मौजूद है, काफी तेजी के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। सम्राट से जो कि दौड़ कर आए, लेकिन वहां पर सैफुल्ला वहीं पर खड़े रहे, और आखिरकार इस मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत यह विकेट यहां पर गिर चुका है नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनआउट के रूप में। एक बेहतर थ्रो डीप मिड विकेट के फील्डर ने फेंका था, राजेश ऊपर जो फील्डर थे तेजी के साथ गेंद को उन्होंने फील्ड करते हुए थ्रो किया स्ट्राइकर एंड पर, और विकेट कीपर ने गेंद को रिसीव करने के बाद थ्रो कर दिया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और आसान सा रनआउट नॉन स्ट्राइकर एंड पर यहां पर होता हुआ। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। At one stage they were 15 without loss. Now they are 21 for 3 now. And good comeback made by the bowlers of young friends who, after being conceding 13 runs from the first over, they conceded 8 in the next 1.4, and also they picked up 3 wickets of Gori young boys. तो रियाज आमतौर पर आरंभिक बल्लेबाज के रूप में गोरी यंग बॉयज की ओर से मैदान पर उतरते हैं। यहाँ पर उन्हें डाउन इन द ऑर्डर भेजा गया है, नंबर 5 स्पॉट पर, नंबर 5 क्रमांक पर इस वक्त उन्हें भेजा गया है। रियाज इस वक्त अनुभवी खिलाड़ियों में से एक जाने जाते हैं गोरी यंग बॉयज की ओर से। इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए सैफुल्ला, और
इस बीच दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को उछलना चाह लाइन के बाहर टिप्पा खाती हुई ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलती हुई, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर्स कंप्लीटेड, 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। हालांकि रन रेट कुछ हद तक बेहतर, लेकिन सवाल उठता है इस वक्त विकेटों का, 3 अपने बहुमूल्य विकेटों को खो चुका है यहाँ पर गोरी यंग बॉयज। 21 रनों के योग पर अब कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल उनके पारी में अभी भी बाकी। तो चौथा ओवर शुरू होता हुआ गोरी यंग बॉयज की पारी में, और हर्षद बजाल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए। दर्शकों की तादाद इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई दिखाई देती हुई इस वक्त, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसा जैसा वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। और इस बीच अरशद बजाल ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रियाज पहली बार सामना करते हुए अपनी गेंद का, और अरशद बजाल इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद पहली गेंद अरशद बजाल द्वारा, बाएं हाथ राउंड द विकेट, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन दिस टाइम, अपील फॉर लेग बिफोर, लेकिन अंतिम अक्षर में अंपायर ने इसे नकार दिया। कुछ हद तक, शायद कुछ हद तक गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी, लेग बाई के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास तैनात, और अरशद बजाल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। इस बीच ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद मोड़ना चाहता, पैरों पर गेंद टकराई, प्लम इन फ्रंट गोचेता, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। सैफुल्लाह की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है, लेग बिफोर विकेट के रूप में आउट घोषित किए गए, और चौथा विकेट गिर चुका है गोरी यंग बॉयज का 22 रनों के योग पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो इस वक्त नए बल्लेबाज नंबर 6 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल, विकेटों के ऊपर विकेटें गिरते हुए, और हर विकेट के पतन के साथ गोरी यंग बॉयज के ऊपर दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ। प्रीतम नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और अरशद बजाल इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ अराउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार प्रीतम के लिए, गेंद को उछाला, एक्स्ट्रा कवर फीडर थोड़े से पीछे तैनात, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन फीडर जो थे डीप एक्स्ट्रा कवर पर थोड़े से पीछे, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज अरशद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद इस बार अंदर की ओर आती हुई गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में ड्राइव, रियाज द्वारा जगह नहीं बना पाए, और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। और फिर से एक बार अरशद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन करते हुए रियाज ने खेल दिया इस वक्त तक गली पर, बेहतर फील्डिंग वहां पर फील्डर राजेश उबर जो कि दौड़ते हुए पीछे की ओर जाते हुए गेंद को फील्ड करके तुरंत अपने हाथों से गेंद को रिलीज किया इस वक्त, और एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 24 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट इन ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज फिर से एक बार अरशद बजाल बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त तैयार, ये गेंद स्वीप करना चाहता, मिसअंडरस्टैंडिंग, इस बार रनआउट का निशाना चूक चुका है, और गेंद इस वक्त फाइनल की दिशा में ओवर थ्रो के रूप में जा चुकी है, और बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं या नहीं देखना पड़ेगा। तो अंपायर पुष्पराज इस वक्त खड़े हुए हैं, और आखिरकार देखना यह है कि अंतिम अक्षर में जब विकेटें उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। यहां पर खिलाड़ी सारे एकजुट हो चुके हैं और पुष्पराज का कोई निर्धार नहीं, तो इसका मतलब यहां पर बल्लेबाज बच चुके, अपने हाथों से विकेटें इस वक्त उखाड़े थे, तो इस वजह से बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं।
Over की समाप्ति 4 overs completed 26 for the loss of 4 wicket for Gori Young Boys. Still they are searching for the right track. 4 overs left, 4 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाएंगे. तो पांचवा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और इससे पहले कि पांचवा ओवर शुरू हो आगे का आंखों निकाल सुनाने के लिए एक बार फिर से अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, Gopi. After that, flying start here for Gori Young Boys. Just lost the momentum because the wickets are falling after that. And 4 overs completed, 26 for the loss of 4 wickets. Oh, what a delivery! What a delivery there from Santosh. Batter have to play that shot, isn't it? No other option at all. Because the way that ball is given a flight and a turn like cutter, Riaz, nevertheless, I think he has to play that one back to bowler. Because of that beautiful tossed up delivery. Just have a look at it replay. The batsmen have to play that one back to bowler. No other option. Otherwise, you have to depend that one. If you want to drive the ball, you have to play that one back to bowler. This is what I just have a look at it replay. See that. The loose stroke, of course. But because of that line and length which is bowled in that delivery is outstanding. So, Riaz is back in the pavilion. And again, Gori Young Boys, they are just losing their momentum. This is a problem for Gori Young Boys for a long time. The Prajwal is a batter. He's always giving the good start. And he's always getting a good momentum for the team. Once his wicket is back in the pavilion, the problem for the batting order of Gori Young Boys is that they're not really backing up after that. They're not taking any responsibility. This is what the problem is in the present day for the Gori Young Boys. Of course, Gori Young Boys last week, they are becoming the champion at Yadi Sri Ram Trophy 2025. And I thought it might be that will going to give some kind of comeback for the team, Gori Young Boys. And here is lovely delivery. This is the kind of negotiation we can see there from Tyagaraj. But this time the line which is outside the line of off time, so that Tyagaraj definitely can adjust the stroke to get that one into the cow point region. 26 for the loss of 5 wicket. What a fantastic 27 correction. Santosh is the man who has got a fantastic career for his team. With the ball. Again, lovely delivery, tossed up and negotiated very well by Pritham. One more very quality player for the side of Gori Young Boys. These two batters, of course, those are playing for the same team. They have to get some partnership here for the team, Gori Young Boys. Tyagaraj wanted to go for the drive. This time, Yorker length, which is outside the line of off stump. Tyagaraj a little bit late into that drive. Ball misses his bat and is shot. The wicketkeeper behind the stump did the rest. This time, loose delivery and he punished. You can't do the mistake of bowling that line to the Tyagaraj. You can't do the mistake of bowling that line to the Tyagaraj because might be Santosh just getting that experiment of bringing the ball around the legs of the batter. But he's not getting the turn that much what he's looking for. And Tyagaraj dispatched that one into deep square leg boundary for a maximum. This is 6 which I want to tell you for the Gori Young Boys. That will going to give a lot of oxygen for the team to get the good total here. 34 for the loss of 5 wicket. So loosener, isn't it, from Santosh after he bowled a fantastic line and length. The one delivery which is absolutely destroy the economy of his Tyagaraj this time quite difficulties taken place to get the ball into his bat, but managed to get that one into the square leg region, even though wicket taking over, but it's for an expensive over. But still it's going to be a very good bowling figure for Santosh, I want to tell you. See that 2 overs 14 runs and he picked up 2 valuable wickets. So that's 1-6 I want to tell you. That will what the economy Santosh wanted to see, which is absolutely disappointed that seeing that 14 runs in 2 overs. So this is a cricket, isn't it? And sometimes it's happening in cricket, quite not deliberately you're bowling that ball. Sometimes you're trying for something special. By doing that, you're making a mistake of bowling some odd deliveries. Arshad Bajal in his second over and last over of his quota. The man with the golden hand contribute to the team with the bat and the ball. This time, very good attempt there from Santosh. Very good attempt.
Age is just a number, I want to tell you, for the man like him. Just the way that he's committing for that catch. Have a look at that one, a replay. And absolutely perfect attempt from the extra cover field, Santosh. 35 for the loss of 5 wicket. Nicely driven down to a long off region for a single. With that single scored Mozan to 37 for the loss of 5 wicket. 37 for the loss of 5 wicket. And Arshad again bows to Tyagaraj. Is batting on 8 out of 4 deliveries. 5 deliveries in fact. Down the leg side again, he's swinging his bat to play it down to square leg region for a easy single. With the addition of the single scored Mozan to 38 for the loss of 5 wicket. You are watching KFC Champions Trophy 2025, which is proudly presented by Kodical Friend Circle, registered in this historical UCG cricket ground. The lots of underarm cricket witnessing one more big tournament. This one, Pritham! I think he will going to get the distance. Oh, someone is sleeping in the spectator gallery. I am sorry to say that, Pritham, you disturbed that man. You disturbed that man. Have a look at that stroke here. Pritham absolutely nailed it. Fantastic timing. And have a look at the ball is where he's landing. All is going and then landed onto the almost into the stomach. Oh, not the stomach, just missing. Just missing something. My goodness. Fantastic camera work there from cameraman. That might be a chance of catch. I want to see it in a replay again because someone is coming across. Someone is coming across was us. That's I'm requesting the spectators, please don't walk inside the ground. Just have a look at the replay. Oh yes, it is. There is opportunity for the fielder to try for the catch. Extra cover fielder. Santosh fields the ball. 46 for the loss of 5 wicket. One more good over from the point of view of a team Gori Young Boys. Now they are back in the game very strongly. The 2 overs has got a 1-6 respectively. That is good enough for the Gori Young Boys to get into that good target here. 46 for loss of 5 wicket after completion of over number 6. Just I would have a look at that one again in the replay. The Pritham got that one right from the middle of the bat. Just have a look at that one. The ball is where is going in. And it looks like the opportunity for the fielder. I think Sajid, the fielder, is just wanted to get the ball. Or that might be an opportunity, I want to tell you, because ball is not in the height. Even Sajid can try for the catch, but unfortunately someone is walking. And it's not a good to see that spectators are doing something wrong here. Why they are coming inside the ground while match is going on. Lucky escape as well and for Pritham. Now the bowler Karthik brought into attack. This time top edge. Oh my goodness, very bad luck here for Tyagaraj. Low full toss. He just tried to tickle that one on the onside region. By doing that, I think he's got a top edge. And half-hearted tickle, I want to tell you. Just have a look at it in the replay. Full toss. And he just wanted to tickle that one. I think he need to get some power in that shot. Just like what he did in the over of Santosh when he hit that one down to deep square leg region. But he is not really able to hit the ball. He just wanted to flick that on of his legs. Pays the penalty for that. Karthik got a wicket. But a good innings. Small cameo from Tyagaraj. Scored 11 valuable runs in a difficult condition. And 8 deliveries he faced. Fayaz is a new batter in. With the jersey number 45, the very popular jersey number. Even Naushad of KFC Kodical is also wearing the same jersey number 45. Rohit Sharma, hitman. Again played it. Oh, just away from the fielder at cover point region. And just like a hitman, of course, Fayaz is also the hitman, no doubt at all. He can surprise any teams, any bowlers with this some technique of hitting the ball. But this time his team is required some sensible batting after getting a very good score here. They have to negotiate very well in these 2 overs. 47 for the loss of 6 wicket.
Pritam, this time appeal and is given right decision there from umpire. Perfect decision, I want to tell you, from Pushparaj. Absolutely hitting him right in front of middle stump. Half cutter, just have a look at it. That is absolutely flum. Pritam just wanted to go for the reverse stroke. Ball, of course, pitched outside the line of off stump, but incoming delivery, in cutter, and right in front of middle stump. And Pushparaj's finger goes up immediately. 47 for the loss of 7 wicket. Some left-handed batters are bowling a leg cutter because they are the left-hander. So ball will go into be an incoming delivery for the right-hander batters. Now Ansar is a one more good cricketer, experienced campaigner. So now it's going to be a very, very interesting jersey number. Now jersey number 18 is coming into the middle. Now in the middle, Virat Kohli and Rohit Sharma. Here is Karthik. Bowls left arm. This time, oh, mix up, chance of run out. Isha, this time I think again Ajmal is doing a mistake. Again, looks like Ajmal did the mistake of not collecting the ball. But still, I have to see that. Umpire Pushparaj rightly called for the third umpire. It might be a close call. Maybe the ball and the hand together can hit the stumps. That's what umpire have to see. And it's definitely going to be a close one I want to see here. And angle which is a perfect here. Ball which is came into the hands of Ajmal. He tried to get into the stump now. Oh, this is going to be very, very close for the third umpire to watch. Whether the ball touches the stump or it is hand touches the stump. That's what umpire have to see. But I really appreciate the cameraman. And even the mixing department, Irfan himself is in that mixing department. Will going to provide. It's a not out again. Now it's a wide for the wide. The review from the third umpire. It's a review from the field umpire. Batsman review, thank you. So batter's review for the wide. Now jersey number 218 is there because one more jersey number 18 is coming to the ground. Anif. It's a fair delivery. Anif just is celebrated his birthday not 2-3 days back. Is it by, sir? Previous one by. That's out. That's out of the run. Sir, not out. The previous one is not out. It's a buy. Yes. Thank you. No confusion. 47 for the loss of 7 wicket. 48 for the loss of 7 wicket, in fact. Now, last 8 deliveries remaining in the innings of Gori Young Boys. Karthik balls. Oh, lovely delivery. Oh, my God, again mix up. Again chance. My goodness. Now Ajmal is just questioning over the umpire. Will it going to be obstructing the field? Now Santosh is also having some way to answer. Slight a bit of comedy of error. And slight a bit of comedy of error here from the batters, the fielders, everyone. Karthik, so far good over is in progress. Oh, one more lovely incoming delivery. The fire has quite hardly managed to get a bat onto that. This is turning out a great over for the point of view of young friend Urwa. A fantastic over which comes to an end. After completion of over number 7, it's 49 for the loss of 7 wicket. Yes, we are talking about the more cricket tournament. Of course, one of the organizer of SVS cricket tournament. We have so Manohar Bandwal is here in our commentary box, one of the organizer of SVS Trophy 2025 that will going to commence on Saturday. One more big tournament will going to commence. He is here in our commentary box.
having some chat with the umpire Roland Pinto. Welcome for him for this prestigious KFC Champions Trophy 2025. Ashwit brought into attack. The last over of the innings of Gori Young Boys. Good score on the board. No doubt at all. This time, lovely delivery. Fantastic one. Perfect delivery onto the block hold. 50 comes up here for Gori Young Boys. 54-7. I'm not getting the replay because what a delivery that one from Ashwit. Perfectly bowled. And excellent one there from Ashwit. Now Ansar will going to take the strike. Slow leg cutter, played it nicely. Down to long on, not more than a single. Good piece of fielding there from Sajid. One of the safest and quickest fielder in the deep. And played it nicely to that deep wideish long on region for a single. Just a single, and this time he went for the big shot, missed it completely. What a delivery there from Ashwit. The fantastic delivery. Fayaz just wanted to go for the expansive drive over the mid on or long on. In fact, he was trying for, but couldn't manage to get that ball into his bat because Ashwit has been outstanding. The line and length we can see in this last over, the kind of line which is required when the batter is looking for the big shot. The line is length which is superb. No chance for the Fayaz to get the ball into his bat. After his dismissal, one more new batter coming to the middle. Murshid with the jersey number 10. One more legendary jersey number coming to the middle. Watching some after 18, after 45, now jersey number 10. Murshid. Murshid with the jersey number 10. God of cricket, Sachin Tendulkar. 15 for loss of 8 wicket now. So far, good over is in progress. Ashwit. Murshid this time appeal for leg before wicket. In fact, is outside the line of off stamp. Leg by call by umpire, rightly so. While Murshid is wanted to get that reverse sweep, is almost committed. Now the time exceeds. The time limit is exceeds by the team, young friends Urwa, and the remaining deliveries, they have to bring one fielder inside the ring. 2 balls remaining, and only 4 fielders outside the circle now. Opportunity for the team. Gori Young Boys, especially Ansar, wait and see how he'll go and capitalize. Final delivery of the innings of Gori Young Boys. Down the leg side, bonus run. Ashwit did the mistake. All the efforts which is put in this last over, it's a little bit disappointed with that extra runs. 1+1, 54 for the loss of 8 wicket. Still 2 more deliveries left in the innings of young friend for the Gori Young Boys. The good score I want to tell you under this condition. Then flicks it on off his legs down to short fine leg and they wanted to come back for the second. In comes a throw from the fielder, but oh, what a throw! What a throw there from Rajesh Ubar. You can't miss his throw. He's absolutely fantastic in the outfield. The throw has been outstanding. Just have a look at the replay. Single and pick up and throw. Not controlled pass, but still, as you look at the throw, just over the bills. And easy job for Ashwit to complete that run out. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 54-5 for the loss of 9 wicket. Last delivery of their innings coming up, and Ashwit to Murshid. Round the wicket, Ashwit balls. Coming down to track using his feet, got outside the tip of the bat. They wanted to come back for the second. The last delivery of the over. They doesn't want to lose the wicket. That's it. Gori Young Boys, they finished their 8 overs quota. They scored 56 runs by losing 9 wickets, and they set a target of exactly 57 to win the match. A good total from Gori Young Boys. I want to tell you, this is a good total under this condition.
if they bowl well, if they field well. But you cannot underestimate young friends who are the batting department. They got some top class batters in the side, like Sajid is a man in form, and they got very, very destructive Arshad Bajal in the side as well. They got Ishad and all. We can see that the batters like Azim and the batter like Rajesh Ubar, everyone has got potential of chasing those runs, so that Gori young boys have to bowl well, have to field well if they win this match. So Torpedos Kana ಮತ್ತು NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So we are talking about the more cricket tournaments in UCG cricket ground in the coming days. Young Friends Urwa registered the presenting Young Friends Trophy 2025. And the 11th Underarm cricket tournament will be organized on May 12 to 17. So please note the date from May 12 to May 17. There will be a Young Friends Trophy 2025, and first prize will be of 60,666. Second prize will be 40,444 rupees, and of course maximum of 2 Manglore pole players can play in a team. This is a different concept. It's not top ranking teams, but even local teams, they can add 2 Manglore pole players in their respective teams. And entry fees will be of rupees 6,000. And please don't miss the date from 12 to 17th. And I think the 17th will be the under floodlight for that Young Friends Trophy 2025. That's it of the news here. And again, we are coming to the more matches. More matches we are going to inform you, and before the innings will going to start of Young Friends, it's a time for Gopi to take over the microphone. And Gopi, good total, the 56 in this condition, when seeing the nature of the ball is not that much of hard enough, and 56 might be the good total. I think a little bit disappointed in the end, because after Prajwal has got a flying start in the middle of the innings, they lost the wicket, they lost the momentum, but nothing worried about that. After that, still they bounced back with some good runs in the last 2 overs. Altogether 56, Gopi. We are expecting some great battle between 2 very good teams. Of course, Young Friends, you know exactly, they got some fantastic batting department like Arshad Bajal is a killer of the ball, the man in terrific form. You know, Sajid, Irshad, and batter like someone like the left-hand batter Rajesh Ubar. It might be a very, very effective in this chasing. So that I think a lot of hard work is required from the bowlers and even in the fielding department for Gori young boys to win this match. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त एक बेहतर स्कोर अंडर ऐसा कहना पड़ेगा गेंद के सबक, जस्ट सीइंग द नेचर ऑफ द बॉल, इट्स अ कॉम्पिटिटिव टोटल. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त 56 रनों के स्कोर के अंदर रोक कर रखने का यंग फ्रेंड्स उर्वा के सशक्त बल्लेबाजी को, तो यंग फ्रेंड्स उर्वा के पास जो बलाढ्य बल्लेबाजी का, जैसा कि कुछ खिलाड़ियों के नाम आपने जिक्र किए, साजिद, अरशद, राजेश उबर, अजमल जैसे बेहतरीन खिलाड़ियाँ यंग फ्रेंड्स उर्वा के लाइनअप में मौजूद है, बैटिंग लाइनअप में, तो उन पर नियंत्रण लगाना है तो निश्चित रूप से एक कुछ विशेष रणनीति के साथ, डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ गेंदबाजी करनी होगी. और पहली ओवर से ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन गेंदबाजी जारी रखनी होगी गोरी यंग बॉयज़ के गेंदबाजों को, अगर उन्हें 56 रनों के स्कोर के अंदर यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है. तो देखते हैं यहाँ पर गोरी यंग बॉयज़ के बल्लेबाज, गोरी यंग बॉयज़ के गेंदबाज यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाजों पर किस तरह नियंत्रण प्राप्त करते हैं. तो इस वक्त उनकी पारी की शुरुआत होती भी अरशद बजाल, और इस वक्त आरंभिक बल्लेबाज मौजूद NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ಕಾನಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. साजिद और अरशद बजाल आरंभिक बल्लेबाज, जबकि गेंदबाज शुरू करते हुए नौफल, जो कि गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार.
तो इस तरह से यंग फ्रेंड्स उर्वा के पार यहाँ पर शुरू होते हुए 57 रनों का लक्ष्य 57 द टारगेट फॉर देम सेट बाय गोरी यंग बॉयज दैट्स फॉर द रिक्वायर्ड रन इट इज कंसर्न्ड जस्ट ओवर 7 रन्स फॉर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य तक पहुँचने का, तो देखते हैं यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं नहीं। तो पहली गेंद लेकर गेंदबाज नौफल इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, और अरशद बजाल जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फर्स्ट बॉल कम्स, पहली गेंद स्वीप किया इस वक्त अरशद बजाल ने खूबसूरती के साथ फाइनल की दिशा में गेंद जाती, विकेट का पीछा करते हैं फील्डर, जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन न प्राप्त करने का। तो इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, 1 रन न बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। साजिद जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए गेंदबाज नौफल, और फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 7 खिलाड़ी पेशकश के दायरे के अंदर मौजूद पावर प्ले के अंतर्गत, और इस बीच गेंदबाज नौफल दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त ये गेंद साजिद के लिए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए रियाज ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, 1 रन बल्लेबाज को जरूर मिला। इससे पहले कि शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, फील्डर 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर, 2 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज नौफल इस वक्त तैयार अरशद बजाल के लिए। और जहां तक यंग फ्रेंड्स उर्वा के स्कोर तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त अरशद बजाल और साजिद को एक बेहतर शुरुआत देनी होगी अगर उन्हें एक बेहतर उनके अपने लक्ष्य तक पहुंचता है तो। और इस बीच अरशद बजाल सामना करने के लिए तैयार, और नौफल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, पैरों पर टकराए, और जहाँ तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त मिलेंगे 1 इट्स ऑफ द बैट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर। 3 गेंदें 3 सिंगल्स नौफल प्रदान कर चुके हैं, और अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, इस बीच साजिद सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद साजिद के लिए इस वक्त धीमी लेग कटर गेंद थी, गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूंकि ठीक तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रन बिना किसी नुकसान के। 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में नौफल फेंक चुके हैं, सिर्फ 4 रन इस वक्त प्रदान कर चुके हैं, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बीच नौफल ये गेंद स्वीप करना चाहा इस वक्त, नॉट करेक्ट दैट वन प्रॉपर्ली, इनफैक्ट दे गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल, डायरेक्टली हिट शाइन्स एट द नॉन स्ट्राइकर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा अब अंपायर तृतीय अंपायर की ओर इशारा करते हुए, नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। तो इस वक्त डायरेक्ट हिट शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर का फेंका गया, वह स्टंप्स को टकराता हुआ बिल्स डिस्टर्ब होते, और देखना है कि जब थ्रो स्टंप्सों पर टकराया था तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। तो शायद यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज बच चुके हैं, और नॉट आउट इज द कॉल एंड द बैट्समैन सर्वाइव सेफली होम। दाहिने हाथों पर द विकेट, एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में, और नौफल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और नौफल ये गेंद ड्राइव किया स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ फील्डर एट मिड ऑफ, एंड दैट इज द एंड ऑफ साजिद। So just wanted to heave the ball, in fact comfortably taken at mid off area, and he can't finish the gap as well, and because of that he paid the penalty for that.
So they lost their first wicket in the face of Sajid, caught by mid-off fielder. और एक बेहतर गेंद थी इस वक्त साजिद की, माफ़ कीजिए नौफल की साजिद के लिए, और साजिद ने गेंद को उछाला ज़रूर लेकिन सीधे मिड ऑफ फील्डर के हाथों में गेंद पहुंच चुकी है। पहला विकेट गिर चुका है 5 for 1 आफ्टर फर्स्ट ओवर। यंग फ्रेंड्स रुवा स्कोर्ड और एक बेहतर ओवर नौफल का यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो गेंदबाज इस वक्त अंसार गेंदबाज यहाँ पर प्रारंभ करते हुए दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस दूसरे ओवर का, तो फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, और कुल मिलाकर रन्स अभी भी उनके लिए चाहिए 52 रन, जबकि 42 गेंदें बाकी। 52 रन्स नाउ मोर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री आउट ऑफ देयर 42 रिमेनिंग डिलीवरीज, एंड द रिक्वायर्ड रन रेट 7.43 रन्स पर ओवर इस वक्त मॉनिटर पर दिखाई देता हुआ। अरशद इस वक्त नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद, माफ कीजिए अरशद स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है अजीम, जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, और अरशद बजाल इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। अंसार पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया अरशद ने, इस वक्त गेंद जाती वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद को फील्ड करते हैं फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ एक रन यहाँ पर प्राप्त करने का, और इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर। 6 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। और इस बीच अगली गेंद अंसार की, इस वक्त नए बल्लेबाज अजीम जो कि सामना करने के लिए तैयार। जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त एक साझेदार यानी पार्टनरशिप की यंग फ्रेंड्स उर्वा को सख्त ज़रूरत है, और इस बीच गेंदबाज अंसार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहता, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इनफैक्ट पॉइंट पर गेंद पहुंची, और सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज और टीम को मिलता हुआ, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। रन्स इस वक्त सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज को यंग बॉयज़ के, और अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त अंसार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अरशद के लिए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकलती हुई, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर। 8 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस वक्त अंसार फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त अरशद ने, लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, और स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। सिंगल रन एडेड टू द टोटल, एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 9 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और अजीम जो कि इस वक्त सामना करते हुए, और इस बीच अंसार अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया अजीम ने, गेंद को इस वक्त कवर पॉइंट पर आधी जब तक तेजी के साथ गेंद पर लपके बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और इस ओवर में कुल मिलाकर 2 गेंदें अभी भी बाकी अंसार के, और अंसार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद बजाल के लिए अगली गेंद। यह गेंद इस बार धीमी गेंद थी, इस वक्त गेंद को उछालना चाहा विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद तक पहुंचे, थ्रो किया नौफल ने, लेकिन यहाँ पर अरशद बजाल के पीठ पर टकराने के बाद गेंद जब तक बैकअप हो मिड ऑफ पर बल्लेबाज के पास मौका था इस वक्त 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 11 रनों पर। 11 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर ओवर इस वक्त प्रगति पर अंसार का, जिसमें अब तक वो सिर्फ सिंगल्स के रूप में 6 रन प्रदान कर चुके हैं, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अजीम के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद। ये गेंद लेग स्टंप पर आती है, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 2 overs completed, 11 on the board, 1 wicket lost, and 2 overs now belongs to the bowlers of Gori Young Boys. So 11 for the loss of 1 wicket। और जहाँ तक आने वाले दिनों के क्रिकेट श्रृंखलाओं का सवाल है, तो यंग फ्रेंड्स उर्वा की श्रृंखला 12 से 17 मई तक यहाँ पर खेली जाएगी, एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला। उसके बाद एक और क्रिकेट श्रृंखला मई 7 से लेकर 11, राइट फ्रॉम मई 7 to 11
one more fantastic tournament will be played at Hosangadi. In fact, it's a Mother India ground, Hosangadi. The tournament will be played, which is proudly organized by Good Luck Friends Pusot. Season 6, 11 Underarm day-night cricket competition. First prize winner will get 7 lakh cash prize along with the Good Luck Trophy, and runners will get 3 lakh cash prize with the Good Luck Trophy, and also many more prizes will be given by the organizers. In every team there will be 4 icon players of Manglore pool will play, and that match, a fantastic tournament, Good Luck Trophy 2025, is now coming up right from 7th May to 11th May on next month at Mother India ground, Kadambar. So this is the one more tournament, one more fantastic tournament announcement, and that will be coming up on the 7th May to 11th May on next month. इस बार गेंद को खेल दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर की दिशा में, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त स्वीप कर दिया था इस वक्त 2 रन के लिए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है, और जहां तक का सवाल है, अरशद और अजीम इस वक्त पारी के भागदौड़ को संभाले हुए। हालांकि पहले 2 ओवर में गोरियंगोस के गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन दिया है गेंदबाजी में, और इस बीच नौफल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट अरशद बजाल के ये अगली गेंद है, ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ना चाह, रन के लिए दौड़ पड़े काफी तेजी के साथ। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और विकेट कीपर जब तक गेंद तक पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। निस्संदेह जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, एक साझेदारी की इस वक्त जरूरत है यंग फ्रेंड्स उर्वा को। और जहां तक सवाल है गोरी यंग बॉयज के गेंदबाजी का, तो पहले 2 ओवर में जिस तरीके की बेहतर गेंदबाजी उन्होंने की है, आने वाले ओवर्स में भी उसी तरीके की गेंदबाजी को उन्हें करना है। और इस बीच ये गेंद इस बार हल्के मिसअंडरस्टैंडिंग गॉट वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। गेंद को खेलते ही कुछ हद तक फिसल गए थे अजीम, और इसे बिना देखे हुए अरशद बजाल ने रन लेने की कोशिश की, और आखिरकार यहाँ पर यह विकेट गिर चुका रन आउट के रूप में। देखिए किस तरीके से हुआ था, गेंद को खेला फिसल गए, और अरशद बजाल ने इसे बिना देखे दौड़कर आ गए नॉन स्ट्राइक रेट पर, और आसान सा रन आउट इस वक्त होता हुआ नॉन स्ट्राइक रेट पर। दूसरा विकेट गिर चुका है, आसिम बैक इनटू पेविलियन। नाउ यंग फ्रेंड्स उर्वा आर लुकिंग इन ट्रबल अ लिटिल बिट। इट्स 14-2। For the loss of 2 wicket. One more good batsman of young friends Urwa now comes out to the middle. Ajmal नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो नौफल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद बजाल सामना करते हुए। इस वक्त ये गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़कर आए, 1 रन दौड़कर तब तक दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर चुके। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और मैदान के चारों ओर अगर नजर फिर आए तो दर्शक इस वक्त नजर आते हुए, लगभग मैदान दर्शकों से भर चुका है, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसे जब वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में और भी वृद्धि होती जाएगी। एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम, वी आर जस्ट वॉचिंग राइट फ्रॉम आवर कमेंटेटर बॉक्स, और निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन मैच प्रगति पर इस वक्त, एक हाई वोल्टेज बात कहा जा सकता है यंग फ्रेंड्स और गोर यंग बॉयज के बीच। तो इस वक्त नौफल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अजमल के लिए, और ये गेंद इस वक्त अजमल के लिए स्वीप कर दिया इस वक्त गेंद को खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर की दिशा में 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्लोवर प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर यंग फ्रेंड्स उर्वा। 31 गेंदें बाकी, 41 रन चाहिए, 41 रन टू गेट फ्रॉम 31 डिलीवरीज, और इस बीच नौफल अपने ओर के अगली गेंद लेकर तैयार, अरशद बजाल
इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 10 रनों के ऊपर ये गेंद ऑफ द टोस गेंद को मोड़ दिया। इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक रियाज गेंद को फील्ड करे 1 रन का इजाफा हो चुका है। सिंगल टू एंड द ओवर, वन मोर गुड ओवर in Gori Young Boys point of view came soon, and 3 overs completed. After 3 overs, still the batsmen of Young Friends were searching for the right target. 17 for 2 after 3 overs. Exactly 40 runs required in remaining 30 deliveries. The asking run rate is now straight away gone up to exactly 8 runs per over. This is the match number 4 of this fantastic cricket tournament. KFC Champions Trophy 2025 is now progressing here, which is proudly presented by Kodical Friends Circle Registered. The celebration of their 35 years, they are organizing this fantastic cricket tournament in the name of KFC Champions Trophy 2025. Winners will get 60,000 cash prize along with the KFC trophy, and runners will get 40,000 rupees cash prize along with KFC trophy. And many more individual prizes will given the prize distribution ceremony, and that prize distribution ceremony will held right after the grand finale of this competition today night. और देखते हैं यहाँ पर KFC चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन यहाँ पर कौन बनता है। आज रात को इसका जवाब हमें मिलेगा। तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अंसार, फयाज माफ कीजिए, इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और चौथा ओवर उनके पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ अरशद बजाल। हालांकि जहाँ तक अरशद बजाल की बल्लेबाजी का सवाल है, आज अपनी शैली के आक्रामक शैली के व्यतिरिक्त वो इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए कुछ हद तक डिफेंसिव नजर आते हुए यहाँ पर रक्षात्मक तरीके का खेल अब तक वो खेलते हुए। और लेकिन उनके दिमाग में ये बात ज़रूर, उनके जहन में ये बात ज़रूर है कि अपने टीम को मंजिल तक पहुँचाना है, और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए वो क्रीज पर जमने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए। फयाज पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए विकेट के पर चूके, और वाइड का इशारा अंपायर का। स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड। couple of runs added to the total. 19 on the board for losing 2 wicket at the start of the 4th over. एक धीमा क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को इस वक्त मिल रहा है, और इस बीच फयाज दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट अब गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजमल के लिए इस वक्त तैयार। काफ़ी दूर दूर तक का फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास। और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। फयाज गेंदबाजी करते अजमल के लिए स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, जस्ट ओपनिंग द प्लेस ऑफ द ब्लेड, स्टीयरिंग इट अवे डाउन टू अ गली फॉर अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 20 रनों पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। अरशद बजाल एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं, इस वक्त फयाज की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट फयाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। अरशद बजाल के लिए गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, लेकिन वहां पर फील्डर नहीं, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है। इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ मैक्सिमम। तो बेहतर स्ट्रोक फ्लैटर वर्जन पर गेंद को उछाला था अरशद बजाल ने, और देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को उछाला था। Have a look at this in the replay, और इस बार देखिए absolutely fantastically struck, just a flatter version and just he stand and delivered 6 runs, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 26, और ये छक्का इस वक्त लगभग यंग फ्रेंड्स उर्वा को इस मैच में वापस ला चुका है। तो गेंदबाज फयाज छक्का प्रदान करने के बाद देखते हैं अगली गेंद पर किस तरीके का कमबैक वो करते हैं यहाँ पर। और इस बीच गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार। अरशद बजाल के लिए स्वीप कर दिया इस वक्त, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंचे। 1 रन का इजाफा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। नाउ the situation seems to be much easier now for young friends Urwa, all because of that 6 which hit by Arshad Badal couple of deliveries back। रजमल इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं, तो इस वक्त तो सामना करेंगे फयाज की गेंदों का। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद फयाज इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट स्वीप करना इस बार स्वीप करना चाहा था चूके, और आखिरकार गेंद लेग स्टंप से कुछ दूरी पर निकलती हुई बेहतर गेंद थी गेंदबाज फयाज की, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 26 बॉल्स रिमेनिंग, 30 रन रिक्वायर्ड नाउ। और इस बीच गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फयाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात, 1 रन मिलेगा।
28 for the loss of 2 wicket. Last ball left in this over. 28 for the loss of 2 wicket. तो इस बीच एक गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर में, और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, फयाज इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, और सामना करते हुए अरशद बजाल। कुल मिलाकर 11 रन इस ओवर में अब तक बन चुके हैं, और इस ओवर के अंतिम गेंद लेकर फयाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अरशद बजाल के लिए अगली गेंद। यह गेंद उछाला स्ट्राइक ऑफ द ग्राउंड, और गेंद इस वक्त लंग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स उर्वा आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द गेम। नाउ have a look at this in the replay, just stand and delivered, and he just got that one right from the middle of the bat. अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 34 रनों पर। नाउ 23 रिक्वायर्ड फ्रॉम 24 डिलीवरीज, और अरशद बजाल सिर्फ स्ट्रोक्स को खेलने के बाद गेंद को देखते रह गए, और गेंद छक्के के लिए सीमा रेखा के पार हो चुकी है। 23 टू गेट फ्रॉम 24 डिलीवरीज। 2 छक्के इस ओवर में अरशद बजाल ने झड़े, और इस 2 छक्कों की बदौलत यंग फ्रेंड्स उर्वा इस मैच में वापिस आ चुका है। तो 24 गेंदें बाकी, 23 रन चाहिए। 23 टू गेट फ्रॉम 24 डिलीवरीज। तो आइए नौशाद जी, नहीं सतीश, आइए इस वक्त माइक्रोफोन पर। 2 छक्के अंतिम ओवर बने, 17 रन फ्रॉम द लास्ट ओवर, एंड बिकॉज ऑफ दैट लास्ट ओवर यंग फ्रेंड्स उर्वा आर नाउ बैक इन द गेम। लेकिन अभी भी मौका है गोरी यंग बॉयज के लिए। अगर अरशद बजाल का विकेट उखाड़ते तो शायद वो इस मैच में वापस आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त कमबैक करने के लिए गोरी यंग बॉयज के गेंदबाजों को एक कड़ी मेहनत मुशक्कत यहां पर करनी होगी। सतीश। Thank you, Gopi. Yes, you are already exactly. You are mentioned about that. The wicket of Arshad Bajal definitely is going to be very important for Gori Young Boys, and that's what I am told, Gopi. When it's a target which is set by the team Gori Young Boys, I already mentioned they have to deal with some informed batters in the side of young friend Urwa. And start up the over number. This time chance of run out. It's going to be a close one, but umpire says not out. I'm not saying the close one. If it is a direct, it definitely is a close one. After collecting the throw, then uprooting the stump means Arshad Bajal absolutely is in. Is absolutely is in. Just have a look at the replay. Just steers the ball down to third man, short third man. Good piece of fielding from the fielder, but they need to hit the stump, isn't it? You have to get the direct hit if you wanted to get the result. Because of that ball which is came into the hands of wicketkeeper, it takes time to uproot the stump, and Arshad Bajal managed to complete that quick single and risky one. 35 for the loss of 2 wicket. And just like I mentioned, Gopi, the informed batter like Arshad Bajal, Sajid, of course once they got the wicket of Sajid, looks like Gori Young Boys, they are strongly back in the game, because a huge wicket for Gori Young Boys when they picked up an informed batsman Sajid's wicket. But after that, have a look at the way that Arshad Bajal is handling the pressure. This is what you call the maturity from this man. Is very cool and calm, and once the time is required for him to talk with his bat, hit 2 massive sixes and changing the game outside the line of off stump. And Adi, the young Adi, brought into attack from the far end. The first ball, it's looked like it's come from the bat of Arshad. He picked up a single now. Both the batters now realizing that no need to panic at all. Just a rotation of strike is good enough for them to win the match. So have a look at the crowd here. Absolutely, this is going to be a good crowd after a long time of witnessing here in the UCG cricket ground. And they know exactly the KFC Champions Trophy with one more prestigious tournament they're going to witness. This time across the line, Ajmal just wanted to get that strong sweep shot in that occasion. Ajmal wanted a second, but Arshad Bajal is not interested. Hot temperature, of course, it's not so easy to tackle with this very hot temperature here. Is running between the wicket is always going to be a very, very difficult in this situation like this. So 37 for the loss of 2 wicket, and Arshad Bajal will go to take Adi. This time sensible, absolutely sensible here from this time again the chance of run out, but again the throw which is coming from the fielder is a little bit wide, and they completed a single as well. So both the batters now dealing with the singles in this particular over of Adi. They know exactly not to lose the wicket. Giving 1 wicket here is definitely giving opportunity for the team Gori Young Boys, but Gori Young Boys desperately required wicket here. Adi. Ball system, appeal for leg before wicket, but I think it's from the bat. No, it's a leg by call by umpire. It might be the ball is going to miss the leg stump with seeing the turn of the ball as bowler coming wide of the crease.
and shape of the delivery just definitely going to miss the leg stump, and even Ajmal is stretching his front foot too much, and no chance of any leg before wicket. 18 required from 19 balls. So far quite over, just a singles came from this over. This time wanted to go for the expansive switch it, very lucky indeed. Last moment Arshad Bajal is going to bat into that, and after that the hit is just having some friendly touch with the Ayangadi, saying that well bowled man, you bowled very well in this over. I request the captain of Kana, please come to the commentary box immediately for the toss, and captain of NM Cricketers Mangalore waiting for you. Kana Tandada Naik Adarsh Bega ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So 17 required from 18 balls. Discussion is going on here. Gori young boys desperately required one good over here, and the good over in the sense economical plus wicket taking over is very important for them to back in the game. So a lot discussion is going on, and after a long discussion they just wanted to keep their experienced bowler Ansar to come and bowl to get some wicket here. Wait and see. So young friends, whenever they're going to forget that two tournaments they're missed out in a close encounter. One is JD Trophy 2025 in that close encounter in the semi-final when they are cruising to wickets. When the batter Arshad Bajal is in the strike, and even in the MSC Trophy Mudabidri also in that close encounter in the semi-final, and because of the catch, the two catches which is really taken the victory from my young friends Urwa. And that I want to say that how important, if you have got a very good fielding unit, then you can change the complexion of the game. And Arshad Bajal in that MSC Trophy also, being the batter till the end, couldn't manage to finish the match for his team. And that match is ended in tie and in a super over. Again, the team Torpedos Kana, the managed to qualify for the finals. This is all the history what we are talking about. And two catches, which is one is taken by Mansoor in that SVS Trophy. The catch of Sajid changing the game, and then in Mudabidri, the catch of Sharan changing the game. And now here in KFC Trophy, UCG, will it going to be any dramatical change here in the game, in the catch? Wait and see. This time slashes, but slashes just over that of the fielder. Then Tyagaraja is running back, and before the throw will going to come from one of the fielder, the ample time for Arshad Bajal to complete that couple of runs. With that couple of runs, scored numbers under 42 for the loss of 2 wickets. Once again, he is playing an important knock here. Arshad, 29 in just 17 deliveries, but job which is not yet over. This time slower one, just wanted to go for the powerful shot into his favorite area, deep square leg, but didn't got that much of proper connection. Good change of face there from Ansar, but sometime it might be a little bit dangerous trying that slower one for the batter like Arshad Bajal. 14 required from 16. Ajmal the batter. He's now a key batter for the side of young friends Urwas. When the situation like this, this man is definitely going to be more effective when the rotation of strike is concerned. Here is Ansar. Bowls. This time pushes the ball, going for the single chance of run out, and again missed the stump. So many times the opportunity is created for the run out for the Gori young boys, but still they are not getting a success. 13 to get from 15. What I am just remembering Arshad is that he's so good, he takes the match till the end, but problem for in the last 3-4 matches I am observing him, he couldn't manage to finish the match. That's what you need to do. You have to learn from the mistake what did in the previous 3-4 matches. Again slashes it hard, beautiful shot. Again in the gap towards the deep extra cover. Again the couple of runs. This time I think what I am talking about Arshad Bajal is this is what I am to see, love to see the from cricketer. The mistake is common, but learning from the mistake is very important. Now Arshad Bajal realizing that I can't do the mistake after taking my team to this level. I have to finish the match for my team. Now 11 to get from 14. Now Gori young boys slowly looks like they are lost their grip over this match unless and until if they couldn't manage to get the wicket here, it's difficult for them to win this match. Torpedos Kana ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ Ansar right arm around the wicket. Improvisation. What a shot there from Arshad Bajal. This is a typical Arshad Bajal for you.
What a batting display from him. One of his favorite ground, isn't it? The 50 comes up with that boundary for team young friends Urwa. Just have a look at that one. Minimum effort and maximum result. Just using the face. Have a look at that improvising sweep shot. This is what all about the present cricket. Clever cricket. Fine leg inside the ring. Once you get past that short fine leg fielder, quick outfielder in USG cricket ground, the ball will going to do the rest. Outside and off ramp and going to be wide. So Bashir of KGF already announced rupees 2,000 for Arshad Bajal for his 2-6. And here is again swept the ball very nicely down to deep square leg region. They wanted to come back again. Oh, this time excellent running between the wicket. Arshad Bajal calling his partner Ajmal. Ajmal was surprised. Is that he's calling for the second run? Oh yes, he is calling for the second run, and then he responded. So 53 for the loss of 2 wickets. Just 4 runs required for the victory for young friends Urwa in remaining 12 balls. Four required from 12 balls. Now Arshad Bajal leaving the field. He's leaving the field. This looks like he's absolutely exhausted with that. The temperature what he having today, because he running with the wicket is concerned, it's not so easy. The last and final call for captain of Torpedos Kana to report to the commentary box. So already 4 runs required for the victory. You have to finish the tossing ceremony. Please understand. So Arshad Bajal is back in the pavilion in the form of retired out. He cannot come to the crease because he left the crease and is back in the pavilion now. 4 required for the victory. Rajesh, one more left-hander replacing the left-hander Arshad Bajal. Just 4 required for the victory. Adi, the bowler, the young Adi, has got a huge future in underarm cricket and representing for the team like Gori Young Boys. Definitely, it will going to strengthen the bowling department of Gori Young Boys. Adi with the excellent bowling action. This time Ajmal swept the ball very nicely down to deep square leg region. Prajwal, the fielder in the deep square leg region, feeds the ball, and Ajmal has got a ample time to complete a couple of runs. Just a couple of runs required for the victory. 11 balls and 2 runs required for the victory. Fantastic chasing here for young friends. Once again, Arshad Bajal leading from the front, scoring the very important runs. This is going to be a yes, that's it. The wide call by umpire. Scores are levelled. Just 1 run required for the victory. NM Cricketers Mangalore captain won the toss against team Torpedos Kana for the one more high voltage match will going to commence after this. Just a formalities left in this game now. Adi. Ajmal, this time serve the ball. That's it. This is a winning run here for the young friends who are comprehensive victory with the boundary. Ajmal finishes the things off in a style with the boundary. A little bit shuffled across the line of delivery and played that exquisite sweep shot. Congratulations for young friends who are once again dominated performance. This is the match summary. Just like in international standard, we are having in Bedra Media. After the match, there will be a match summary. It's very important. Gori Young Boys, they batted first, scored 56 for 9. Highest score from the bat of Freetham scored 12. Tyagaraja 11 and Prajwal scored 10 runs. But they lost the momentum after that. The bowling, Karthik picked up 2 wickets for just 2 runs. And Ashwit, Ashantosh picked up 2 and Arshad picked up 1 wicket. And young friends afterwards chasing the runs. Only because of Arshad, one who dominated in the batting and scoring a valuable 38 runs in 21 deliveries with the help of 1 boundary and 2 massive sixes. And he taken 1 catch, so he deserved the man of the match award as well.
So man of the match, which is goes to once again Arshad Bajal for his once again fighting knock from him and scoring runs once they lost the wicket of Sajid. All thought it might be a close encounter, but Arshad Bajal once again, the man in a terrific form, did the job for his team, and they're playing in their favorite ground. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಲ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಲ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗೌರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Next match is high voltage match. NM Cricketers Manglore takes on team Torpedos Kana, and definitely this is going to be one more close encounter, and that's why we are witnessing some good crowd here to watch this match as well. So the time progresses, their excitement of this tournament is absolutely going higher and higher. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಸಂಘಟಕರ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request Ajit of KFC please present the man of the match award for Arshad Bajal for his wonderful performance. He will going to receive 2 liters of soft drinks and gift discount voucher from 10F3 Sports. 10F3 Sports giving that 50% discount voucher along with the man of the match award, that is soft drinks. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದವರು ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಜಿತ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. ಹಾಗೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. A lot of big tournament which commence, and as we are talking about in our neighboring district, Kasaragod district, a huge tournament will go into commence. The record number of cash prize, we are talking about 7 lakh cash prize for the winners and 3 lakhs for the runner-up. We are talking about Good Luck Friends Club Posot presenting Good Luck Premier League 2025 Season 6 day-night cricket tournament organized on May 7 to 11, 2025 in the Mother India cricket ground Kadambar, and in that tournament 4 icon players from South Kenda district top ranking teams, they will go to represent the 4 players in each teams
so that it's going to be a fantastic contest, having the players from South Kenda district and having players from Kasaragod district. Definitely it's going to be a great concept from organizer organizing such a big tournament. 7 lakh cash prize, 3 lakh will going to be a second cash prize. 7 lakh will be the winner's cash prize with the attractive trophies. ದಯಮಾಡಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ we will take a short break here, and after a short break we are coming to the one more big match, NM versus Torpedos Kana. I request Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you. We get what we did, and we're down we go, 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 go. We're down we go, 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 go. ಅಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರಬೇಕಾಗಿನಂತೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳೋ ಕೊಠಡಿಗೆ. धन्यवाद सतीश. राइट, वन मोर बिग मैच इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट. एनएम मैंगलोर टेक्स ओवर टोर्पेडोस काना. और ताज़ा समाचार ये है कि एनएम मैंगलोर के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है. और दोनों आरंभिक बल्लेबाज टोर्पेडोस काना की ओर से एज यूजुअल बासित और अशरफ जो कि इस वक्त मौजूद. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो आतिफ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और बासित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. खासकर बासित जो कि विस्फोटक का शुरुआत के लिए माहिर है, इस वक्त पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. और
आतिफ एनएम के इस वक्त पहली गेंद, फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच इज नॉट कमिंग अप। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है, एक रन बिना किसी नुकसान के। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर बासित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि आतिफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद, और बासित इस वक्त आतिफ की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट आतिफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं, ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद वाइड का इशारा, एक बार फिर से 2 वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं आतिफ बासित के लिए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर है इस वक्त 2 रन बिना किसी नुकसान के। और आतिफ फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद बासित के लिए स्वीप कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गैप चुनते हुए डीप खोलने की दिशा में गेंद जाते हुए एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर, और थोड़ी सी मिसफील्ड के बाद जब तक शायद शाज फील्डर है गेंद को वो फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और इस बीच आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार बासित के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को खेलना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर। जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे, 4 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है टोरपेडोस काना को, अगर एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है तो। जहां तक एनएम मैंगलोर का सवाल है, उन्हें भी बेहतर शुरुआत की जरूरत है, लेकिन गेंदबाजी में बल्कि कम से कम स्कोर पर नियंत्रण करने के लिए टोरपेडोस काना के बल्लेबाजों को। और इस बीच आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बासित इस वक्त सामना करते हुए, लगभग मैदान दर्शकों से भर चुका है, एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम, वी आर जस्ट वाचिंग हियर। और दाहिने हाथ ओवर द विकेट आतिफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ का बल्लेबाज बासित के लिए, ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर, 5 ऑन द बोर्ड, यट टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। 2 लगातार वाइड फेंकने के बाद अपनी सही रिदम लय को प्राप्त करते हुए इस वक्त गेंदबाज आतिफ, और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, लॉन्ग ऑन फील्डर को थोड़ा सा इस वक्त सीधा तैनात किया गया है, लॉन्ग ऑफ भी सीधा, और गेंदबाज आतिफ अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, यह गेंद उछालना चाहा इस वक्त, लेकिन नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इन फैक्ट बाय अशरफ, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 6 ऑन द बोर्ड, यट टू लूज एनी विकेट, एंड दिस इज द फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। और आतिफ अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार बासित के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार बासित ने गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, जस्ट अ सिंगल ही गॉट, और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को सीधे हटाकर डीप मिड विकेट पर इस वक्त तैनात किया गया था, और गेंद उसी दिशा में इस वक्त मिड और लेग स्टंप पर आतिफ ने फेंकी थी, और बासित का स्ट्रोक पहुंचा डीप मिड विकेट पर, और इस बीच 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। अशरफ सामना करने के लिए इस वक्त तैयार आतिफ की गेंदों का, आतिफ गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हैं, बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवर, एक्स्ट्रा क्विक, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ओवर नंबर फर्स्ट हैज बीन केम्स टू एन एंड। और पहले ओवर के समाप्ति के बाद एक बेहतर ओवर कहा जा सकता है आतिफ का, जिसमें सिर्फ 7 रन उन्होंने प्रदान किया, और पावर प्ले के अंतर्गत जब बासित और अशरफ जैसे बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हो तब 7 रन प्रदान करना यकीनन एक बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर कहलाएगी जो आतिफ ने इस वक्त की है। और जहाँ तक का सवाल है दूसरे ओवर का, दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए मुजीब, आमतौर पर मुजीब गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं एनएम के लिए, लेकिन यहाँ पर आतिफ को पहली ओवर सौंपी गई थी और समर्थ रूप से उस जिम्मेदारी को गेंदबाजी में निभा चुके हैं। आतिफ सिर्फ 7 रन पहले ओवर में प्रदान कर चुके हैं, तो इस वक्त एसेंट एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए मुजीब, और बासित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, मुजीब ओवर की पहली गेंद बासित के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट,
ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा की और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। स्वेप्ट इट वेल बाय बासित, मिड ऑन लेग स्टंप पर गेंद थे और यहाँ पर गेंद को जिस तरीके से स्वीप किया, देखिए यहाँ पर क्रीज के कोने से गेंद फेंके गए थे और स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, लेकिन स्ट्रोक में ज्यादा रफ्तार नहीं था, लेकिन स्ट्रोक गई थी इस वक्त गैप पर। फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच, शॉर्ट फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच, दोनों फील्डरों के बीच इस वक्त गेंद जा चुकी है और 4 रन इस वक्त बासित प्राप्त कर चुके हैं। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर मुजीब इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज बासित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, डीप बैक थर्ड की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं, दूसरा भी रन पूर्ण कर चुके हैं। और इस समय के डीप बैक थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करे, फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर, 13 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर, 14 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और अपने ओर की अगली गेंद लेकर मुझे इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बासित के लिए ये गेंद, इस बार बासित ने गेंद को खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची संतोष बंटवाल के हाथों में गेंद, लेकिन इस बीच जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 15 रनों पर। रन इस वक्त खुलकर बनते हुए टॉर्पेडोस काना के लिए, धीरे धीरे ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर अपने कदम जमाते हुए और इस बीच मुजीब अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। निश्चित रूप से एक हाई वोल्टेज मैच यहां पर खेला जाता हुआ एनएम मैंगलोर और टॉर्पेडोस काना के बीच। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार मुजीब, यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, गेंद जाते हुए इस वक्त, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, आतिफ जो फील्डर है, सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर, 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए इस वक्त गेंदबाज मुजीब, मिड विकेट फील्डर जो हैं उन्हें थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात तक किया जा रहा है। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर मुजीब गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और बासित सामना करने के लिए तैयार। दर्शक मैदान पर लगभग भर चुके हैं और भरनी भी चाहिए क्योंकि एक हाई वोल्टेज मैच जो कि यहाँ पर खेला जाता हुआ। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर मुजीब तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा, काफ़ी तेज़ी के साथ एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकल गई और वाइड इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर। और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर, 17 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और इस बीच गेंदबाज मुजीब गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद इस वक्त उनके पैरों पर टकराई, हल्की सी अपील जरूर, लेकिन गेंद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और स्कोर रहा इस वक्त 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज मुजीब इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार बासित के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बासित ने गेंद को खेला, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, फील्डर वहां पर शायद मौजूद है, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा इस वक्त, लेकिन थ्रो को रिसीव करने के बाद जब तक विकेटों पर निशाना दागे और निशाना उनका चूकता हुआ और बल्लेबाज बेहतरीन रनिंग के द्वारा दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। couple of runs added to the total, 19 on the board, 2 overs completed, 2 ओवर के समाप्ति 19 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। एक बेहतर प्रगति यहाँ पर करता हुआ टॉर्पेडोस काना और 2 ओवर कहना पड़ेगा belongs to the batsmen of Torpedos Kana who managed to score 19 runs in the first 2 overs. 12 runs came from the last over from Mujib और 6 ओवर का खेल अभी भी उनकी पारी में बाकी। Next match, Team Matrix will take over the host team KFC Kodical, and because of that I request all the players of these 2 teams to please report to the stage to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ KFC ಹಾಗೂ KFC Kodical ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो गेंदबाज आतिफ अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए अशरफ, और अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा एनएम के गेंदबाज अपने पहले विकेट की तलाश में।
2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और आतिफ ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करते हुए इस वक्त अशरफ। फर्स्ट बॉल कम्स राइट आर्म ओवर द विकेट फ्रॉम आतिफ टू अशरफ। ये गेंद इस बार उछाला लॉन्ग ऑफ पर और पहले विकेट की जो तलाश थी वो तलाश इस वक्त पूरी हो चुकी है और लॉन्ग ऑफ पर इस कैच को लपक लिया गया फील्डर द्वारा। तो आखिरकार पहला विकेट इस वक्त मिल चुका है एनएम मैंगलोर को और पहला विकेट खो चुका है यहाँ पर टोरपेडोस काना। बल्लेबाज अशरफ ने गेंद को उछाला जरूर लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और देखिए यहाँ पर आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया गया लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा। और 19 रनों पर पहला विकेट खो चुका है टोरपेडोस काना। अशरफ डिपार्ट्स एंड नाउ इट्स 19 for 1। तो पहला विकेट इस वक्त गिर चुका है। नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ शाकिर, एक और बेहतर बल्लेबाज टोरपेडोस काना की ओर से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त सामना करेंगे आतिफ की गेंदों का। और इस वक्त आतिफ फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार शाकिर इस वक्त सामना करते हुए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। शाकिर सामना करते हुए ये गेंद शाकिर ने गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए आतिफ और सामना करेंगे इस वक्त बासित। लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर कहना पड़ेगा, लॉन्ग ऑन भी मौजूद था। और इस बीच आतिफ के लिए ये गेंद इस वक्त गेंद को मोड़ दिया। आतिफ की गेंद पर बासित ने स्क्वायर लेग पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े काफी तेजी के साथ। दिस इज एन एब्सोल्यूट फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट। जैसे ही फील्डर को धीमे पाया इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर कि फील्डर धीमी गति से गेंद पर पहुंच रहे हैं, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज बासित दौड़ पड़ा और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ। और आतिफ एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और आतिफ की ये गेंद फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है गली पर लेकिन यहाँ पर अपील जारी है और देखना है कि गेंद बल्ले पर लग कर आई है या सिर्फ पैर पर उनके टकराई थी। तो अपील इस वक्त जारी है और जहां तक सवाल है इस वक्त दोनों अंपायर नजीर ईडन और रोलान पिंटो जो है इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए और इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है। तो यहाँ पर देखते हैं तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार यहाँ पर देखते हैं। क्या गेंद सिर्फ पैर से टकराने के बाद फील्डर के हाथों में पहुंची थी या फिर बल्ले का कोई डिफ्लेक्शन हुआ था, यहाँ पर ये देखने वाली बात है। तो तृतीय अंपायर इस वक्त इसका परिशीलन करते हुए और यहाँ पर खेल कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बल्ले और गेंद का डिफ्लेक्शन हुआ था या फिर गेंद सिर्फ बल्लेबाज के शरीर पर टकराने के बाद गए थे।
I request Mr. Roland Pindo, please come to the stage. तो गेंद हाथ के ऊपरी भाग पर टकराई थी अंतिम क्षण में, और ऊपरी भाग पर टकराने से पहले देखना है कि गेंद उनके उंगलियों को, फिंगर्स या फिर बल्ले के किसी भाग को टकरा चुकी थी या नहीं, ये देखने वाली बात है। और तृतीय अंपायर अभी भी इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए। So no doubt is the call and the batsman survived. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज बासित यहाँ पर बच चुके हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विकेट गिरने से इस वक्त बच चुका है टॉर्पेडोज काना को, और उनके कप्तान निश्चित रूप से यहाँ पर प्रसन्न होंगे कि बासित का विकेट पिछले गेंद पर बच चुका है। और कुल मिलाकर यहाँ पर स्कोर है 22 रन तीसरा ओवर प्रगति पर, और शाकिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार आतिफ की गेंदों का। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, और आतिफ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त। गेंद जाते हुए शॉर्ट स्क्वायर लेग पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर। 24 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट in the over number 3 in progress. Still a ball left in this over, और बासित इस वक्त स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं। आतिफ की ओवर की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर था विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी इस वक्त आतिफ की, और 1 रन का इजाफा। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 25 रनों पर। 25 for 1. Good over came from Atif. 3 overs gone, and after 3 overs still Torpedos Kana looking in a good situation. In fact, it's 25 for 1. 6 runs came from the last over from Atif, and a good spell came from him. 2 overs no maiden, 12 runs and 1 wicket from Atif, and 3 overs after completion of 3 overs, it's 25 for 1. तो मुस्तफ़ा इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए, चौथा ओवर शुरू होता हुआ यहाँ पर टॉर्पेडोज काला की पारी में बासित सामना करने के लिए तैयार। पहले ओवर में 7 रन बने, दूसरा ओवर काफ़ी महंगा था जिसमें 12 रन बने मुजीब के, और उसके बाद तीसरा ओवर वापस आतिफ ने फेंका जिसमें सिर्फ 6 रन उन्होंने प्रदान किए, और अब चौथा ओवर शुरू होता हुआ और मुस्तफ़ा इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए। तो फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बासित था, और खासकर अशरफ का विकेट गिर जाने के बाद इस वक्त बासित और शाकिर पारी के भागदौड़ को यहाँ पर संभाले हुए
अपने टीम के लिए एक बेहतर साझेदारी निभाने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक एनएम का सवाल है, इस वक्त चंद विकेटों की उन्हें इस वक्त सख्त ज़रूरत, खासकर बासित का विकेट उन्हें उखाड़ना इस वक्त बेहद ज़रूरी बन चुका है। पहले गेंद मुस्ताफ़ा की कटर गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन पर ऑफ द टोज। और जब तक गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा हो चुका है। 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। मुस्ताफ़ा अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए शाकिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद शाकिर के लिए हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त, स्टंप्स एक्सपोज करने के बाद उन साइड पर टिप स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद फील्ड हो, 1 रन का इजाफा हो चुका है। 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 स्टार्टेड जस्ट शॉट फॉर लेग। 2 बेहतर गेंदें गेंदबाज मुस्ताफ़ा इस वक्त फेंक चुके हैं। अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, और बासित इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। मुस्ताफ़ा अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद बासित के लिए रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा लेकिन गेंद इस वक्त बॉटम में टकराने के बाद डीप थर्ड मैन पर जा चुकी है। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरे रन के लिए। बल्लेबाज यहां पर दौड़ पड़े हैं और दूसरा रन यहां पर पूर्ण करने में सफल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रन पर। बॉटम एज पर टकराने के बाद, निचले हिस्से पर टकराने के बाद गेंद इस वक्त फाइन निकल गई थी डीप थर्डमैन की तरफ, और 2 रन बल्लेबाज यहां पर प्राप्त करने में सफल। 29 बासित 19 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सामना करते हुए यहां पर यह गेंद, धीमी गेंद, फैंटास्टिक, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी। और बासित को पहले रिवर्स शॉट खेलने को भांप लिया था, और इस वजह से इस वक्त काफ़ी धीमी गति के साथ गेंदबाजी की इस वक्त मुस्ताफ़ा ने, और इस धीमेपन को बासित समझ नहीं पाए और स्ट्रोक्स खेलने में असफल रहे। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, और क्विकर गेंद थी, लेग स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है मुस्ताफ़ा का, जिसमें सिर्फ 4 रन अब तक पहले 5 गेंदों में वो प्रदान कर चुके हैं। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट, दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप एज वेल, जस्ट ओवर द गली फील्डर्स हेड। और काफी देर से जो स्ट्रोक्स की वो तलाश में थे, कोशिश में थे बासित, इस गेंद पर वो स्ट्रोक को प्राप्त करने में सफल। रिवर्स शॉट के जरिए खूबसूरती के साथ गेंद को स्कूप कर दिया गली फील्डर के सिर के ऊपर से, डीप बैक थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर गेंद, 4 रनों के लिए बेहतर स्ट्रोक। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस चौके के साथ 33 रनों पर। देखिए किस तरीके से स्ट्रोक को खेला था, क्लीन हिट, एंड ही जस्ट क्लियरिंग द फीडर एट गली। और ओवर नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है। 4 overs completed, 33 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट, हाफ द वे मार्क, स्टिल हाफ हैव टू गो। और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में टोरपेडोस काना के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, आगे का खोदेकाल सुनाने के लिए एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अगला 4 ओवर का हाल जिक्र करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. 33 for the loss of 1 wicket after completion of 4 overs. Fantastic partnership is in progress between Bashit and Shakir. And the first ball of the over number 5, the experienced campaigner Faisal brought into attack, and he starts with a dot delivery. Shakir just tried to get that one into the mid-off region, but fails to make any gap there. Played it back to bowler, not for run. Second time in this over. This time improvising that one by playing that improvising sweep shot down to short fine region for a single with that single scope, but moves on to 34 for the loss of 1 wicket. Bashit is a batter once again, is again talked with this bat in this match as well. 23 already he scored in just 17 deliveries, and what a form he has got in this particular season. Again he's almost inching towards 1 more quarter century behind his name. This time wanted to force that one into the long on, but couldn't manage to get that placement right. Good bowling there from Faisal so far. He's keeping that tight line and length. Of course, he's not tried to ball that quickly, but he's just keeping the line and length. It's very important in this condition like this, when the ball is soft in the nature, not to ball quick. This time again, lovely shot. Sweep shot comes into play, and powerful sweep shot. They wanted to come back for the second. In comes the throw, and Bashit complete a couple of runs. Then another 25 in his name again for Bashit. Just like I mentioned, what a tournament, what a season he is having from the bat. Again scoring some runs. He is absolutely a humble person, and every time is into the crease, he loves to bat long time, and try to get some good runs from his bat.
with a very good strike rate. This time, oh, what a walk. Oh, now, my goodness, I want to see what happened in that particular appeal coming from Asif. Adur is asking for umpire for the stump out. Just I want to see it in the replay. Went for the reverse sweep. At one stage, wow. Now I have to see that one first attempt is made, then his back foot is inside the crease, might be. And when the second attempt he uprooted the stump, then I have to see that the batter is safe or not. Now it's going to be very close call for the third umpire. Not out is a call from the third umpire and is safe. Second attempt also is safe. When first attempt is made, is back foot is inside the crease, and the second attempt also when Asif made that run out, that time is inside the crease. So is safe then, no damage done. And 36 for the loss of 1 wicket. Over number 5 is in progress. So last delivery remaining here. Bashit, the batter, is batting on 25. Great over from the point of view of NM Cricketers Mangalore. Just 3 runs came from this over from Faisal. And again, experienced bowler doing the job here for the team, NM Cricketers Mangalore. This time wanted to go for the big shot. What a fantastic over there from Faisal, which is comes to an end. Just the 3 runs coming from this over. The much required quiet over, economical over from Faisal. After completion of 5 overs, still Torpedos Kana are looking in good position. They are 36 for the loss of 1 wicket. Now 3 overs remaining in the innings, and wait and see how much target Torpedos Kana will go into set here. So coming back to these 2 teams in the particular season, of course Torpedos and Kana, they're clinching 3-4 titles in this season. Especially the end of the season is good for the Torpedos Kana. JD Trophy they won, and then they came into MSC Trophy. They become the runner-up. They won the SVS Trophy, the Youngster Trophy as well in the Wamada Padav. Now, this is a major tournament for NM Cricketers Mangalore, I want to tell you, because they absolutely wanted to come back to winning track. They at least wanted to finish the season 24-25 with the one huge victory here. So that even though having a lot of competition, but NM Cricketers Mangalore has got a potential of bouncing back. It is all happening when you are in a back foot. Its comeback is not so easy, but you not lose your heart. You have to give your 100% in each and every tournament. They wanted to get this time. Switch it comes into play and played it just over the head of the fielder. And before the fielder will go and run back and field the ball, ample time for the batter to complete the single. Mustafa, the bowler, brought into attack. Shakir doesn't get proper connection for that switch. It got into the top edge and just clearing the infield. 37 for the loss of 1 wicket in the over number 6 is in progress. Mustafa, the bowler, who can be very effective, I want to tell you, particularly in this condition, and seeing the condition of the ball which is used for the tournament. The bowlers like over getting some flight and spin in the delivery, that can be effective. Of course, even under floodlight, definitely the more effective. Even daylight, if we see that most of the spin bowlers are got some success. Just think about under floodlight, that can be what we are talking about. A lovely delivery, chance of run out, again they missed it. Now I think the ball is got an inside edge of the bat, of the batter of Bashit. So Asif couldn't manage to collect the ball properly, and
Have a look at Taufik. Absolutely good camera work. This is beautiful. We can see here an upsetting picture in this screen there. The disappointment face here from Taufik as he just missed the stump. Coming to, oh, one more big miss. My goodness, can you believe this? Now umpire called it by, no bat involved, but opportunity which is missed out by the wicket keeper. So, this is what happening when the batter is shuffled across the line of the delivery here and there. It's not so easy for the wicket keeper also. And we are watching here is that Asif just missing this opportunity to make the stump out. 39 for the loss of 1 wicket. Mustafa Wal system, nice looking drive towards the mid-wicket region. The fielder is in the deep, but not more than a couple of runs here for Bashit. Again, he is running hard between the wicket as well. It's been an absolutely difficult condition for the players. And now in this difficult condition, running between the wicket is always going to be a big challenge. It's a 28 is individual score now. 41 for the loss of 1 wicket, the total score. Coming down the track, this is what I'm saying, that the stroke which is attempt from the tired man. Like by call by umpire, when you are too much tired and lost your energy, then you are just wanted to leave the crease by trying for the big shot. What happened in the previous delivery, Bashit? This time improvisation, just defeat the field, fine leg fielder Taufik running back and field the ball. Again, the ample time for the batter to complete a valuable couple of runs. So with that couple of runs, score number moves on to 44 for the loss of 1 wicket in the over number 6, which is comes to an end. 2 overs remaining. Good going here for Torpedos Kana, and NM cricketers Manglore have to get another 2 good overs here if they wanted to restrict their opposition less than 55. Just I want to say, definitely they can have the game in their hand. Projected scores showing 59, and they have to restrict them not to get that 59. And 60 plus runs is definitely going to be a psychological advantage for Torpedos Kana. 44 for the loss of 1 wicket. Faisal brought to the attack, and after that, a fantastic first over he bowled from the BMR group end. Now he's brought into attack, bowled his second over, and wait and see how he's going to bowl this second over. This time, appeal for leg before wicket. Umpire says not out. Very interested to see the decision of umpire. Umpire says no decision means is definitely the ball which is hitting the handle of the bat, or I think it's from the opportunity for catch as well, and. It's from the bat. 45 for the loss of 1 wicket in the over number 7 is in progress. This time single-handed reverse sweep, delicately played there by Shakir. He coming back for the second. He's a good runner between the wicket and quite easily managed to complete that couple of runs. Really, sometimes it will going to frustrate the bowler. The kind of the technique what Shakir is implementing, walking down the middle of the pitch and using his single hand by playing the reverse sweep. It's absolutely very difficult for the bowlers where to bowl, and again this time I played it down to square leg region for a single, and almost is halfway down the track is this, and what you call the walking stroke, and just like what Shakir is loves to play always. The 47 for the loss of 1 wicket. This time Bashit wanted to go for the expansive drive. Doesn't get hold up then properly. Again they're coming back to the second chance of run out in the non-cycles, and wide throw coming from the fielder. My goodness, the fielder is absolutely has got not a good idea to throw that non-cycles end. It's definitely the opportunity for the run out in the cycles end. Because Bashit is a tired man. He can't run quickly. It's a slight bit of a presence of mind sometimes required from the fielder who are fielding in the outfield. 50 comes up for Torpedos Kana. This time, that was a stroke of the tired man. This is a stroke of the tired man, I want to tell you, but what innings he played by Bashit again. The captain's knock. After he's been given a responsibility to run, Torpedos Kana, being the captain of the side, is always leading from the front. Again, what a fantastic knock coming from him. Excellent one under difficult condition.
where it's not an easy condition for the players. And Bashit once again is the man is leading from the front. Played a captain's knock again, scoring 31 valuable runs in just 26 deliveries with the help of only 2 boundary, but all the runs which is scored by placing the ball here and there, single and couple. Now the fantastic striker of the ball, the one more batter is in form for Torpedos Kana, Sinan, useful batter in the middle order. Every time when team is required some big shot, he is the one. Sinan absolutely produced many good innings for his team, especially in this particular season 24-25. Excellent striker of the ball. Faisal, so far in this over he conceded 6 runs. The next match will be played between Team Matrix versus KFC Kodical. I request the players kindly request it. This time Flum in front of wicket, no doubt at all. What a bowling performance here from the experienced Faisal. When other bowlers are struggling, this man is absolutely showing his excellency. And a fantastic over, one more good over which is comes to an end here from Faisal. 2 overs, no maiden, conceded 9 runs and picked up 2 valuable wickets. Again, great bowling figure from experienced bowler Faisal. 4.5, which is economy of him. Just have a look at that Faisal's last delivery where he got a leg before wicket. Absolutely flum. Everyone goes up, and even the finger of the umpire is also goes up. Umpire Roland Pinto is taking Harris and saying that is go quickly to the striker's end, and we are having a shortage of time. Please cooperate with us. 54 loss of 3 wicket, and last over remaining Mujib brought into attack. Is expensive in his first over, conceded 12 runs in his first over. Now in his second over, the last over of the innings. Umpire giving some suggestion. Maybe they are having a little time to complete their last over. Using his feet, Shakir didn't time it properly, but good enough for him to rotate the strike. One more single with the single scope, but more than 51 for the loss of 3 wicket. One more big contributor, Harris. I'm not talking about from the bat, but in a true matches for Torpedos Kana, every time when the last over, he bowled some magical last over for his team. Again, Silver Seapiece comes into play and played it down to Cow Point region. One more single. With a single score, but moves on to 52 for the loss of 3 wicket in the over. Number last is in progress. Mujib. Shakir tries, nice looking to stroke down to long on. The 2 is a goal, 2 is a goal. Ask him, Mujib, absolutely unnecessary. Unnecessary. You can see here the firework coming from their teammates, quite understandable. They are saying why to make the run out. We just wanted to restrict the runs. That's good enough in the last over, not to look for the wicket. And he misses the stump and provided the opportunity to come back for the second. Shakir again back on strike. 54 for the loss of 3 wicket. Again, played it nicely in the gap. Again, they will going to come back for the second quite easily. Excellent running with the wicket. Good innings there from Shakir again. 15 runs already scored in just 12 deliveries he faced. 56 for the loss of 3 wicket. And the over number last is in progress. 5th time this over. Again drives straight to the hands of mid-off Mansoor. The field directed might be the curtain in the innings of Shakir as Mansoor tried for that run out. The experienced campaigner fields well. 57 for 3. And last delivery of their innings, and umpire now Roland Pinto slightly turn around to umpire Mujib. The Shakir left the crease. One more batter. We can see that just like Arshad Bajal is dead. Now Shakir back on to the pavilion, retired heart. And
Chetan replacing him. Retired out, and 57 for the loss of 3 wickets. Here is the last delivery. Harris swings it hard into mid wicket. Oh, Faisal, excellent piece of fielding, excellent throw as well. He's been outstanding, Faisal, in this particular match, not only from the bowling but even in the fielding as well. What a throw coming from him, straight to the hands of wicket keeper. Just have a look at the Faisal. Even the ball is little bit deviated, changed the direction, but in his right hand he picked the ball and have a look at the throw from him. So straight into the hands of wicket keeper, and Harry is absolutely short of his crease. So that's it. The team Torpedos Kana are finished their innings of 8 overs and scored 58 runs and set a target of 59 to win the match in the stipulated 8 overs. They have to get for 59. The team NM Cricketers Mangalore. Once again, NM Cricketers Mangalore. Then the batters, definitely their temperament will going to be tested here. Getting a 59 against a formidable bowling lineup of Torpedos Kana, it's not so easy. But nevertheless, NM Cricketers Mangalore has got the potential in their batting department. Then the top order batsmen, once again, they have to perform if they wanted to win the match. The batter like Santosh Bantwal, the batter like Atif, Asif, and Taufik. All we can see that the big names in Underarm cricket, but having a big name is not important, but converting that big names in the performance is very important here to get that 59 runs for NM Cricketers Mangalore. So in the break, that the juice which is provided to the umpires, and that juice which is sponsored by Faraz Krishnapura, and no one is sponsoring a juice for the commentators. I'm just waiting for that. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಈ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕಬೀರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Heartily welcome to Mr. Kabir, the owner of Nazar 9th block team. Heartily welcome to you, sir, once again to this cricket tournament. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Right, the target is 59 for NM Mangalore set by Torpedos Kana, and the innings now going to start. और उनके पारी के पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज चेतन तैयार, जबकि संतोष बंटवाल और तौफीक
आरंभिक बल्लेबाज जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो खासकर ये दोनों बल्लेबाजों को एक बेहतरीन प्रदर्शन देना होगा बल्लेबाजी में। अगर 59 रनों के स्पर्धात्मक लक्ष्य तक पहुंचना है तो अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप। और देखते हैं यहाँ पर संतोष बंटवाल और तौफीक किस तरीके की शुरुआत यहाँ पर दे पाते हैं। चेतन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। संतोष बंटवाल जो कि सामना करते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट उनके पारी की पहली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, गेंद पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। निर्धारित 48 गेंदों में 59 रन बनाने हैं। 59 runs they have to score out of their 48 stipulated deliveries. That means in the stipulated 8 overs. और इस बीच चेतन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष बंटवाल के लिए अगली गेंद। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, इस वक्त गेंद पहुंची पॉइंट पर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है मैंगलोर के लिए। 1 रन बिना कैसे नुकसान के, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, एक बेहतर शुरुआत और खासकर 2 पावर प्ले ओवर्स का उन्हें इस वक्त फायदा उठाना है अगर उन्हें 59 रनों के स्पर्धात्मक का लक्ष्य तक अगर बढ़ना है तो। और इस बीच चेतन गेंदबाजी के लिए तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए तौफीक जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और दाहिने हाथ ओवर द विकेट चेतन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज तौफीक के लिए अगली गेंद। यह गेंद तौफीक का स्ट्रोक का, लेकिन गेंद पहुंची शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर। 2 ऑन द बोर्ड, 2 लूजिंग विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और चेतन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार संतोष बंटवाल के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद इस बार ऑफ से बाहर क्विकर गेंद थी, गेंद पर बल लड़ाया, शॉर्ट थर्ड मान पर गेंद पहुंची और इससे पहले कि गेंद को थ्रो करे फील्डर विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 3 गेंदे 3 रन बन चुके हैं और 3 बेहतर गेंदे इस ओवर में गेंदबाज चेतन फेंक चुके हैं और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार तौफीक। तो 4 गेंदे इस वक्त फेंके जा चुके हैं, माफ़ कीजिए 3 रन बन चुके हैं और 2 गेंदे इस ओवर में अभी भी बाकी। और चेतन फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पहला पावर प्ले ओवर राउंड की पारी का इस वक्त प्रगति पर। और चेतन अगली गेंद लेकर तैयार तौफीक के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज तौफीक सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला, शॉट थर्ड मान पर, रन आउट का खतरा इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर डायरेक्ट निशाना लग चुका है, लेकिन यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज शायद जी नहीं, अब तीसरे अंपायर के लिए यहां पर परिशीलन किया गया है। तो जहां तक सवाल है, जब स्टंप्सों पर टकराया था डायरेक्ट हिट, तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं या नहीं ये देखना पड़ेगा। और अंपायर ने जो कि तीसरे अंपायर के लिए यहाँ पर यह निर्धार सौंपा है और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन न करने के बाद क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। नॉट आउट इज द कॉल, द बैट्समैन सर्वाइव्ड। कोसो दूर, क्रीज को छूने के बाद कोसो आगे निकल चुके थे इस वक्त, कोसो आगे निकल चुके थे इस वक्त बल्लेबाज और 1 रन का इजाफा हो चुका है। हालांकि क्रीज से छूने के बाद कोसो आगे निकल चुके थे और इस गेंद पर बल्लेबाज बच चुके हैं 4 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर। चेतन फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार चेतन के लिए सीधे पहुंची इस वक्त टेक्स्ट कवर फील्डर के हाथों में और इसी के साथ संतोष बंटवाल की पारी पर पर्दा गिर चुका है। स्ट्रोक्स को खेला था, हालांकि गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को उछाला था, लेकिन सीधे पहुंची इस वक्त एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में गेंद। देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था और आसानी के साथ गेंद को लपक लिया गया एक्स्ट्रा कवर फील्डर शरण द्वारा और 4 रनों के ऊपर पहला विकेट गिर चुका। संतोष बंटवाल आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए इज आउट फॉर 2 एंड फर्स्ट विकेट लॉस फॉर मैंगलोर। इट्स 4 for 1। ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದವರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆ, 2ನೇ ಕರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
This is the second call for all the players of Team Matrix. Please to report to the stage immediately to make a sign in the official chart. आतिफ का आगमन हो चुका है नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद। पहला ओवर भी समाप्त हो चुका है। 4 रन बेहतर ओवर संतोष का, माफ कीजिए, बेहतर ओवर चेतन का समाप्त हो चुका है। और शरण गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए और तौफीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 55 रनों की और दरकार बचे हुए 42 गेंदों में। 55 more runs now they have to score for victory in their remaining 7 overs. That means 42 deliveries. और शरण इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए और तौफीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दर्शकों से मैदान लगभग इस वक्त भर चुका है और निश्चित रूप से भरनी भी चाहिए, क्योंकि एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला KFC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए और एक हाई वोल्टेज मैच यहाँ पर प्रगति पर मैंगलोर और टॉर्पेडोस काना के बीच इस बेहतरीन इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है। कोडिकल फ्रेंड सर्कल रजिस्टर्ड अपने 35वीं साल पूरे करने की खुशी में द सेलिब्रेशन ऑफ द 35 years they are organizing this fantastic cricket tournament in the name of KFC Champions Trophy 2025. Sharan panic again, lost it, this time not quite get that one. और शरण खुद फॉलो थ्रू में इस कैच को लपकने में सफल। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट प्लेड दैट वन टू अर्ली एंड द बॉल केम क्वाइट लेटली। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, गेंद को उछालना चाहा लेकिन कुछ हद तक तेजी से बल्ला अड़ाया जरूर, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं हुए और स्वयं शरण ने अपने बाईं ओर जाकर इस कैच को आसानी के साथ लपक लिया। दूसरा विकेट गिर चुका है। तौफीक आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और निश्चित रूप से मैंगलोर इस वक्त संकट की स्थिति में नजर आता। वाइट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। दे आर इन ट्रबल नाउ। तो दूसरा ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है। दूसरा विकेट गिर चुका है और आउट होने वाले बल्लेबाज तौफीक आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ आसिफ अडूर, जो कि इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी इन क्रिकेटर्स के इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी और शरण अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज आसिफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और इस वक्त शरण अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार आसिफ के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज आसिफ के लिए अगली गेंद। ये गेंद ओह फैंटास्टिक लेग कटर डिलीवरी। इस वक्त गेंद अपील जारी है जोर से। शरण काफी देर तक अपील करते रहे लेकिन आखिरकार इट्स ऑफ द बैट, इज गॉट अ बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, वरना निश्चित रूप से एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट कहलाता। तो बेहतरीन लेग कटर गेंद इस वक्त फेंकी थी शरण ने और गेंद लगभग बल्लेबाज के पैर पर टकराई। अगर बल्ले का डिफ्लेक्शन ना हुआ होता तो शायद एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट घोषित करते अंपायर। तो 1 रन का इजाफा, 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और आतिफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार शरण की गेंदों का और शरण गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज आतिफ के लिए अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट फैंटास्टिकली स्ट्रक, इंप्रोवाइजेशन, लेकिन इस बार स्ट्रोक पे ज्यादा दम नहीं और बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ रिवर्स शॉट के जरिए बोर्ड दिया था गली और पॉइंट के दरमियान और थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद बैकवर्ड थर्ड मैन पर जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करके थ्रो करे 2 रनों का इजाफा हो चुका और इन 2 रनों के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और शरण अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए आतिफ सामना करते हुए यहाँ पर एक बार फिर से रिवर्स शॉट, गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त आतिफ के बल्ले से है, ऐसा कहना पड़ेगा। पहले पिछले स्ट्रोक्स के मुकाबले बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त, काफी तेजी के साथ गेंद को डिस्पैच किया था। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर, और काफी लंबा दौड़ इम्तियाज लगाए जरूर, लेकिन गेंद तक पहुंचने में असफल। एरिस फील्डर थे जिन्होंने काफी लंबा दौड़ लगाया था, और 4 रन इस वक्त बल्लेबाज आतिफ बटोरने में सफल। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। 11 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस बीच शरण अपनी ओर की अंतिम अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद आतिफ के लिए स्वीप किया इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। ओह, दिस कुड बी इन ट्रबल, एंड इन फैक्ट जस्ट वेट फॉर द अंपायर डिसीजन। शायद गेंद को ठीक तरह से गैदर करने में असफल रहे थे, और अंपायर ने इस वक्त तीसरे अंपायर की ओर इस वक्त मांग की है। देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। बेहतर फील्डिंग वहां पर, और थ्रो पहुंचा, इस थ्रो को यहाँ पर रिसीव कर चुके हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। हालांकि डाइविंग लगाते हुए विकेट जरूर उन्होंने चटका है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि तब तक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं या नहीं। और जहां तक सवाल है, देखना यह है कि विकेट इस वक्त उखाड़े गए गेंद से, या फिर गेंदबाज का हाथ वहां पर टकराया था। और यहाँ पर तृतीय अंपायर इसका परिशीलन न करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। Not out is the call and the batsman survived. तो शायद गेंदबाज का फिंगर इस वक्त टकराने के बाद विकेट इस वक्त उखड़ चुके थे, गेंद से नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर नॉट आउट घोषित किया गया है। और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं आसिफ। तो दूसरा ओवर प्रगति पर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाज इस वक्त तैयार शरण। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट शरण गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाता है आतिफ के लिए। यह गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, फैंटास्टिक डिलीवरी, परफेक्ट लेकर टू एंड द ओवर। 2 overs, in fact 2 overs completed, 11 on the board, 2 wickets down, and Manglore still searching for the right track. Now 48 to get from 6 overs, and now the required run rate is now straight away gone up to exactly 8 runs per over. 36 balls remaining, and 48 more runs now they have to score for victory. शाकिर गेंदबाज इस वक्त प्रारंभ करते हुए, और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, और सामना करने के लिए तैयार आसिफ अड्डूर। निश्चित रूप से अपनी रन की गति में कुछ हद तक तेजी इस वक्त लानी होगी मैंगलोर के बल्लेबाजों को, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब 8 रन प्रति ओवर जा पहुंचा है। और जहां तक का सवाल है इस श्रृंखला के चौके और छक्के का, तो 13 चौके और 8 छक्के इस वक्त लग चुके हैं अब तक इस श्रृंखला में। और निश्चित रूप से गेंदबाजों के लिए ज़्यादा सहाकारी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी उतना सख्त गेंद नहीं है जो इस श्रृंखला में इस्तेमाल की जा रही है। इस बार पैरों पर टकराए, और इस बार यह विकेट यहां पर गिर चुका है। प्लम इन फ्रंट गिवन, आसिफ डिपार्ट्स, एंड द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग फॉर एनए मैंगलोर। ऑन साइड पर गेंद को उछलना चाहता, गेंद इस वक्त उनके पैर पर टकराए, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था। अपील इस वक्त, अपील को इस वक्त पुरस्कृत करते हुए यहाँ पर अंपायर नजीर ईडन ने उंगली उठा दी। तीसरा विकेट गिर चुका है। दे आर लुकिंग इन ट्रबल, 11 for 3।
शाज का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में। निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप ही इन्हें मैंगलोर के इस मैच में वापस ला सकती है। इस बीच ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर शाकिर की गेंद थी और जहां तक सवाल है इस वक्त इस बार अपील जरूर, लेकिन जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त मिलेंगे एक लेग बाय के रूप में और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 13 रनों पर 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और इस वक्त गेंदबाज शाकिर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट आतिफ के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई पैरों पर टकराई गेंद, एक रन का इजाफा। शॉट स्कोर लेग पर जब तक विकेट कीपर अशरफ जाकर गेंद को फील्ड करे, अशरफ गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। काफी धीमी प्रगति इस वक्त करता हुआ एनएम मैंगलोर बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए टोरपेडोस काना की गेंदबाज अगली गेंद है इस बार स्वीप किया, गेंद जाते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट सिंगल गॉट 15 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो शाकिर इस वक्त गेंदबाजी करेंगे आतिफ के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और इस वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अगेन स्वेप्ट इट अवे, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। 17 for the loss of 3 wickets. Slower progressing here now for NM Mangalore. Now, last time in this over, Shakir comes to Shaz. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार छल्ला चा ऑन साइड पर गेंद गई ऑफ साइड पर, एक रन मिलेगा एक्स्ट्रा कवर पर। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पर थ्रो पहुंचा शाज के लिए और शाज इस वक्त यहां पर बच नहीं पाए। तो यहां पर देखना यह है कि तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से शाज इस वक्त खतरे में पड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट हिट इस वक्त लगा था और यहां पर डायरेक्ट हिट लगा था। एब्सोल्युटली शाज इज लुकिंग, ही इज इन ट्रबल। आउट इज द कॉल एंड शाज हैज टू गो। और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। शाज की पारी समाप्त, 4th विकेट गॉन। इन फैक्ट द स्कोर इज नाउ 18 एंड 3 overs completed. So 4th over starts in the ring. New batsman Mansoor is now comes out to the middle as the number 6 batsman, the senior campaigner of their side. इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद और आतिफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज एरिस इस वक्त गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए। 41 runs more now they have to score for victory in remaining 5 overs. The required run rate is now exactly 8.20 runs per over और 30 गेंदें बाकी और 41 और रन चाहिए विजय के लिए। 41 टू गेट फ्रॉम 30 डिलीवरीज और इस बीच आतिफ सामना करते हुए इस वक्त आरिस की गेंदों का। आरिस नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। पहले गेंद शाकिर इस वक्त आतिफ के लिए, गेंद को मोड़ दिया, इस वक्त मिड विकेट पर गेंद पहुंची। एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। एक रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और मंसूर इस वक्त सामना करेंगे एरिस की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट एरिस इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद स्वीप किया, इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन का इजाफा। जस्ट सिंगल ही गॉट
So 20 the score for losing 4 wicket in the over number 4 in progress. Slower progressing here now for NM Mangalore. They badly need a partnership at this stage to get back into this match. और खासकर रन की गति में भी तेजी लाना इस वक्त ज़रूरी बन चुका है एनएम बेंगलुरु के बल्लेबाजों को. और एरिस इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था. इन्हें हाथों वर्दा विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त खूबसूरती के साथ बैकवर्ड थर्डमैन की दिशा में गेंद जाती हुई. थोड़ा दौड़ लगाने के बाद जब तक ऊपर गेंद को फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का. बेहतर स्ट्रोक आतिफ के बल्ले से लगता हुआ और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. Now 37 more runs now they have to score for victory in remaining 27 deliveries. और गेंदबाज एरिस अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा आतिफ ने. एक बार फिर से ठीक तरह से खेल नहीं पाए लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. स्टिल दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो. मंसूर सामना करते हुए इस वक्त एरिस की गेंदों का. 3 बेहतर गेंद इस ओवर में एरिस फेंक चुके अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद और इस बार गेंद को छोड़ दिया अंतिम क्षण में और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर. तो इस वक्त रन से सिर्फ बाई के रूप में मिलेंगे और मंसूर ने ये पूर्वानुमान लगाते हुए गेंद को छोड़ दिया था कि शायद वाइड हो सकती है लेकिन अंतिम क्षण में अंपायर इसे बाई घोषित करते हुए 1 रन का इजाफा 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार आतिफ. ये बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन गेंद इस वक्त निकल चुकी उनके पैरों के बीच से स्टंप पर टकरा चुकी है और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. आतिफ की 12 रनों की पारी पर पर्दा गिर चुका है और 5वां विकेट खो चुका है एनएम मैंगलोर. दे आर रियली स्ट्रगलिंग आउट इन द मिडल. 24 फॉर 5 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स. और आतिफ एक्स्ट्रा क्विकर गेंद पर रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में बोल्ड आउट हो चुके हैं. देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था. एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी और आतिफ का विकेट गिर जाने के बाद नाउ दे आर लुकिंग इन ट्रबल. 35 टू गेट in remaining 24 deliveries, but the main question stands about wicket. They lost their 5 wickets, 5 top enders wicket. तो देखते हैं यहाँ पर 5 विकेट सुरक्षित और 35 रन इन बचे हुए 5 विकेटों की मदद से 24 गेंदों पर बना पाते हैं या नहीं, ये देखना पड़ेगा एनएम मैंगलोर. तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो आगे का खोदेकाल सुनाने के लिए अब एक बार फिर से मेरे एक और काबिल दोस्त श्रीमान सुजीत को मैं बुलाना चाहूँगा राज्य भाषा कन्नड़ में आगे का खोदेकाल सुनाने के लिए. आइए सुजीत, धन्यवाद, थैंक यू. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 24, 5 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಎಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 35ರ ಸವಾಲು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್, ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 30. The score was on to 30 on the board. Now the 29 required, the remaining 23 ಡೆಲಿವರೀಸ್. 23 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29ರ ಸವಾಲು. ಸಾಕೀರ್ ಎಸೆದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಷಟ್ಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತಿರುವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭ, ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ದಂಡು ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 31. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನವದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಜ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 32. 1 ಪ್ರೇರೇಪಿಸದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ 32. ಶಾಕೀರ್
ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾಲೋ ಥ್ರೂನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಸೆದಂತಹ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಓಟಗಳು. 1 ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್. ಮನ್ಸೂರ್ 1 ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಿಸಿದಂಥ ವೀರ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಆದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಕೀರ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ನ ನಿರ್ಗಮನಗಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 32, ಹುದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6. The score was on to 32 on the board, loss of 6 valuable wicket. Now the last 1 ball left. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 45 ಮುಸ್ತಫಾ. ಮುಸ್ತಫಾ ನವದಾಂಡಿಗ NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೌಶ್ರಿಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್, ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಕೀರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ತನಿವಿರ ರಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂಥ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 26. Now 18 ball 26 required. Very crucial match going between Torpedos Kana against NM Mangalore Chepo. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಯಿತು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. ಅದೇ 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 18 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 26 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 18 ball 26 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಮ್ರಾನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾವ ಕಡೆ ವಾಲಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನ. ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶರಣ್ರವರ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶರಣ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದಿರಲ್ಲಿ HN ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯ. ಅಶ್ರಫ್ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಹೇತರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್. 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 34. 34 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಶರಣ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರ ರಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗಬಹುದು. ಕಾರಣ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. ಹದಿನಾರು ಎಸೆತ 25 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 16ರ ಮುಂದೆ 25. 1 ಷಟ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರ ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ
ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶರಣ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆದಂತಹ 3 ಎಸೆದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮುಸ್ತಫಾ ನೇರವಾಗಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 34, 7 ಉದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸಾತಿ ಆಗಲೇಬೇಕಾದರೆ ಷಡ್ಕ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಲೇಬೇಕು. ಎಸೆದಂತಹ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಜೀಬ್. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾಣ್ಯ ಚೆಂಬಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಶರಣ್ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದಿವಸದ ಆಟಗಾರ ಮುಜೀಬ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1ರ ಮುಂದೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 35, 35 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಶರಣ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು LBW ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 8, 8ನೇ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 35. 6 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 12ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 24. 12 ಬಾಲ್ 24 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಫೈಸಲ್ ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಕಡೆಯಿಂದ BMR ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಖಂಡದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಈ ಚೇತನ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 4 ಓಟ 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಂಥ ಈ ಎಸೆತಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್. ಚೇತನ್ ರೈಟ್ ಹಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 12ರ ಮುಂದೆ 24. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಜೀಬ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾಶೀತ್ರವನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 36, 36 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನು 23 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 11 ಎಸೆತಗಳೊಂದಿಗೆ 11 ಬಾಲ್ 23 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಚೇತನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಫೈಸಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಜೆಗ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ತನ್ವೀರ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ. 1 ಓಟ ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ 10ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 22. 22 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ 10 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರ ಚೇತನ್. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು. ಮುಜೀಬ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಫೈಸಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಚೇತನ್ ರೈಟ್ ಹಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನವಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 39, ಇನ್ನು 20 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 8ರ ಮುಂದೆ. 8 ಬಾಲ್ 20 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಚೇತನ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮುಜೀಬ್, ಉಲ್ಟ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಶರಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆದಂತಹ 5 ಎಸೆದಲ್ಲಿ 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್. 19 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 7ರ ಮುಂದೆ. 19. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 32 ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಶಕ ತನ್ವೀರನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಉಲ್ಟದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ಆದರೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 41. 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಚೇತನ್. 7ರ ಮುಂದೆ 18. 7 ಬಾಲ್ 18 ನೀಡೆಡ್. 3 sixes. 3 ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾದಲ್ಲಿ NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡವು ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಶೇಕಡಾ 75 ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಕಾರಣ 8 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಜಲ್. ಚೇತನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 42. 17 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 7 ಬಾಲ್ 17. 7ರ ಮುಂದೆ 17. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು 3 ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆನ ಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ. ಇನ್ನು 7ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 16. 6 ಬಾಲ್ 16. ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಚೇತನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಫೈಜಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 7ರ ಮುಂದೆ 16. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲಿಕ್ಕೆ 4 ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದರು ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 7 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 43. 6ರ ಮುಂದೆ 16. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಸಮಯ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ 32 ಒಳಗಡೆ 1 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಬರಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ 32 ಒಳಗೆ ನಿಂತುವಂತಹ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲು ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೀಸ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 5, ಕಬಳಿಸಿದ್ದು 1. 6ರ ಮುಂದೆ 16. 3 ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಬೇಕು. ಮುಜೀಬ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೀಸ್. 6ರ ಮುಂದೆ 16. ಉಲ್ಟ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಮುಖೇನ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು
ಕವರ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವಳಿ ಒಟ್ಟಗಳು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಒಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 45. ಇನ್ನು 5ರ ಮುಂದೆ 14. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. 5ರ ಮುಂದೆ 14. 5 ಬಾಲ್ 14 ನೀಡೆಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಸಫಲತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಇದ್ದರೆ ದಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 4ರ ಮುಂದೆ 14. 4 ಬಾಲ್ 14 ನೀಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ? ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಷಡ್ಕ. ಇನ್ನು 3ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 8. 3ರ ಮುಂದೆ 8. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಕಾನಾ. ಇನ್ನು ಮುಜೀಬ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 3ರ ಮುಂದೆ 8. 3 ಬಾಲ್ 8 ನೀಡೆಡ್. ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಸುಲಭ. ಚೇತನ್ ಅವರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂಥ 2ರ ಮುಂದೆ 7. 2 ಬಾಲ್ 7 ನೀಡೆಡ್. 1 ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಸಮಬಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವು ಸಮಬಲವಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಫೈಸಲ್ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ಮುಜೀಬ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಸಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖೇನ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 52. 1ರ ಮುಂದೆ 7. 1 ಬಾಲ್ 7 ನೀಡೆಡ್. There's a fair delivery. Now 1 ball 7. 1 ಎಸೆತ 7 ಓಟ. 1 ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಮುಜೀಬ್ ಮತ್ತೊಂದು ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ? ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲವಾಗಲು 1 ಷಡ್ಕ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೀಸ್ ಈ 1 ಷಡ್ಕವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಸೆದ್ದಲ್ಲಿ. 4 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ 38ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಜೀಬ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದೇ? ಆರೀಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಕೊನೆಯ ಸಿದ್ಧ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ NM ತಂಡವು ಪರಾಜಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಷೀದ್ 26 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 31 ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಬಾಷೀದ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೋಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಕಪ್ತಾನರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಶಾಲಿಯಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಬಾಷಿದ್ರವರೇ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಾಗಿ ಸಲೀಂ ರವರು 2,000 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಷಿದ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬಳಿ ಬರಲಿ. ತದನಂತರ ತಾವು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಲೀಂ ಅವರಿಂದ 2,000 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 31 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಬಾಷಿದ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲೀಂ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಷೆ ಇದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So Ajmal presenting the man of the match here for Bashit with 2 liters of Sprite along with discount vouchers.
Naushad KFC Kodical, please report here. Naushad.
ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್.
Welcome back for the match number the 6 of prestigious Kodical Premier League KFC Championship 2025, which is presented by Kodical Friends Circle Registered, and we are into the match between Team Matrix versus the host team KFC Kodical. Will going to take the Team Matrix in this under floodlight match. After the all, we can see that 5 matches which is finished in the natural light. We are into the match in under floodlight and wait and see how well this team will going to have a competition to get the place in the next round. So everything is ready here for the match between KFC versus Team Matrix. Winning the toss, captain of host team KFC Kodical, they elected to ball first, so that opening batters of Team Matrix there in the middle of the pitch along with the umpires, umpire Roland Pinto and Pushparaj. The 2 umpires are in the middle. In commentary box, myself Satish Salian, Mr. Ratish Raj as a scorer, Mr. Gopi is a commentator in Hindi, and Sujit in Kannada. And in scoreboard we have Shrikant and of course under the great leadership of Irfan, Bedra Media. All the staffs, the cameraman, technicians are ready here in our commentary box. We have Melvin, one more excellent cricketer, the former cricketer of Gori Young Boys. He's here in our commentary box. He's also enjoying the game of cricket of this KFC Champions Trophy 2025. So opening batters are in the middle for Team Matrix. We have Faizan, the striker, and non-striker Rizwan. Rizwan striker, will be correction, and Faizan will be the non-striker. Wait and see how well these 2 batters will going to lay the foundation. And under floodlight, different ball game, and the bowler will going to start the proceedings from the BMR group end. Nizam, first over. And first ball itself, the batter Rizwan wanted to go for the reverse sweep, but misses the line completely. The line is just outside the line of leg stump, but he just wanted to go for reverse sweep. Missed it completely. Little bit extra bounce for Rizwan. Try to get that on the third man region. This time catch it is the call, just falling short of the fielder, and overthrow, but back up by the fielder in that mid-off, so that no run scored. Yet to open the count, you are watching a match between Team Matrix versus KFC Kodical is underway. This time lofted that one right in the gap, but ball will not going to travel to the fence, and before the fielder will going to run back and field the ball. Ample time for the batter Rizwan to complete a couple of runs. So he's off the mark, and Team Matrix is also there off the mark
2 without loss of any wicket. Team Matrix, of course, the team has got some good memories in this beautiful UCC cricket ground. And excellent delivery, and ball base has got a contact with the bat, so that one more addition to total. Faizan is off the mark with the single. Total score now moves on to 3 on the board. Lipkarshan Rizwan picked up that single. He's batting on 3. Total score is 3 on the board. Now Faizan will going to take the strike. Nizam again played it down to short extra cover region for a single. With that single scope, but moves on to 4 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Nizam to Rizwan. Short on up. Again wanted to go for the expansive drive, but little bit movement of his feet and where he was standing, tried to get that one in the extra cover. Missed it completely. Good over from Nizam. First over completed. After completion of first over, Team Matrix are got a slow start, steady start, 4 without loss of any wicket. After this match will be played between SRFC versus Torpedos Kana. So that I request both the teams, kindly request you to complete the signatures as soon as possible. So over number 2, the second over of the power play from the ancient end. Aris brought into attack to bowl the second over of the innings of Team Matrix. The fielder at short fine leg, one at square leg behind the square, one at short mid wicket. The fielder down at deep mid wicket and long on. So all we can see that the 2 protection in the onside region, but offensive field in the offside region. Outside the line of off stump, Faizan just wanted to go for the expansive drive, doesn't get hold of that one properly. I've already mentioned it's a different ball game. Even the ball is a little bit soft in the nature at the same time, and under floodlight it may be difficult for the batters to get the timing. Again wanted to go for the reverse sweep. He's lost his balance while trying to do that, but missed it completely. Wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. 5 without loss of any wicket in the over number. Second is in progress. 5 on the board. Lip correction. Aris, the very talented young boy, very energetic, and bowling away from us. Lovely improvising reverse sweep, but the fielder did a great job, but couldn't manage to collect that one properly. He absolutely did a great job to run back quickly to that ball, but fails to gather that one neatly, and ample time for the batter to complete a couple of runs. With that couple of runs, Coburn was on to 7 on the board without loss of any wicket. Team Matrix and KFC Kodical, both the teams knows that very important here if they wanted to reach to the final of this cricket tournament. Of course, they have to perform very well. Again, nowhere near the pitch of the delivery. Just wanted to go for the on-drive sweep shot, but line is not good enough for the batter to go for the sweep shot outside the line of off stump, and scoreboard remains on 7 without loss of any wicket. Aris to continue bowling away from us. Right arm over the wicket. Again lovely delivery, appeal for caught behind. So excellent delivery from Aris. So Aris, of course, and in his follow through, he need to keep his left, and of course is coming right in front of umpire. Is just moving towards the right after his follow through. So difficult for the umpire to watch where the ball is. Just have a look at that one, how is coming to the middle of pitch. Even umpire asked him to just avoid that to protect his zone. Second over completed. After completion of over number 2, it's 8 on the board without loss of any wicket. Team Matrix, they're going exactly 4 runs per over. So first 2 overs, definitely the opening bowlers of KFC Kodical, they absolutely did a great job to
restricting that runs for just 4 runs per over. Both the teams, Team Matrix and KFC Kodical, the owners, they are given some chances for the youngsters to grow up. But unfortunately, what happened in the present cricket, it's not so easy for each and every team to keep your quality players in your team because of the level of competition we can see in Underarm cricket also. The migration of the players from one team to another. Sometimes it's so difficult for the team owners to keep their good players in their team. It's a big challenge in the present cricket. So not easy for the owners of the particular teams. Of course, KFC Kodical, everybody knows that one time they are absolutely dominating in the Underarm cricket for 3-4 years back. They were one of the most toughest team to handle for any team. But after some good players are left the team, it's not so easy for the teams to rebuild the team again. They have to get some good players in the side. Of course, youngsters coming to the team and straight away it's not so easy to perform. It takes a little bit time for the team to grow up. And always it's a big challenge in the present cricket. Asif brought into attack. That starts with the warm-up delivery of the evening. Gone outside the line of leg stump. Wide call by umpire. 9 without loss of any wicket in the over number 3 is in progress. Ashik from the BMR group and right arm over the wicket. Okay, went for the expansive drive. Doesn't get hold up then properly. They wanted a second. Oh, now they're going for the second. Chance of run out and both the batters are quick enough to complete that couple of runs. So with that couple of runs, Kobata moves on to 11 for no loss in the over number 3 is in progress. The fielders absolutely there in the inside the ring need to be little bit quick enough to stop the couple of runs. Ashik. They wanted to go for the expansive drive, doesn't get hold of them properly. Just a single. Wicketkeeper try to make a backhand flick to that stump, but missed the stump completely. Just the addition of the single. 12 on the board without loss of any wicket. Opening batter Rizwan and Faizan slowly adding the runs in the form of singles. Umpire Roland Pinto just checking the bat of Rizwan not to exceed 4.25 inches as far as again off stop by the bowler on his follow through, but both the batters are completed a single. 13 without loss of any wicket in the over number 3 is in progress. So some kind of injury we can see here from KFC Kodical players. Akeem, the captain of the side, have got some the problem in his knee. It looks like it's going to be a knee problem and difficult condition. I already mentioned the present cricket, and especially when you are going to finish the season, everywhere we are seeing some league matches. And sometimes belt areas, the players can't skip that tournaments because they wanted to represent their home team. Along with they have to represent for their regular teams in a big tournament. So that might be the little bit the problem for the players without having a sound sleep. They're coming to the match and playing the day and night match. It's definitely a very difficult condition for the players. 14 on the board without loss of any wicket. One more single has been taken there by the batter. Rizwan is batting on double figure 10 and Faizan is batting on 3.
Again, wanted to go for the expansive drive. Again, timing is not really coming proper. That's what the problem here for the batters to sight the ball and to get the timing in the stroke. It's absolutely difficult one. 15 without loss of any wicket in the over number 3 is in progress. Still the batters are rotating the strike. That's very important. This time again they were going for the quick single, chance of run out, but Izaz couldn't manage to collect the ball. Leg by call by umpire with the addition of leg by Skobar Namuzan to 16 on the board without loss of any wicket. 3 gone, it's 16 without loss of any wicket. Rizwan and Faizan, the batters, are in the middle. They're just trying to build a partnership. Not a bad run in this condition. 16 run for Team Matrix. All we can see some youngsters in KFC Kodical. That's what I'm talking about. A big challenge for the senior players of the side as well. If you see that KFC Kodical now, they are having only the senior players like Nizam, Akim, Tazuddin. There the players are, of course, they are the regular teammates. Even though in a difficult time, they never thought of skipping the team. And need to appreciate all these players. And they are backing their home team. Even though someone left the team, but they are the one, the Akim, Nizam, Tazuddin. They got faith with their team owner. This time, Flum in front of wicket, wanted to go for the reverse sweep and misses the line completely. That ball is an incoming delivery from Ashik. That's what the ball is definitely going to reach the midland off stump of the batter Rizwan. Is back in the pavilion. It's 16 for 1. The first wicket is back in the pavilion. And Dakshit, the bowler, correction, is brought into attack and got a breakthrough in his first delivery. So, leg before with the wicket wicket number first is back in the pavilion. New batter in is Rafiq, one more experienced batter for the side of Team Matrix. The way to the middle of the pitch. The condition under floodlight, the batter like Rafiq definitely going to be very effective where it is difficult to play a big shot. Rotation of strike is concerned. They can be effective because he is the kind of batter loves to rotate the strike. They're very strong in the square of the wicket, behind the wicket, sweeping the ball, pushing the ball here and there. That's what we did sometime, the condition of the ball as well as the condition of the ground. 16 for 1. Dakshit second time. This time they're going for the quick single. Chance of run out. The back and throw there from Akim. Even though he is not 100% fit, but still they have wanted to contribute for his team. And one more single. With that single, Skobar moves on to 17 for 1. And Rafiq is off the mark and a typical style. Playing that soft hand and got a single from his bat. Is off the mark. Bowled him, cleaned him up. No. He's out, I think. He's bowled him. But I don't know why Faizan is going for the run. Clearly we can see that ball is hit the stumps. It's bowled out. Just have a look at it in the replay. Oh, that was absolutely hitting the off stump. Faizan departs. Fantastic start there from Dakshit. It's 17 for the loss of 2 wickets. This is what I told you to just have a look at it in the replay. Again, the close view of that dismissal. Extra bounce. Hits the stumps. The bails are off. And almost the bails just missing the mouth of wicket keeper. Luckily he's closed his mouth. Otherwise the bails will definitely going to hit his teeth. The problem for wicket keeper. So sometime when you stand very close to the stumps, you have to aware of that thing sometime. The 17 for 2.
New batter, Mausin. Lovely piece of fielding, lovely piece of bowling there from Dakshit. Turning out to be a great over. They're keeping that very tight line and length. 2 wickets in this over. Again, quicker and faster one. No idea where the ball is. Now they're responding for the single. And they managed to complete the single in the form of leg bye. With that leg bye, score numbers on to 18 on the board for the loss of 2 wickets. The first time, first run in this over in the form of extra of Dakshit. 2 wickets already. Have a look at these us. Not having a good time and behind the wicket again. Nicely works that one and what did second? Asking for trouble. Rightly so. Rafiq sending him back. Otherwise,
ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವ ಎಸೆತಗಾರ ನಿಜಾಮ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. BMR ಎನ್ ತುದಿಯಿಂದ ರೈಟ್ ಹಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ವೇಗದ ಎಸೆತ ಒಂದು ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಓಟದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 30 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. Loss of 2 valuable wickets. ನಿಜಾಮ್ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೌಸೀನ್ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 30ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಟೋಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹಕೀಮ್ ಸೂರಿಂಜಿ ಹಕೀಮ್ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರೆ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರು. ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ನಿಜಾಮ್ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ತದನಂತರ ಹರೀಸ್ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ತದನಂತರ ಆಶಿಕ್ 7 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ತದನಂತರ ಎಸೆದಂತಹ ದಕ್ಷಿತ್ 2 ಓಟ 2 ಉದ್ದರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತದನಂತರ ಆಶಿಕ್ 6 ಓಟವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ 6ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ದಕ್ಷಿತ್ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ 7ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಬಂದಂಥ ನಿಜಾಮ್ ಎಸೆದಂತಹ 3 ಎಸೆದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಸೀರ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಎಂಬ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್. ದೊಡ್ಡ ಮೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಭರವಸೆಯ ಕೊಂಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. SRFC ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ ಮೇಲೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಲವಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇಜಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಥ್ರೋ ಬಂತು. ಆದರೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್.
ಒಂದು ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆದಂತಹ 2 ಎಸೆದಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾಮ್ ಎಸ್ತಕಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ತಡೆಯೋಣ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸದಾವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಜಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ರೈಟ್ ಅವರದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ರನ್ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 38ರ ಸವಾಲು 48ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆ ಆಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ SRFC ತಲಪಡಿತರದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ತಮಗಿದು ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ SRFC ತಲಪಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆದಲ್ಲಿ 4 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರು ಇಜಾಜ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೀಫ್. ಈ ಬಾರಿ ಹವಳಿ ಓಟದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆ ಒಡೆಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಡೀಪ್ ಎಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೀಫ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6, 6 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ. ನಿಜಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಜಾಜ್ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ. ಇಜಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಜಾಮ್ ಎಲೆ ಜುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಜಾಜ್ ನೇರವಾಗಿ ಗೋಟ್ ರಕ್ಷಣಾಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುವಂತ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾದ ಇಜಾಜ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೀಫ್ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 32ರ ಸವಾಲು. 42 ಬಾಲ್ 32 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಾಪಸಾತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಸ್ ತಂಡವು ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆಯೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಇರ್ಫಾನ್ ಶಾರತ್ತಟ್ಟಿದ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಸೇಲು ಎಸೆಗಾರ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ 5 ರೈಟ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿದ್ದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಆರೀಫ್ ಹೊಡೆದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು. 1 ಓಟ, ಅದು ಕೂಡ ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ತೆಗೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 7, 7 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 7 ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ 7 ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿ 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದರಂತೆ ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 6ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಇಂಥದೇ ಆಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೀಫ್. ಆದರೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು.
ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. 9 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ 9 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 9 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಂಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 13. Score was on to 13 on the board. 4 ball completed in this over. 4 ಎಸೆತವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು, 7 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಹುಲ್ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನಿನ ನಿಶಾನೆ, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಲಂಡ್ ಪಿಂಟಸ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಶಾಹುಲ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಥಾನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೀಫ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಜಾಜ್ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 16. 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 6 ಓವರ್ ಅಂದರೆ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಉಳಿದಂತಹ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ BMRN ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಸಾರ್ ಎಸೆಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 12 ನಿಸಾರ್. ಎಸೆಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಸಾರನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಸಾರ BMRN ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಒಳ ಹಂಚಿಕೆ ತಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೀಫ್. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17. 1-1 ರಂದೇ ತಂಡ ಮುಂದಾಲೋತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೀಫ್. ನಿಸಾರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಜಾಜ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೀಫ್ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ, ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುವಂಥ ನಿಶಾರ್ ಎಸೆದಂಥ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೀಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಸಾರ್. ಬಲಗೂಟ ಬಲಸ್ತ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿದಂಥ ಚೆಂಡು
ಮನವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು. ಇಂಥ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆತಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 18 ಆನ್ ದಿ ಬೌಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 19 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಓವರ್ನ 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 19 ಆನ್ ದಿ ಬೌಟ್. ನಿಸಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಜಾಜ್, ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ, KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಕಂಡಂತಹ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಇಜಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಓವರ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್ ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 19, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡವು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 19 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 19. ಎಸ್ ಕಾರ್ಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕರೆ ಎಸ್ ಕಾರ್ಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈಟ್ ಮೂವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತನ್ನು ಎಸಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 2 ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆರೀಫ್. ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ರಫೀಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಆರೀಫ್ ರನ್ ತೆಗೆಯುವ ಬರದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಜಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ may request captain of Torpedos Kana, Mr. Bashit, please report here for the commentaries box. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆರೀಫ್. ಇಂಥದೇ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸೆದಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೊನ್ನಾಳು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 1 ಪೇಜ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಬಹುದು. ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರ ದಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆದಂತಹ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 2, ಕಬಳಿಸಿದ್ದು 2. ಈ ಬಾರಿ ನವ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನ ಆಗಲೇಬೇಕು. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನವ ಆಟಗಾರ ಆರೀಫ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ತಾಜುದ್ದೀನ್. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್. ಅಸದಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 21 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 2 ಓಟಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಬ್ಬದ ಚೆಂಡನ್ನು 1 ಓಟದತ್ತ ತಬ್ಬಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇಜಾಜ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಓಟ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಬಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದು ತಾಜುದ್ದೀನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 23. ಪ್ರವೀಣ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 24. 2ನೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 24. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 14 ಓಟಗಳು. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಸರ್. ಗೋಪಿರವರೇ, ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. Dhanyawad Sudhit. 4 overs completed, 24 for the loss of 2 wickets, 14 to get now in remaining 4 overs. And straight away the required run rate is coming down to exactly 3.5 runs per over. और जहाँ तक सवाल है 5वें ओवर का, तो गेंदबाज इस वक्त 5वां ओवर लेकर तैयार. निसार ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ उभरता विकेट. ये गेंद स्वीप किया इस वक्त पार्टनर स्वीप के तौर पर. गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की दिशा में और जब तक गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है. और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर. क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज इजाज और नाजीम, जो कि क्रीज पर मौजूद नाजीम सामना करने के लिए तैयार. और निसार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. और इस बीच दाहिने हाथ के बल्लेबाज नाजीम सामना करते हुए. ये गेंद बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी दिस टाइम, जस्ट मिसिंग और साथ ही ऑफ स्टंप लेग कटर के तौर पर गेंद थी. गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर. जबकि 5वां ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर टीम मैट्रिक्स को चाहिए एक घातक गेंदबाजी इस वक्त इस मैच में कम बैक करने के लिए. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर. जस्ट अ सिंगल ही गॉट that single run the scoreboard moving up to 26 by declared by umpire. 26 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. SRFC ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಜವಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और इस बीच गेंदबाज निसार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए. ये गेंद इस बार गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर. जस्ट सिंगल ही गॉट दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 28
7 on the board for losing 2 wicket in the over number 5 in progress. लंबा ओवर इस वक्त प्रगति पर निसार का और क्रीज पर मौजूद नाजिम और एजाज इस वक्त पारी के भागदौड़ को यहाँ पर संभाले हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज निसार ये गेंद टॉप एज मौका लेकिन फील्डर थोड़ी से पीछे तैनात शॉट मिड विकेट पर जस्ट अ सिंगल ही गॉट हालांकि गेंद टॉप एज पर जरूर टकराई थी लेकिन खाली क्षेत्र पर टिपा खाते हुए शॉट मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रन पर. नो नीड टू पैनिक एट ऑल इन दिस सिचुएशन. कोई जल्दबाजी की इस वक्त ज़रूरत नहीं है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए दोनों बल्लेबाज इस वक्त इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी करते हुए और निसार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. इजाज इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद अक्रॉस द रन खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई लेकिन अपील को नकार दिया अंपायर ने और आखिरकार लेग बाई का इशारा और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 29 रनों पर. 5 रन केम फ्रॉम दिस ओवर फ्रॉम निसार, 4 फ्रॉम द बैट, 1 फ्रॉम द face of leg by. So 5 gone and it's 29 for 2. They are still looking in a good situation. KFC Kodical 9 to get now in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. Under lights, under floodlights इस श्रृंखला का छठा मैच यहाँ पर चलता हुआ. अंडर फ्लडलाइट्स पहला मैच जबकि इस श्रृंखला का छठा मैच इस वक्त प्रगति पर इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत under this prestigious cricket tournament KFC Champions Trophy 2025 which is proudly presented by Kodical Friend Circle registered the celebration of their 35 years. They are organizing this fantastic cricket tournament in the name of KFC Champions Trophy 2025 in this beautiful UCG Urwa cricket ground, the Lords of Underarm cricket. और गेंदबाज प्रवीण गेंदबाज इस वक्त प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सामना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज इजाज. सिर्फ 3 रन रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त और प्रवीण ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकालते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का. वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर. 30 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर. और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, गेंद इस वक्त स्टंप्स पर टकरा चुकी है और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. तो शफल होते हुए स्टंप्स एक्सपोज करते ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता इजाज ने चूके और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते सीधे लेग स्टंप पर जा टकराई और इसी के साथ तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका. 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस फॉर KFC Kodical. जस्ट 1 बॉल बोल्ड इन दिस ओवर और इंतजार है इस वक्त नंबर 5 बल्लेबाज का. आकाश का आगमन यहाँ पर होता हुआ और वो इस वक्त स्ट्राइकर रैंक की ओर कदम बढ़ाते हुए और गेंदबाज प्रवीण इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. SRFC ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಟೊರ್ಪೆಡೋಸ್ ಕಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ और अगली गेंद इस बार ऑफ द टॉस गेंद को खेलना चाहा. फैंटास्टिक डिलीवरी. इस टाइम द बॉल बीट्स द बैट्समैन्स बैट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर. बेहतर गेंद इस वक्त गेंदबाज की और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए प्रवीण इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार स्वीप किया गेंद को इस वक्त पहुंची गेंद शॉट स्कोर लेग पर. जस्ट सिंगल गॉट 31 द स्कोर फॉर लूजिंग 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. और इस वक्त जहां तक सवाल है बचे हुए रन का तो 7 रनों की और दरकार विजय के लिए. और इस बीच प्रवीण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद स्वीप किया इस वक्त टॉप है जब मौका. शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद पहुंच चुकी है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. नाजीम का विकेट गिर चुका है. शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, टॉप एज पर टकराई और शॉट फाइन लेग फील्डर एक बेहतर कैच लपका अपनी बाईं ओर जाते हुए चौथा विकेट गिर चुका है. 31 for 4. SRFC ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
Torpedos Kana ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ನಾನಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. निज़ाम 7 रन के दरकार. निज़ाम नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज प्रवीण की गेंदों का. 7 रन केवल चाहिए 14 गेंदों पर. लक्ष्य बिल्कुल आसान इस वक्त केएफसी कोडिकल के सामने और चमत्कारी गेंदबाजी की यहाँ पर जरूरत है. इन बचे हुए 14 गेंदों में चाहिए टीम मैट्रिक्स के गेंदबाजों को. गेंदबाज अगली गेंद. Again, better again, the fantastic delivery, and the ball went into the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run. 31 the scoreboard stays, and still a ball left in this over. आकाश 1 रन पर बल्लेबाजी करते हुए. निज़ाम को अभी अपना खाता खोलना बाकी है और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद है. ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती है. पैर के जरिए गेंद को रोका, रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल. 1+1, 2 wides added to the total. With that couple wide run, the scoreboard moving up to 33 for the loss of 4 wicket in the over number 6 in progress. Still 1 ball left in this over. और गेंदबाज इस वक्त प्रवीण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. 4 विकेट प्रवीण अब तक प्राप्त कर चुके हैं. बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हैं. लेग स्टंप पर आते हुए गेंद उछालना चाह चुके और एक बेहतरीन स्पेल की समाप्ति हो चुकी है. फैंटास्टिक स्पेल came student from Praveen who conceded just 9 runs in his 2 overs caught and captured 4 wickets. 2 overs no beaten, 9 runs and 4 wickets. Outstanding figures in 8 overs format. Bowled by Praveen. और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर. 2 ओवर का खेल बाकी और 2 ओवर में सिर्फ चाहिए 5 रन विजय के लिए. Exactly 2.5 runs the required run rate for them at this situation. The target seems to be the equation seems to be much easier for KFC Kodical. तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए निज़ाम. 7वां ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त केएफसी कोडिकल के पारी में. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार just gone for a loss this time, not succeeded. What a fantastic delivery from the bowler Nizam. He just caught the lead of the batsman. Absolutely fantastic delivery. और इस गेंद पर ऐसा कहना पड़ेगा निज़ाम की गेंद पर निज़ाम को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला. यानी गेंदबाज भी निज़ाम और बल्लेबाज भी निज़ाम. और इस वक्त निश्चित रूप से एक बेहतरीन गेंदबाजी की गेंदबाज निज़ाम ने बल्लेबाज निज़ाम को और उनका विकेट इस वक्त उखाड़ने में सफल. और 5वां विकेट यहाँ पर गिर चुका है. 33 for the loss of 5 wicket. 5 runs required now in remaining 11 deliveries. और इंतजार है इस वक्त नंबर 7 बल्लेबाज का. We're just waiting for the number 7 batsman of KFC Kodical. दक्षित नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त सामना करने के निज़ाम की गेंदों का. 11 गेंदें बाकी, सिर्फ 5 रन चाहिए विजय के लिए. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है BMR एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए निज़ाम. जबकि दक्षित नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. लगभग सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त लगाई गई है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में. और निज़ाम एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार ड्राइव किया गेंद को. गेंद पहुंची मिड ऑन पर. 1 रन का इजाफा हो चुका है. 34 on the board, in fact 34 for the loss of 5 wicket in the over number 7 in progress. और आकाश सामना करने के लिए तैयार. 10 गेंदों में 4 रन विजय के लिए चाहिए. और आकाश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंद को ड्राइव किया. इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर. 35 now 3 to get from remaining 9 deliveries. और गेंदबाज निज़ाम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए आकाश के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर उछलना चाहा. बेहतर गेंदबाजी. शॉर्ट पॉइंट पर गेंद पहुंची. तेजी के साथ 1 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं यहाँ पर बाई के रूप में.
और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 35 रनों पर 35 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस 9 बॉल्स लेफ्ट 3 रन्स रिक्वायर्ड और 36 in fact the score just 2 runs required for victory in remaining 18 overs इस बार चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में रन्स नहीं मिलेगा SRFC तलपाड़ी ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು टॉस ಗಾಗಿ और ये गेंद उछाला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल और इसी के साथ दैट्स इट comprehensive victory for KFC Kodical by 5 wickets with 7 balls to spare and with that victory they are through to the semi-final of this competition defeating Team Matrix in the last quarter-final. So now the first semi-final match will be played between SRFC Talapadi versus Torpedos Kana and after that the second semi-final match will be played between Young Friends Urwa versus KFC Kodical. Now it's time for the first semi-final. SRFC Talapadi will take over Torpedos Kana and that match starts within just a short while और एक वो मैच शुरू होगा चंद लम्हों बाद जहाँ तक टॉस का सवाल है टॉर्पेडोस काना ने इस वक्त टॉस जीता है और इस वक्त उनका निर्धार देखना पड़ेगा द डिसीजन इज स्टिल पेंडिंग फ्रॉम टॉर्पेडोस काना और जहाँ तक सवाल है एक बेहतर मैच इस वक्त शुरू होने जा रहा है SRFC तलपाड़ी और टॉर्पेडोस काना के बीच में टॉर्पेडोस काना ने टॉस जीतने के बाद
I request a 12th man of SRFC please be reported here in commentary box. So Asif and Daivik are the opening batters in the middle for the team SRFC as an opener for the side, and Chetan will going to start the first over of the power play from BMR group, and signal came from umpire Pushparaj and umpire Nazir Eden at square leg. So long off and long on, the fielders are in the dim wideish, and here is the first ball, short extra cover, short cover point, and short third man, short fine leg, short mid wicket, short square leg, and the first ball. And Asif just wanted to go for reverse sweep. The first ball he faced, but fails to make a contact with the bat, and ball is went into the hands of wicket keeper, and no runs scored. No runs scored. Yet to open the count. Chetan just wanted to get a good start here for his team, and away from the first umpire Pushparaj. Right arm over the wicket. Asif got his first run now, swept the ball very nicely. And before misunderstanding costing a huge wicket. My goodness, can you believe this? I don't know why Daivik Prabhu is not responded for the run, because Asif is the one who is running towards the dangerous end, and he is just not looking at his partner. This is a quite absolutely disappointment. Definitely, it's always the call of Asif. If you see that, it's the call of Asif. Daivik have to respond for that, because it's always the safest side for you to come to the second in a non-striker's end. When your partner is calling for the second and he is running towards the dangerous end, he is taking the risk, and you are always the safer hand. Now the misunderstanding of costing a wicket here. The man of the match of the previous match, Asif, back in the pavilion, unfortunately in the form of run out. Karthik is a new batter in. Now Daivik Prabhu will go into face his first delivery. Chetan third time in this over. Nicely driven, but lack of placement. Again the chance of run out. Oh my goodness. One more chance of run out. It almost a wicket number 2 for team Torpedos Kana. But a wide throw came from Sharan at extra cover. What a tournament is having, and from the ball in the previous match is performed very well. Chetan again, 4th time in this over. To Daivik again, plays it straight to the answer field. This time Daivik again made one more run out. It's absolutely unfortunate here. One more wicket is back in the pavilion in the form of run out. So here is the presentation of Man of the Match award for Dakshit for his wonderful performance in the previous match. He's bowled well, 2 overs, no maiden, 6 runs, and picked up 2 wickets. Congratulations for him. The wicket number 2 is back in the pavilion. It's 2 for 2. All in sudden, Daivik Prabhu is responsible for that 2 runouts here. 2 for 2. One for 2, correction in this online scoring. It's not a fault of manual scoring. It's a 1 for 2. It's not 2 for 2. It's 1 for 2. Thank you. So new batter in Devikiran. Need to get some partnership here for the team SRFC Talapadi. Chetan again. Wow, lovely delivery. And quite watchful in the irrigation, rightly so. Devikira knows that they lost 2 wickets, so I have to be a little bit careful. They played it back to bowler, not for run.
Chetan, what an outstanding over is in progress. Right arm over the kiddie balls. This time wanted to swap the ball, missed it completely. Fantastic start again from Chetan. Just a single run, he conceded in that over and run out, two runouts. Altogether, team SRFC got a shackling start in the first over itself. They're 1 for 2. It's not a good start here from SRFC. Winning the toss, selected to field first Torpedos Kana. Their plan literally worked out in the first over itself. Now 7 overs remaining, 42 deliveries remaining in the innings. Still there is opportunity for SRFC to bat sensibly here and get some runs from remaining 7 overs, 42 deliveries. The bowler is in action. Charan. Sharan is the one who bowled fantastically. Got Best Bowler Award as well in that MSC Trophy 2025. He got a fantastic season, especially in the last 3-4 tournaments. His performance has been outstanding from the ball. Daivik will going to take the strike. Sharan away from us. Pass umpire Nazir. Again lack of placement. Again wanted to go for the run. I don't know why he is going for the blind run every time. Again played it straight to the hands of mid wicket. Again he started to run. Luckily that ball is slipped out of the hands of Tanveer. Otherwise it's going to be a run out number 3 almost. This time outside the line of off time. Wanted to go for the run. Chance of run out and wide throw came from Ashraf. Otherwise, there's going to be one more chance of run out by call by umpire. One more extra 2 for 2. The team SRFC Talapadi. The over number 2 is in progress. Sharan again. David Kiran, experienced batter for the side of SRFC Talapadi. Again played it nicely down to cow point region. Good placement, but not more than a single. With the addition of the single, scoreboard numbers on the 3 for 2 in the over number 2 is in progress. And these two batters have to bat sensibly after they lost 2 wickets. The condition is not easy for the batters under floodlight. The ball which is used for this tournament. Again looking for the helicopter shot. Again timing which is missing in that. Just a single lie of Daivik with that single scoreboard numbers and 4 for 2. And the over number 2 is in progress. You are watching the prestigious KFC Champions Trophy 2025, which is proudly presented by Kodical Friend Circle, registered as celebrating their 35 years of journey in cricket. Sharan away from us, 5th time in this over. There's Devikiran wanted to go for the reverse sweep, missed it completely, wicketkeeper missed it. But Shakir behind the wicket fields the ball and no chance of any run. One more good over is in progress. So far Sharan only conceded 2 runs and again the bowler Sharan to continue. Right arm over the wicket balls. This time a total misjudgment off the line. One more over completed. 2 gone after completion of over number 2. It's 4 for 2. One more quiet over. And 2 runs came from this over. Altogether SRFC Talapadi searching for the right track. They are 4 for the loss of 2 wickets.
Start of the over number third starts with the wide. Shakir brought into attack from the far end. Wide call by umpire Pushparaj. 5 for 2 in the over number third is in progress. Daivik this time played it down to extra cover. They wanted to go for the single. Ashwin the fielder trying for the run out. Again, no response coming from Devi Kiran. Devi Kiran, of course, Daivik have to see that. And Devi Kiran, of course, this has got some heavy body, so it's not so easy for him to run quickly. And outside and off stamp, good bowling. They are keeping that tight line here for Daivik Prabhu. One more dot delivery. 6 scoreboard is 5 for 2. Again played it down to deep long on region for an easy single. With the addition of that single, scoreboard now moves on to 6 for 2. You're watching the last quarter. You're watching the first semi-final between Torpedos Kana versus SRFC. Nicely played down to long off region for an easy single. With the addition of that single, scoreboard moves on to 7 for 2. Shakir. Oh, that will going to be very interesting. What could be the addition from third umpire? The field umpire would going to be a wide or a no ball. Just to have a confusion. They completed a run there. Then umpire have to say that. Now they're asking for third umpire to watch whether it's a wide or a no ball. And even there were run out also. The squad umpire is asking for third umpire to see the run out as well. So third umpire have to see the first, which is no ball or wide ball. Second one is appeal for run out directed in the non-striker's end, in the striker's end in fact, and wait and see. Addition is pending here about that no ball. It's a no ball and a run out. The batter is out of the crease, and no ball also given by third umpire. So rare occasion. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರು ದಯಮಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 8 for 3. One ball, 2 decision came from third umpire. One for the no ball and one for the run out. 8 for 3. SRFC Talapadi are looking in trouble now. Over number third is in progress. The semi-final is in progress. After this, the second semi-final will be played between Young Friends Urwa versus team KFC Kodical. The host team will going to have a contest for that place in the final. So free delivery for new batter Jogish for that no ball, and wanted to go for the expansive drive. He missed it completely.
from the bat, leg by call by umpire Pushparaj, one more addition. And with that addition of that single, scoreboard numbers on to 9 for 3. In the over number 3 is in progress. This time nicely played it off the toes, played it down to deep square leg region. They wanted to come back for a second. This time before the Bashit will going to pick that one down at deep square leg region. Ample time for the batter to complete the valuable couple of runs and 11 on the board for the loss of 3 wickets. 3 overs completed. Ashwin brought into attack to bowl that 4th over of the innings of the team SRFC. The batter in front of him is Jogesh with a different grip onto the handle of the bat. Played it gently down to gully region for a single. And with a single, scoreboard moves on to 12 for 3 in the over number 4 is in progress. So quite cricket is going on here. Of course, understandable, it's not an easy condition for the batter to bat on properly. And a bowler like Ashwin can be very effective in this condition. This time, lovely delivery indeed. Almost that ball looks like going to hit the stump at the last moment. Maybe the ball has got a little bit bat onto that. Of Daivik, it's got a little bit extra bounce. No run scored. 12 for 3. Ashwin swings and missed. Fantastic leg cutter. Ashwin has got a lot of sweet memories in this UCG cricket ground when he was absolutely dominating from the ball, especially whenever representing for young friends. Urwa is the backbone in the bowling department. This time Daivik caught a contact. What a magnificent stroke. The perfect technique which is implemented by Daivik. You know exactly Ashwin is bowling some leg cutters in the last 2-3 balls. So I think the better option for the batters to get at that, switch it very effectively. It's not so easy to get into that line of the ball, but exquisite footwork and exquisite bat speed there from Daivik Prabhu to get the ball into the fence for 4 runs. Excellent stroke there from Daivik. 16 for 3. Ashwin again. Balls again doesn't get hold up then properly. And just a single here with their single scope and moves on to 17 for the loss of 3 wicket. Last delivery of this over. The 6 runs came from this over already for SRFC. The over number completed. Ashwin completed its first over. 6 runs came from that over. This is the first better over as far as SRFC Talapadi is concerned. They got 6 in that. 4 gone after completion of 4 overs. 17 for 3. And before the next over will going to start here, the time to change in commentary box as well. It's over to Gopi. Gopi, welcome to the first semi-final of this prestigious cricket tournament. And slow start from SRFC Talapadi. They lost 3 wickets, but you can say that against a formidable team like team Torpedos Kana, I think in the remaining 4 overs, these 2 batters are in the middle. Daivik and Jogesh have to bat very well to get some good score against Torpedos Kana. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया 4 ओवर इस वक्त टॉर्पेडोज काना के पक्ष में था, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति को अपने काबू में करना है तो दैविक और जोगेश को एक बेहतर बल्लेबाजी यहाँ पर निभानी होगी बचे हुए 4 ओवर में। और 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज की ये गेंद थी शाकिर की। रन्स कोई नहीं मिला। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में, चूंकि ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाह नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। और शाकिर अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया। गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर। 1 रन का इजाफा। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। सो जस्ट अ सिंगल ही गॉट फर्स्ट सेमीफाइनल मैच ऑफ दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट KFC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 is now progressing and which is proudly presented by Kodical
Friends circle registered. It's ball lofted and straight into the hands of fielder. Khan finds the gap as well at the last moment. Hit that one pretty hard, but the placement was too wrong, and because of that, he just paid the penalty for that. One more wicket fallen. Wicket number 4 has been back to the pavilion. और देखिए किस तरीके से गेंद को लखपत अपने आगे की ओर आते हुए फील्डर ने बेहतर जजमेंट के साथ और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है. It's 19 for 4 in the over number 5 in progress. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का तो इस गेंद पर शाकिर एक विकेट यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं. We are just waiting for the number 6 batsman of SRFC Talapadi. और दर्शक कुछ ज़्यादा मैदान पर नहीं दिखाई देते हुए, लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसे जैसा वक्त गुजरता जाएगा, देर रात होती जाएगी, दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि होगी. तो नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ हितेश, ये गेंद को खेल दिया. इस वक्त स्कोर रखता विकेट हितेश ने, लेकिन उतनी ही बेहतर फील्डिंग वहाँ पर फील्डर द्वारा और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को यहाँ पर मिला था और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुँच चुका कुल मिलाकर 20 रनों के ऊपर. 20 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. कम से कम 50 के आंकड़े तक यहाँ पर पहुँचना होगा SRFC तलपाड़ी के बल्लेबाजों को अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है. तो इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला, गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा और इसी के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति हो चुकी है. 5 overs completed, 21 on the board for losing 4 wickets. Still the batsmen of SRFC Talapadi just searching for the right track with the 3 overs to go in their innings. 3 over का खेल बाकी. Meantime, the next match, the second semi-final match is now going to play between Young Friends Urwa versus KFC Kodical. One more good match is now coming up of this prestigious cricket tournament. Kodical Champions, KFC Champions Trophy 2025, which is proudly presented by Kodical Friends Circle registered Mangalore. The celebration of their 35 years, they are organizing this fantastic cricket tournament. The name of KFC Champions Trophy 2025 Day Night Cricket Tournament. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, अश्विन अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए ओवर के पहले गेंद लेकर तैयार. यह गेंद लेग कटर गेंद को खेल दिया. इस वक्त कवर पॉइंट पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और ओवर थ्रो, लेकिन वहाँ पर बैकअप होता हुआ जस्ट सिंगल गॉट. 22 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर. और अश्विन फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. Full toss, chipped it away down to wide is long off for a single. In fact, they're looking for the second, but won't get it. And with that single run, the scoreboard moving up to 23 for the loss of 4 wicket. और क्रीज पर मौजूद नितेश और जोगेश इस वक्त एक बेहतर साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश करते हुए. और गेंदबाज अश्विन की गेंद, ये गेंद लेग स्टंप पर टॉप एज पर गेंद टकरा चुकी है. फील्डर गेंद के नीचे आते हुए वाइड इस लॉन्ग ऑन पर और इसके आज को लपकने में सफल. जोगेश की पारी समाप्त हो चुकी है. ऑनसाइड पर गेंद को उछालना चाहा था, गेंद टॉप एज पर टकराई और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था. टॉप एज पर गेंद टकराने के बाद हवा में उछली और वाइड इस लॉन्ग ऑन पर इसके आज को लपक लिया गया फील्डर द्वारा एक बेहतर जजमेंट के साथ. Now 5 wickets down, 23 runs on the board. And they are certainly looking in trouble. In fact, still they got 5 wickets kept intact at this situation. जहाँ तक सवाल है इस वक्त नंबर 7 बल्लेबाज का, तो इंतजार है इस वक्त नंबर 7 बल्लेबाज का SRFC तलपाड़ी की ओर से. जुनेद is now comes out to the middle as the number 7 batsman for SRFC तलपाड़ी और वो इस वक्त सामना करते हुए अश्विन की गेंद का टॉप एज एक बार फिर से, लेकिन फील्डर कोई वहां पर नहीं. शॉट स्क्वायर लेग पर जस्ट अ सिंगल ही गॉट एंड विद दैट सिंगल फ्रॉम द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 24 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. Absolutely a difficult time continuing here for the batsmen of SRFC तलपाड़ी at this situation. और अश्विन अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था. हाथों पर द विकेट. ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ स्लॉग स्वीप शॉट, नॉट सक्सीडेड. गॉन टू अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली.
एक रन जोखिम भरा रन पूर्ण करते हुए दोनों बल्लेबाज सफलतम और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रन पर 25 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। अश्विन अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर, अपने कोटे की अंतिम गेंद कहना पड़ेगा, लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुनैद जो कि इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट घोषित और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। जुनैद का विकेट गिर चुका है, छठा विकेट गिर चुका है इस वक्त SRFC तलापाड़ी का। और इस वक्त 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 25 for the loss of 6 wicket after the completion of 6 overs. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So 7th over starts in SRFC Talapadi's innings, and now the first ball of the 7th over is now coming up from the hands of the bowler Sharan to the right-handed batsman Nitesh. इस वक्त सामना करते हुए और पहली गेंद लेकर शरण इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे वहीं पर गिर गया और विकेट कीपर वहीं पर खड़े रहे और बल्लेबाज ने खुद गेंद को उठाकर लौटा दिया इस वक्त गेंदबाज के हाथों में। और शरण एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार क्विकर, एब्सोल्युटली क्विकर, लेकिन गेंद को मोड़ने के प्रयास में चूके निशाना चूका इस वक्त ओवर थ्रो, और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। बैकअप कर नहीं पाए ठीक तरह से मिड ऑन के फील्डर, जब तक इनको लॉन्ग ऑन पर बैकअप किया जाता 2 रन बल्लेबाज तोड़कर पूर्ण कर चुके हैं। Couple of runs added to the total. It's 27 for the loss of 6 now, and the over number 7 in progress. और इस वक्त बल्लेबाज नितेश सामना करते हुए शरण की गेंदों का दाहिने हाथों पर द विकेट। शरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार बेहतर गेंद थी, मिस जजमेंट, एब्सोल्युटली मिस जजमेंट। गेंद को छोड़ दिया कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी इस वक्त, काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ इस वक्त गुजरी लेग स्टंप से बाहर की ओर। शरण फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार स्टीयर कर दिया गेंद को, गेंद पहुंची इस वक्त गली पर, जस्ट अ सिंगल गॉट। 28 on the board for losing 6 wicket in the over number 7 in progress. Still 8 balls left in our overall calculation in their innings और शरण अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची मिड ऑन पर, रनआउट का खतरा, थ्रो पहुंचा और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन एक बल्लेबाज को इस वक्त पेविलियन वापस भेज चुका है रनआउट के रूप में। देखिए किस तरीके से हुआ था, गेंद को ड्राइव किया था, जगह बनाते हैं, लेकिन गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट फील्डर के हाथों में और सीधा थ्रो उनका पहुंचता हुआ गेंदबाज के हाथों में। शॉर्ट मिड विकेट फील्डर का थ्रो पहुंचता हुआ गेंदबाज के हाथों में, गेंदबाज ने थ्रो को रिसीव करते हुए विकेट यहाँ पर चटका दिए 28 रन 7 विकेट के नुकसान पर। स्टिल 1 ball left in this over, 7 balls left in overall calculation in their innings. नंबर 9 बल्लेबाज सृजन का आगमन यहाँ पर होता हुआ, इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक लाइन पर मौजूद नितेश 6 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए सामना करने के लिए तैयार। शरण की ओवर की अंतिम गेंद का दाहिने हाथ ओवर द विकेट। शरण इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद स्टीयर करना चाहा, इस वक्त गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुँच चुका है कुल मिलाकर 29 रन पर 29 for 7 and a 7th over has been came to an end. Just last over left और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में बचे हुए 3 विकेटों की मदद से SRFC तलापाड़ी और कितने रन यहाँ पर बटोर पाता है।
सो लास्ट ओवर स्टार्ट्स और गेंदबाज हैरिस इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और सृजन जो कि 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, नितेश माफ कीजिए इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर हैरिस इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद। फर्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम हैरिस। ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, परफेक्ट ऑफ कटर, गेंद को साइड पर मोड़ने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त हो चुका है 29 रनों पर। हैरिस रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, इन फैक्ट इट्स जस्ट गॉट अ सिंगल एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 30 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 7 विकेट्स इन द ओवर नंबर 8 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। सिर्फ 4 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और हैरिस इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। सृजन जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इस वक्त दाहिने हाथ राउंड द विकेट हैरिस गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज सृजन के लिए जो कि इस वक्त फील्डिंग का मुआयना करते हुए और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। हैरिस की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 31 रनों पर 31 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। 4 गेंदें अभी बाकी उनकी पारी में। हैरिस सृजन के लिए अगली गेंद, इस बार lofted that one but I think it could be taken inside. No, in fact it's gone over the fence for a maximum surprisingly और जिस तरीके से स्ट्रोक को उछाला था अंदाजा लगा जैसे गया था कि वहां पर शायद कैच आउट होगा, लेकिन यहां पर गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है काफी तेजी के साथ था और छक्का इस वक्त जुट चुका है सृजन के खाते में और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर 37 for 7 now. And a good struck came from the bat of Srijan at the situation. हैरिस इस बार ड्राइव किया जगह बनाते हुए, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल, निशाना यहां पर चूकता हुआ 38 द स्कोर एंड नाउ जस्ट 2 balls लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स और हैरिस इस वक्त गेंदबाजी करेंगे नितेश के लिए जो कि 8 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। हैरिस तैयार, ऑफ कटार उछाला, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर इस वक्त गेंद के नीचे आते हुए आसानी के साथ इस कैच को लपकने में सफल और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। नितेश का स्ट्रोक इस वक्त था जरूर लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका। 8 wicket down, 38 for 8 and now just 1 ball left in overall calculation in their innings. Number 10 batsman is now comes out to the middle to face the last delivery of their innings और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार हैरिस की गेंदों का। हैरिस अंतिम गेंद लेकर तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। हैरिस रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि यहाँ पर रन आउट होता हुआ और इसी के साथ 9वां विकेट गिर चुका। सो द इनिंग्स इज अप फॉर SRFC तलपाड़ी। They finished with 38 for the loss of 9 wickets in the stipulated 38 for the loss of 9 wickets in the stipulated 8 overs and now the target for Torpedos Kana is exactly 39. They have to score for victory. In the stipulated 8 overs they have to score for victory with the help of 10 runs. The equation shows for them just under 5 runs per over they have to score for victory. देखते हैं यहाँ पर टोरपेडोज काना के बल्लेबाज इस 39 रनों के लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं नहीं 48 गेंदों पर जो कि इस वक्त मॉनिटर पर दिखाई देता हुआ। 39 in 8 overs, that means in the stipulated 48 deliveries, Torpedos Kana have to score to qualify for the grand finale of this competition in this first semi-final match. और देखते हैं वो इस 39 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शो एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब यहाँ पर टोरपेडोस काना की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
Welcome back. Thank you very much, Gopi. It's a 39, which is a target set by the team SRFC against Torpedos Kana. And seems to be at a small total to chase down, but under floodlight and not underestimated that kind of total, which is a 39. And a small cameo which is came in the end, where some kind of comeback given for SRFC, the batter who hit 1-6, Sujan. And of course, some runs which just came from the bat of Daivik. Daivik in the top of the order, he scored 10 valuable runs from his bat. And altogether, and it's a small contribution which is takes the total score of the team SRFC. Just 38 and 39 will be the target. Just wait and see, will it going to be good enough for the formidable batting department of team Torpedos Kana, and the batters like Bashit, Ashraf, they are coming to middle as open the innings. The top class batters, they are in the form, excellent form. Ashraf and Bashit, the captain himself, is in terrific form in this particular season. And the signal came from umpire Pushparaj. Everyone is ready here in the committee box. First of all, Aziz will going to ball the first delivery from the BMR group end. Right arm over the kitty balls. This time, oh my goodness, Devi Kiran down at short cow point region. The tough opportunity for the fielder, but he couldn't manage to get the catch. He had to take the catches, isn't it? Because when you are depending a small total like a 39 to win the match for the opposition, they have to take all these chances in the beginning itself. Of course, it's a hard one, but you have to convert that into catch and not to give the life for the batters of Torpedos Kana. So lucky escape here for the batter Ashraf. He's off the mark, one without loss of any wicket. Bashit will go to take the strike of Aziz. Seaming in from the far end. The bowler has got a very good run up and good bowling action. Bashit, excellent cricket from him. Seeing the ball is almost coming into him. And he's just waiting for the turn of the ball of Aziz and played it soft hand and pushed that one nicely down to extra cover for an easy single. He's off the mark. Both the batters are off the mark too without loss of any wicket. Aziz. Oh, this is going to be a disappointment. You can see when you are depending a small total, I have to avoid all these extras. Umpire Pushparaj just wanted to avoid the direct hit. Because it takes a little bit time to make stumps proper. And wide 3 on the board without loss of any wicket. Aziz. This time Ashraf lofted it, but I think the fielder will go and take this comfortably. So again he's making a same mistake what he did in the previous match. He just wanted to get the distance in the long off. It's not so easy. It's not so easy for any big striker of the ball, because the nature, the dimension of the cricket ground is like that only in UCG. Of course, you can get the distance on the mid-wicket long on and somewhere else a deep square leg. But if you get that one into the long off, especially seeing the nature of the ball, it's not hard enough and it's not good enough for any powerful striker of the ball to get the distance in the long off. Pays the penalty, is back in the pavilion once again, disappointed. Ashraf, 3 for 1. Shakir is the new batter in. Bowley, Shakir is the batter, the useful number 3 batter for the side in this condition. I think quite useful batter as far as the rotation of a strike is concerned. When you are chasing a small total is concerned, Shakir there might be a very effective batter in this condition. But SRFC have to believe that if they bowl well, field well, they can win this match. The believingness is very important for any team, because it's not like that you cannot upset the big team. If you perform well, if you believe well with your strength, then you can upset any team. Aziz from the far end. Shakir just try to gut that one on the onside region. White call by umpire. Ball is just missing the line with the Texas Kobata Muzan to 4 on the board for the loss of 1 wicket. Second wide of this over. Aziz need to avoid these extras. Aziz again from the BMR group end. Right arm over the wicket. Balls defensively played, not for run. Aziz on his follow through, tried to get that one, missed it completely.
but short mid-off fielder is backing up. The scoreboard remains on 4 on the board for the loss of 1 wicket. Torpedos Kana, they definitely knows they cannot take that lightly, any team. This is a semi-final. Aziz again. Again, swept the ball, chance of run out, but not quick enough there from the square leg fielder. And Shakir got his first run. Why I'm saying that Torpedos Kana will not going to take that lightly, because of the lesson they learned in that MSC Trophy 2025 in the final, when they faced FCT Puttige in the mega final. Everyone thought that Torpedos Kana will going to win this in that final very easily. But the way that FCT Puttige is performed in that match, this has been going to be a disaster. Oh, opportunity of run out as well. My goodness, wide call by umpire, 1+1, 2 wides. So this is not a good bowling, I want to tell you. Already I mentioned that you have to avoid the extras. The need to count the batsman to work hard to get each and every one. But you are giving that run very cheaply from the extra, in form of extra. 7 for 1 already. Played it nicely in the gap towards the mid-off. Huge gap, and there is no mid-off actually, there is extra cover. So first over completed, 8 on the board, more than the contribution from the bat. Extras which also conceded in this. And after completion of over number 1, chasing target of 39 to win the match. 8 on the board, that means 31 more runs required for the victory in the remaining 7 overs. 42 deliveries and 31 more runs required for the victory. We can see in the screen 4.43, which is run rate required. And of course the team SRFC, they have to take that required run rate little bit higher and higher and every over. If you want to take that asking run rate high, have to get economical overs. So Daivik brought into attack to bowl the second over of the power play. The good number of crowds enjoying the game of cricket here in UCC cricket ground. Not a big entertainment day for cricket, I want to tell you, because it's not the raining of boundaries and sixes, but you are seeing that there's a traditional cricket, and it's not a very big challenge for the batters in this condition. So more than the boundaries and sixes, I think some kind of clever cricket which is required in this condition. Daivik brought into attacks. First ball just wanted to get that sweep shot. Shakir line is which is outside the line of off stump, so that he fails to make a contact with the bat, missed it completely. Good thinking there from the bowler's point of view, reading the intention of the batter early, and he bowled outside the line of off stump. Again, nicely swept that one. This time he will going to get a single for that. Good response coming from Bashit. He is the one responding quickly for that run. And with that single scoreboard numbers down to 9 for the loss of 1 wicket. Captain of the side, the previous match is scored 25 runs from his bat. And now he will going to take the strike. Bashit will going to face Daivik Prabhu. Third time is over. Takes his own time to deliver the ball. Daivik. This time wide outside the line of off stump. Wide call by umpire. One more addition. Scoreboard moves on to double figure 10. Just looking for the experiment in the legation, Daivik. And extra pace what he's tried. And because of that he just misses the line what he wanted to bowl. Just inside the line, but ball gone outside the line of the frame line. This time, Bashit hit that one pretty well. What a striker of the ball. Fantastically struck. The man in form. Even though it's not so easy to get the distance in this condition, have a look at the timing and that stroke. Absolutely perfectly timed. Even the fielder has got a jump. A good take there by the one of the spectator. Single-handed catch. Fazil, the fielder, not a fielder actually, the spectator, but once he becomes a fielder to take the catch, but out of the boundary line.
16 for 1. Oh, good comeback, excellent comeback. Appeal coming behind the wicket from the wicket keeper for the stump out. Umpire Pushparaj rightly said there's no damage done. Yeah, of course, the Bashit has become a run machine in this particular season, 24-25. What an outstanding season he has got. I never saw the Bashit is batting like that. Even he was represented for young friends Urwa, NM cricketers, Manglore. But once he is given a captaincy for Torpedos Kana, he's totally different player. The responsibility which is sometime, everything came out from what he has got inside. What we are talking about, the talent, the technique, what he has got. So far he's been outstanding. 16 for 1. Down the leg side, but well with the reach of the bat, so that umpire not interested, rightly so. So sometime it's going to frustrate the bowler, the way that Bashit picked that stroke, which is from the middle and leg stem. So 16 for 1. We can see that the eyes of Bashit, if it's the close view, that he has got a very good eye. Fantastic stroke. This is one of his favorite. How many times he's played that such kind of cricketing stroke. If you see every innings of him, he loves to play the shot. He loves that area that is a between deep sculling and mid wicket. Fantastic stroke. That was absolutely gorgeous. That will going to frustrate the bat bowler, in fact. You can see that where the line is, and he drags it, isn't it? Stretching his front foot. The bat speed, which is definitely going to be outstanding of Bashit. 20 for the loss of 1 wicket. That's what I'm talking about. He's got a good eye. Good eye and coordination, what you're talking about. It's not so easy under underarm cricket, especially under floodlight, when it's very difficult to sight the ball, hitting across the line of the ball against the pace. It was a phenomenal cricketing stroke. 20 for the loss of 1 wicket. The target now seems to be a little bit easier. Needed 19 runs now from 36 balls. The bowler brought into attack, Nitesh, with the jersey number 13. Now, do or die situation here for the bowlers of team SRFC Talapadi. How to restrict their opposition. Torpedos Kana. Nitish will go into ball from the BMR end. And Shakir once again, one of his typical sweep shot, single-handed. Played it down to short square leg region for a single. With that single scored, moves on to 21 on the board for the loss of 1 wicket. Once again, captain playing the knock. Already 11 in just 5 deliveries. But a very impressive part of his every innings, if you see Bashit, his strike rate is very impressive. He's always more than 150, 170. Less than ball, he managed to score the potential he has got. Nishit balls far outside the line. And now it's definitely that will going to be a call for the umpire. That's definitely it's a no ball, but umpire have to see that, because sometimes we can't see the line. There is a one line we can see that the pitch line. And I think in naked eye it might be a no ball, but third umpire has been given. Will it going to be a no ball or not? Umpire Roland Pinto will go into watch whether it is good enough to call the no ball or not. So it's inside the line, so just inside the line, wide, which is going to be a third umpire decision. Roland Pinto. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಜೂಕ್ FCT ಪುತ್ತಿಗೆ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. FCT ಪುತ್ತಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ MSC ಟ್ರೋಫಿ 2025. 22 for the loss of 1 wicket, 17 more runs required for the victory. This time wanted to go for the expansive drive. Oh, this is a mix-up. Chance of run out. Oh, that's high throw. Now
Bashit is back in the pavilion. Shakir is not responded for that run. Just have a look at the replay. Bashit just wanted to go for the big shot. And the slower one, you can see that. And the swing of the bat, deflected from his leg. Ball went quickly to that third man. Fumble there. Absolutely fumble there. Might be if Shakir were going to respond for that run, there is a certain single. There absolutely certain single, no doubt at all. But once he made that, you don't want to go to the run. Unfortunately, the man in form is back in the pavilion, captain of the side. But again, he played a good innings for double figure. 11 runs from just 6 balls. It's a 22 for the loss of 2 wicket. The new batter is Akram, walking towards the middle. One more experienced batter for the side of Torpedos Kana. Akram. Second wicket back in the pavilion of Torpedos Kana. 34 balls remaining and 17 runs required for the victory. If SRFC manage to pick another 2-3 quick wickets here, they can put some pressure onto the batters. Oh, lovely delivery, beautifully bowled, beaten by the turn of the ball. Fantastic line and length, perfect delivery to ball to the fresh leg. Akram absolutely uncertain what to do, whether to go for the front foot or back foot. Try to push the ball. Luckily that ball misses his bat and wicketkeeper did the rest. This time he managed to get single down to square leg. One more addition, 23 for the loss of 2 wicket. For the next match, second semi-final, I request the host team, KFC Kodical, and of course captain of team Young Friends Urwa, please be reported here immediately for the tossing ceremony. Shakir will go to take the strike. He's batting on 4. Again, lovely bowling performance here from Nitish. Just keep the batter quiet. Again, Shakir just wanted to go for the sweep shot. Beaten by the flight and turn of the ball. No run scored. Nitish. This time nicely placed that one down to long on region. Daivik, the fielder in the deep. One more addition with the addition of that single score. Moves on to 24 for the loss of 2 wicket. So 3 overs completed after completion of over number 3. So 24 for the loss of 2 wicket. 15 more runs required for the victory in remaining 5 overs. So 24 on the board for the loss of 2 wicket. Now 6 more overs remaining and 5 more overs remaining in fact, and 30 balls and 15 runs required for the victory. The first ball lost up that one very nicely down to square leg region for a single. Scoreboard numbers under 25 on the board. Nitin, the bowler, brought into attack from the ascent end, and we bowled the first delivery and conceded a single. 25 for the loss of 2 wicket. 14 more runs required for the victory. So some attacking field is badly required for team
SRFC, but still there will be 4 fielders inside the ring, 5 outside the ring. Played it just wide of that mid-wicket fielder and bowler. Akram picked up a single. No need to panic at all. Both the batters knows that rotation of strike is much required here for the team Torpedos Kana to reach to that target of 39. Now 26 on the board, 13 more runs required for the victory. Down the leg side, the punishable from the umpire. The ball which is missing the direction, and the scoreboard numbers on to 28 for the loss of 2 wickets. 27, correction. 12 more runs required for the victory. Nicely driven for a single by Shakir. Addition to total, now it's a 28. 11 to get, 27 balls remaining. Slowly, the Torpedos Kana are cruising towards the victory. Again, Akram nicely played it down to long on for a easy single. Hit the bat pretty hard into the ground. Tried to flick that one off his legs. 29 for the loss of 2 wickets. 10 more runs required for the victory. And 26 deliveries. Nitin. Nicely played it down to mid-wicket region. Only for the single. Good pick-up and pick-up by the fielder in the deep. By Nishant. 30 for the loss of 2 wickets. 9 runs away from the victory. Again pushing and running, pushing and running. Again they completed single. 1 more over completed. 4 gone. It's 31 for the loss of 2 wickets. Just 8 more runs required for the victory. In our screen we are watching Pradeep. Pradeep is having a smiling face. Why not? They are almost cruising towards a victory. Almost there in the finals. Just 8 runs away from the victory. So now 5th over going to start from the far end. Azad brought in the attack to bowl that 5th over. 8 runs required for the victory. Azad from the far end. So no ball called by umpire. No ball called by umpire. Definitely it's going to be absence of mind. Ball went into the fence for 4 as well. And that ball defeated everyone. And 1 plus 4, 5 runs added to total. 3 fielders behind the square. And so rightly so, umpire called it no ball, rightly so. No ball in the sense it's going to be a free hit delivery for the batter. 36 on the board, just 3 runs required for the victory. So you can't keep 3 fielders behind the square. The one at fine leg, one at square leg, one at deep square leg, behind the square. So that's why you need to keep the fielder in front of square little bit in square side between mid-wicket and square leg. They're coming into the fine means fine square leg. It's going to be 3 fielders behind the square. Just 3 runs away from the victory for Torpedos Kana. Outside the next time, wide call by umpire. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ Urwa ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮೆಗಾಗಿ ತಮಗಾಗಿ
KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. This time Akram just wanted to finish the things off quickly. Just 2 runs away from the victory, but fails to make a proper connection. Lofted fielder is there in the long off. Couldn't manage to get that one. Daivik Prabhu. The scores are leveled. Just 1 run away from the victory. This is going to be a great finish for the season for the Torpedos Kana, and the consecutive 3rd entry for into the finals in last 2 weeks. Been outstanding performance from Torpedos. Just 1 required for the victory. Azad bowling to Shakir. That's it. Typical finish by Shakir by the single hand sweep. Congratulations Torpedos Kana. Once again in 2 weeks there. This is a consecutive 3rd finals for them. The first team to qualify for the finals of KFC Trophy and KFC Champions Trophy 2025, which is proudly presented by Kodical Friend Circle, registered in this UCG cricket ground. It was a dominated performance, convincing victory for the team Torpedos Kana, and hard luck SRFC Talapadi to coming here and participating in this big tournament in the main pool. You need to appreciate, we really appreciate your presence in this particular tournament. Thank you so much SRFC Talapadi for your competition, your participation in this KFC Trophy 2025, KFC Champions Trophy 2025. The congratulations for Torpedos Kana for entering into the finals of KFC Champions Trophy. So man of the match, which goes to all-round performance by Shakir of Torpedos Kana. I request Shakir, please go and collect your man of the match award from our chief guest. At the same time, link will go into change of this live telecast. Please note, Bedra Media will go into change the link of this KFC Champions Trophy 2025. Please note the changes in the link and follow this KFC Champions Trophy, because the next match is a big match between host KFC Kodical versus team Young Friends Urwa. It's going to be a huge match, a big match, and toss which is completed. Toss won by the captain of KFC Kodical, and they are rightly elected to the ball first against Young Friends Urwa. We'll take a short break in our commentary box. After a short break, my friend Gopi will go to take over the microphone for this excellent match, high voltage match between Young Friends Urwa versus team KFC Kodical. ದಯಮಾಡಿ ಶಾಕಿರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ SRFC ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.